for the day has joined us. हाँ, very good नमस्कार सर, morning and स्वागत है आपका। namaskar everybody. सलाम, अभिनंदन, खुशामदीद सर। Thank you so much. Yeah, thank you so much. आपको लग रहा है कि सर आप दो डिवाइस से ऑन है, अगर दो से हैं तो आप एक को ऑफ कर सकते हैं सर, अदरवाइज ये इको की प्रॉब्लम रहेगी। Okay, eco की problem रहेगी. Anyway, we will manage. I hope there won't be any problem, much problem. कहाँ है वैसे? So I welcome you all on the behalf of Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya, on the behalf of UGC-HRDC BPSMV, and on the behalf of Dr. Shefali Nagpal and my own personal behalf, sir. Once again, I welcome you all. Thank you everybody. My pleasure. जी, सो एक आपके इंट्रोडक्शन हम रखते हैं सर। अनीसुर रहमान जी इज ए प्रोफेसर एंड डायरेक्टर यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली। He holds masters in two disciplines, economics from Aligarh Muslim University, UP, as well as sociology, MPhil, and PhD from JNU. Before he joined Jamia Millia Islamia in 1999, he worked at the Institute of Applied Manpower Research, Planning Commission, Government of India. His areas of interest include South Asian migration and diaspora, Gulf social demography, issues of higher education and minorities. He has published 5 books and over 50 research papers in reputed journals in India as well as in abroad. Include his contribution as chapter in edited books by well-known scholars. Dr. Rahman has presented over 70 research papers in several conferences, seminar, workshop in India as well as abroad. He has visited several countries like USA, UK, France, Germany, Netherlands, Sweden, Denmark, Switzerland, Hong Kong, Saudi Arabia, Paris, France under the Indo-French Social Scientists Exchange Program for research in 2010, 13 and 15. He has delivered over 100 invited talks at different institutions of higher learning in India as well as abroad. He is also a member of several academics committee bodies, editorial boards. So this is all about Professor Rahman, sir. I welcome you once again on the behalf of all the participants, sir. For using so good words for me. Thank you once again. And I'm thankful to the center of UGC-HRDC, BPS Mahila Vishwavidyalaya, and all the delegates that we will try our level best to make this deliberation a two-way process or bilateral. Of course, this technology online has its own limitation. Despite all limitation, we will try to take up your questions, your observations, which would be very, very interesting and I think relevant also. So I think in all 45, we all are here. So we are going to basically discuss what is diaspora, how diaspora is contributing India's economy and society. So this is very important. I think this is a refresher course. This is not orientation program. So I guess. Because sir, we have participants from economics, commerce, management, and hospitality, sir. So this is basically multidisciplinary, not interdisciplinary per se, but it is multidisciplinary. So I will be very happy to share my thoughts and experiences, whatever I know. But I am sure that you all are knowledgeable person in your own area of expertise and specialization. Everything is getting multidisciplinary or interdisciplinary nature due to the changing scenario at the global level, at the national level. All those issues to which we all are supposed to address are getting complex and complex day by day. So the diaspora, investment, all these have its own many kind of dimensions. So we will definitely discuss, and we don't have any answer to all the questions to which we all are going to address. But certainly, if we start discussing all these issues, the day will come, we will have
these kind of possible solutions. So taking that into the mind, we are going to discuss, and my time is till 12:30. At least comments and queries. If I try to answer your questions and observation, definitely I will try my all level best. So friends, this is all. Taking this background, I am going to discuss diaspora. I know that all of must have got the feel of what is diaspora and how diaspora is taking, how they are contributing in India's economy and society. So we will discuss in details. Seeing before independence or even after independence, when India got independence, thereafter we did not have any kind of diasporic policy. We were confined ourselves, those Indians who have left India and they have settled in different parts of the world, we don't bother about that. But now the time has come, especially since 90s, when the whole world is liberalized, especially India liberalized its economy and society. Thereafter, all of a sudden, we woken up. We woke up and then realized the importance and significance of our Indian diasporic people who are spread all over the world in a very significant way. The other point to which that should be taken into account is seeing the success rate of Chinese diaspora. We also realize our own strength of diasporic people. In 1999, when NDA government came to power at that time and PM Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of this country, he constituted one committee that is called High Level Committee on Indian Diaspora under the leadership of the late Dr. L.M. Singhvi. And that committee, that high-level committee, visited almost every part of the world. And that committee identified so many important recommendations. In that report, it is clearly written that it's a very strong point for India. It should be considered as one of the greatest strength of India. And around more than 110, or now it is said that 125 countries in the world, on the global map, where significant number of Indians were either have settled there or they are working there. So it's a great opportunity for India to tap that diaspora or the strength of diaspora or their contribution of that people. So after submitting its report, many recommendations were made in that committee. So we will definitely discuss in details. So thereafter we started talking and we have our own diasporic policy. Before that, before in 70s, we hardly talked about the Indians who have settled all the. There's a point, very valid point to discuss, because after living here, they have settled there, and by their very hard and sincere work in their host country, they have done very wonderful in terms of economy, and they have started shining in that country. So they have education, they have technology, they have money also. And after globalization, we have also realized that any country cannot do much better unless until that country take the advantage of the other countries, or any country who is ready to that. So these. And one thing I would like to share with you, that in that committee report, it is clearly that the total size and the volume of the diasporic people, which was estimated to be around 225 million, means 2.5 crore Indians have settled or they are workers. It's a very great assets for India if we consider. Of course, if you consider the Chinese diaspora, they are around 45 million. Of course, but here if we consider the inflow of the remittance in our own country, India has acquired the first position. So we will discuss all these things. So let us try to make this deliberation
And this session, a wonderful session or eventful session, and the learning session. So I have come with some facts and the figures. So I will present my PPT so that we can learn maximum, because when we use this PPT, definitely our presentation would be more effective. So let us go to discuss here. Yes, I am presenting window. Yes. Sure. It is seen. आप लोग देख रहे हैं इसको, नजर आ रहा है वैसे? It is seen जी to सर, all जी। of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. That's great. That's great. So let us discuss this thing, and thereafter we will discuss now diaspora. So just let us have the background of this very terminology, and I am sure that now it is reported in the paper. And now we have also started celebrating Diaspora Day or Parvasi Bharatiya Divas since 2003. That is one of the recommendations made in that committee report. And why we have been doing, and why we have all of a sudden started giving the importance of diaspora. Not only that, Indians who have left India and they are working there. So of course emotional attachment is there, but material link is also very important. And they have money, they have technology, they are educated also. And here is India which needs their help. Of course, so is the case with that diasporic community. They need India's help, and we also need their help in terms of collaboration, in terms of the joint venture. So India is the fertile ground. It is considered to be fertile ground for investment, for using their money to establish the manufacturing industry and even the university. Since they have all this technology and money, so they have been asked, or persuaded, you have the money, come over here in India and spend the money or use your money, you will be benefited in a way, India will also be benefited. So taking that motto into the mind, Diaspora Day was celebrated. It's a very big event in the sense that even on the very end, the day which has been chosen for its celebration is 7th to 9th January, when Mahatma Gandhi, who is considered to be one of the greatest diaspora, when he was there in South Africa, he did a wonderful kind of job for eradication of racism. When he got back to India in 1915, he started the civil disobedience movement and mass-based politics in order to free our own country. So he is considered auspiciously that day has been chosen, and on the very first day, on 7th, the event, when it takes place, it is inaugurated by the Prime Minister of the country, and the last day is when the valedictory session takes place. President of our country participates. So for since 2003, it all started. So it's very important that how to engage this big chunk of the diasporic people so that India could be benefited, and they should also be benefited that if they invest, it is the country which is very fertile from this point, from investment point of view. And they have been asked, if you invest your money, you will be benefited monetarily, and India would also be developed. When you observe, when you say that India is our motherland, so there is some sort of responsibility falls on you, that you have the money and you identify your origin. India is your motherland, and your fathers or your grandfathers happen to be born in India. So this is the responsibility in some way that now you cherish
When you come back to India, you go to your and identify the route to which you belong. So now let us work jointly so that India could be benefited. If India would be developed, would prosper, when you feel any kind of threat in your host country, India will come as a rescue if India is emerging as a powerful. So taking that spirit into the mind, diasporic people in India started working together. So this is very important. So let us, before going to that a strategic part, economic and sociological understanding, let us try to understand the very terminology diaspora, which has been derived from the Greek word dia, means through, and stereo means to scatter. The literal meaning of diaspora means scattering or dispersion. Initially, the term was used to describe the Jewish community in exile. You must be wondering. Previously, lot of literature you will find, and initially that this very terminology was only used for the Jews who were spread all over the world. And they identified that wherever they are, their affiliation and their orientation and their sentiment is only attached to one place, that is called Israel. So it has its own ideological connotation. So previously it was a very what we call this terminology has its own ideological connotation. So it was not used for general sense of the term. But now, when we talk of diaspora right now, it has its more very liberal kind of connotation and what we call is definition. Any part of the people or any group who have left their own home country or the origin country, or they have gone to any parts of the other world. And of course, they have is defined as diaspora. So here, taking that definition into mind, we all are going to do. In a generic sense, this is the definition of diaspora to which we all are now using. But if you see the history and genealogy and the origin of this word, it was only used for the Jewish community who were exiled, who were made to exile. And you know the community of Jews, what happened actually with this community. So we are not going to discuss. We will discuss this terminology, the Indians who left India and they have settled down in any parts of, in any country like South Africa or all Eastern African countries, or even in South Asian countries like Malaysia, Singapore, or any for that matter. So already I have told you that 125 countries have been now identified over there. Significant number of Indians were there. You know the situation of New Zealand, even Australia, United States of America, and all European countries. Wherever you go, you will find Indians. And either they are working there or they have acquired, subsequently they have acquired the citizenship of that country. See the situation of Mauritius. You must be knowing Mauritius. So if you go to Mauritius, 70% population belong to India, mean their origin are India, and that is of Eastern Uttar Pradesh, Bihar, and Jharkhand. So these, and their language is Bhojpuri. They speak as good Bhojpuri as in that part of in Eastern Uttar Pradesh and Jharkhand and Bihar. So why I am saying that, if you go to Fiji, Guyana, and many more countries in Eastern African countries, they have done wonderful job and they have established themselves. If you also know that many at the top level position, political position, at the political echelon, they have acquired the first position, some president, some prime minister, and you also know. So here we will discuss of two types of diaspora. One is called old diaspora and the other one is new diaspora, you can say. And it can be categorized. It can be, diaspora could be understood in 2 and 3 terminology. First one is called
PIO, persons of Indian origin. The other one is called NRI, non-resident Indians. The non-resident Indians, when you say, it means you are talking of the people who are still holding the Indian passport. Indian passport, basically they are Indians, but for the last many years, they have been living in other countries, and they have been making business or establishment. And the people of Indian origin means those forefathers and grandfathers happen to be born in India. They have migrated from India, and subsequently they have acquired. In case of Mauritius, Fiji, Guyana, and even in South Africa, and even in Malaysia. But they identify that emotionally and in some way materially they have identified with India. So this is very important to discuss. And here I am just NRIs, you all know that. And the other category is also, that is called SPIO, means stateless people of Indian origin. And this kind of Indian or Indian origin people is basically in erstwhile Burma, now what we call it Myanmar. So here we are going to discuss this diaspora. Broadly speaking, diaspora consists of NRIs, PIO, SPIO. So here we are going to, and they are big in number. See, I told you that the total number at that time means 1999, and the report was submitted in 2000. And at that time, 20 years before, the total size of the Indian diaspora was estimated or considered to be 25 million. That number has risen to 32 million right now. So it is increasing. So it's a big asset, and it's that diaspora should be understood as a strategic partner, because whenever our Prime Minister goes, even in the past or right now, he says that you are our ambassador. Wherever you are representing India's interest and you are projecting India's image in many ways. So India is getting benefited in that purpose. And whenever India faces any kind of crisis, you come as a risk bearer. And wherever you are, you also work for benefit or strategically and diplomatically. So for passing nuclear civil deal, they play a very significant role who are in United States of America. So this is very we consider this diasporic community, Indian diasporic community, as a strategic partner at the same time for other variety of purposes, because they have money, technology, and everything. So how we can work so that they could be attracted and they would be persuaded they should come in India? What kind of policy India could have? What kind of liberal? Because there is a lot of give and take, and there is a lot of expectation on the part of the diasporic people. So we will have to work. So I would like to tell you that they asked that we should be given what we call it Indian citizenship. So there shouldn't be any kind of distinction or differentiation between the Indians who are here and those Indian origin people or NRI who are working over there. So lot of strategic and not only administrative issues and technical issues are also. So if you see the charter of demands on the part of diaspora, it's a very lengthy and vast demands to which it is not so easy to meet all these demands. But of course, many demands out of that are genuine. So often they say that we face a lot of difficulty due to red tapeism and corruption and many things. When we come here, we are not welcome as we deserve. At the same time, lot of time takes to get the PIO card, or even many hitches are there. So if India is interested to take help
or from diaspora, they have to revise and they have to update. They have to make their diasporic policy more liberal, more relevant, which could be facilitative, which could facilitate the diasporic people easily. So here all these definitions, who would be basically called as diaspora, all these definitions have been given. So in a very short form, what we call is the people or the group of people of Indians who have left in other and settled down. Subsequently, they have acquired the citizenship. On the other hand, those Indians who are living in other countries for more than 6 months or a year, they would be called as NRIs. So here it is very important to understand that what is the spread and size of Indian diaspora, as we all know that. So India is the second after the Chinese diaspora, we all know that. In case of China, it is 45. In case of India, 25, and now it has reached 32 million. So it's a very huge number. It's a very huge number in many ways. So these diasporic people must be involved so that we could do better. So the whole world has become interdependent now. We are depending. The other country is depending due to globalization. So if we have a very important apt kind of strategic relations with this chunk of the population, definitely both would be benefited. So they are spread in more than 110 countries. So now it has gone up to 125 countries. And the region means, as you know, what are the countries and the region where they are working or they have settled down. As you all know, the United States of America and Canada, UK, European Union countries, Australia, West Asian countries, Southeast Asia and Far Eastern countries. So not a single region is left on the globe where you will not find Indians. So it's a very important. We must celebrate and we must be happy. But how we can work together so that both could, and we all know that sometimes they face a lot of problems, racial discrimination and many kind of problems crop up and they face the problem. So if India could emerge as a big power and important countries at the global level or internationally, as we all know that in international relations, if any country is powerful, it's very important, and that plays a very, they can, India or any for that country can play a very important role in order to promote or protect the interest of any country, of their own people. So taking that into the mind, they have also tempted that India is emerging as a big power on the earth. So they have also interested. They are interested to come over to India and they wish to India. So what they need basically, they ask, and it is very important. We prepare the fertile ground, or what we call it economic friendly or investment friendly environment, then they could come. From the entrepreneurship point of view, only emotion doesn't work. At the same time, it's very important that if you are investing your money anywhere, you will definitely think about the dividend, you will definitely think about the profit. So if you think that, it will bring the dividend, it will bring the profit, then you will be able to come. So India, India, could prepare the fertile ground. And whenever the diaspora day is celebrated, it's not only a mela, it's not only a kind of emotion attachment. Over there, we discuss for 3 days, what kind of business. So themes we decide. I think in the past, I remember that the theme of that Diaspora Day was to develop the Northeast. How Northeast of India could be developed. It was the theme. So like this, business session takes place and panel discussions takes place, and these people come over in order to participate. There is a provision to give the
Bhartiya Samman, Bhartiya Diaspora Samman, or many awards, many fellowships were given. Now, as we all know that the NRI's children are given a lot of incentive in order to send for taking their children over here for education. And a diaspora or these NRIs have also started establishing some university in our own country. So as we all know that in our own country, about 1,000 universities are there. So these universities are not good enough that our population is very huge. In order to cater the requirements of our own nation, at least the 2,000 or 3,000 university or educational institutions are required. Right now, we all know that around 25 to 26% gross enrollment ratio is there in our own country. So if you go and we must study the new education policy, which is a very good policy document. But so far as the case of its recommendation is concerned, we the teachers should be interested and should go through. So one point, many good points are there, but one point which is written, I am sure I am audible. Are you hearing me? Yes, Hello? sir. Yes, sir, very much. Yes, sir, we can hear you. Okay, so it's important to check. It's important to check, otherwise maybe we get lost or we don't understand. So sometimes just you say that yes, we are connected and we are listening to each other. So what I am telling you that this is very important to understand that now in that committee it is clearly written that we have to achieve the target of 50%. We have to increase the gross enrollment ratio to 50% by 2035. Now the question arises, these institutions which we are all are having are not good enough to cater that interest or to that level. So there's a need to have more university, more colleges, more educational institutions in this globalized era. And they have, these Indian diasporic people have money. So we are requesting them to come and establish the institution which can serve the interest of India and yours also. I think taking that pattern into the mind, so many things are there. So all these what we call it reports are available on the net. I think you can go through and get more input. Here we will only we will sensitize ourselves. So let us talk to, already I have told you that Indians are there in Mauritius, Indians are also there in Fiji, Guyana, Malaysia, Indonesia, and many more countries. So let us try to understand their presence, when they have gone, and what is the history. So let us try to understand the historical background of this diaspora, formation of diaspora. Historically, 5 patterns of Indian diaspora. First one is indenture labor migration, Kangani and Mastri labor migration, free or passage migration, voluntary migration to developed nation, labor migration to West Asia. Basically, these 5 patterns led to the formation of Indian diaspora in different parts of the world. So one by one, I will not dwell upon much details, lot of literature. Of course, there's a need to study, there's a need to make research in this diaspora. Diaspora is emerging in a very huge way. So there's a need to work on the part of the teachers like we all of us. And it's a new theme. Diaspora is a new thing. So it needs to be investigated by the teachers like we all. So here, let us just, my purpose is to sensitize you, to motivate us so that we could work in this direction, and we could try and we could help the policy makers to formulate their policy in the apt way, in the rightful way. So if we make work in this area and give suggestions or recommendation to these policy making bodies, definitely our policy
could be formulated in the right direction. So indentured labor migration has its own history. Many books have been written. Still there is a need to work in this to understand the different dimensions and the emerging dimensions in this area. So the literal meaning of indenture means contract. Basically, when the British Empire was there in British India, as we all know that we were the colony of the British, and at that time we often say that in British Empire sun never sets in. So it was a very huge and very large, long empire of the British. All these Mauritius, all these countries like Eastern Africa and India and many South Asian countries were the part of their colony. So when they came here, when they overpowered India, so what happened actually? Before that, handloom industry was very prosperous. When they came, so they basically replaced handloom with a power loom. So what happened actually? It led to unemployment in India. And at that time also famine took place. So famine and this unemployment, this power loom, a structural change which took place led to mass, what we call it, unemployment, especially in, at that time, India was divided into three presidency: Bengal presidency, Madras presidency, and what we call it, Bombay presidency. So basically from this Bengal presidency, lot of unemployment took place over there, and in the other part of British colony, that is East Africa, slavery was abolished. When slavery was abolished, there was a need of human resource or the labor, and here is a problem where there was unemployment basically in all these three presidency. So people were forced, Indians were forced to leave India under this indenture contractual system. So it was by and large. Of course, slavery was abolished from Eastern Africa. So they basically Indians replaced that slavery. It was by and large because it was a very rigid kind of bond or a structure under which Indians went to that countries like all the Kenya, Tanzania and Uganda and many more countries over there. And when they went there, so in that system it was clearly mentioned that you had to work for 5 years. When you wish to stay back longer, re-indenture were there. What happened after serving 5 years? But many opted to stay back over there for 10 years. So thereafter there was a provision that even you wish to stay a longer period, you would be provided a piece of land. So even in majority of the cases, they opted to stay back in plantation in the industry and agriculture. So basically, whatever the Indians, you find them, they were the progeny of that people who went under that indenture system. It is called that Girmit or Girmitia. If you read, this is very interesting, See the 70% in Guyana, in Fiji and Guyana and Jamaica, almost 40 to 50% people whose origin are India. So it is very interesting. So my point of discussion here is to just give some sort of input so that we the people could be interested and we could make research, we could study and do something in that direction. The second point to which we all should discuss is Kangani and Mastri labor migration. Basically from the Madras presidency, people went to Malaysia and Indonesia, Singapore, and in Southeast Asian countries. And that system was a bit liberal as compared to indentures. So it was not very torturous, not very rigid, not like a slavery kind of system. They went there. When they got back to India, they took more of their relatives, of their own people, and they went there and they have settled there. So a lot of huge number of Indians or the Indian origin people are found in Indonesia, Malaysia, Singapore. All these regions are full of the Indians.
And they have been doing wonders. They have done wonders. The third system to which we must try to understand the free or passive migration. In this system, the people who were having the trade in our own country, so they went under this system for making their business. So it was called free passage, means you buy the ticket for the ship freely and you board the ship and you go to different parts of the world. So the people went under this system. It was a liberal kind of system. It was, and the people were a bit educated, not labor, but trading community, especially from Maharashtra and Gujarat or even from Punjab. People went and they went again to this Eastern African country, South Africa, and they have gone there and they have opened their shop, they have established their manufacturing. So they did wonderful job. And when they started shining and what we call it, they became very progressive and developed. So there was, ethnic tussle conflict took place. So, in 71, even before that, in Uganda, what happened actually due to that, Idi Amin was there. So what happened, basically, it was very torturous. So there were these Indians who did very well commercially or entrepreneurially. So they were basically forced. So what they opted, they did not opt to come back to India because lack of opportunity. What they did, they went to Europe. So it is called twice migrants or twice migration. So what happened? So migration is a very adventurous kind of things, of course torturous, but at the same time it is very adventurous. So this is free. So the people, and still if you go to Eastern Africa or South Africa, all these business are still dominated by the Indian community. The fourth one is voluntary migration. So these three patterns are basically the what we call the pre-independence phase, pre-independence or colonial this. But these two, fourth and fifth, is called the post-colonial happening or what we call it phenomena. That is called voluntary migration to the developed nations. Means when India got independence, so India established many elite institutions like IIT, IIMs, and many more these kind of institutions, and they produced a huge number of highly skilled manpower. Those who are from the elite sections of the society, they were educated. And what happened? Due to the Second World War, we all know that Europe faced a lot of economic crisis in the human manpower crisis, and they wished to reconstruct its own economic activities. And here is India, which produced a number of good, what we call it, highly skilled manpower, and they needed their help. They needed their so there was a market. So in that market, India supplied its highly skilled manpower in Europe to reconstruct its own economy. So see the situation in 50s, early 50s till 60s or mid 60s, people started going, as we all know, and they went there, they have settled. They were the doctors and engineers basically, were produced by these IITs, 4 or 5 IITs and IIMs and many more medical institutions. So basically they opted not to serve India, rather to choose, they had chosen to serve that purpose. So here it is called voluntary, means it was not like this. It was completely voluntary or economic in nature. They were highly educated. There was a labor which was needed the manpower. So they opted. Doctors, engineers, Indian doctors and engineers went to this system. So if you calculate, right, 5 to 6 million Indians are there in Europe or the United States of America or Canada, more than that. So at the last, means it happened in 50s, 60s. The other opportunity arose in early 70s. What happened actually as you all know, the West Asia, when we talk of West Asia, means all these Gulf countries, all these Islamic countries, all this Muslim world or Arab world. It is known by different. It is our extended neighborhood.
It is rather our neighborhood. If you cross Indian Ocean, you will reach Saudi Arabia or UAE or Dubai and Muscat and many more countries. So the Arabs came to India. We have our own history, ancient history, long for trade. Arabs came to India. Indians went to Arab world countries, and they have settled. In many cases, they have settled there. They have acquired the citizenship of that nation. If you go to Dubai, complete gold is dominated by Indian communities. So they are the owners of that gold shop and many more things. So my point of, but when oil shock took place, oil, what we call the energy, oil took place, or it is called oil shock and oil boom. So the Gulf people call it oil boom, but from rest of the world it was all of a sudden they hiked the price of the oil, and they become, within 2-3 years they became very rich. So what they needed actually to they are also very smart. They started to reconstruct or diversify its own economic activity. So there was a creation of human resource. There was a need of manpower. So people started going to that. So if you see the number of the Indians who are in West Asia, that has gone up to 9 million, means 90 lakhs Indians are there in West Asia. They are working and they are emitting a huge amount of remittance to India. At the time of economic crisis which took place in 1999 or 1991, so basically this remittance came as a risk. So we will discuss. So I have given this background. What is how diaspora formation has taken place. Basically, migration leads to formation of diaspora. People migrated under different circumstances from India to other parts of the world, and they are huge in number. Means 32 millions, means 3 crore से ज्यादा लोग बाहर हैं, Indians हैं, and they are shining. They are doing very wonderful kind of job. You all know that. So now here we are working interdependently. So we are going to take help from this big chunk of the population so that our country could be prosper. And if India is prosper, definitely they are also going to get benefit of variety of kind of things. They are coming not for charity, they are coming for investment. If they are coming for investment, they are also going to get dividend. So it's very important to understand and how they could be benefited and what kind of situation would be there. We the people, teachers like us, can make a study, can make research from different angle and give this kind of input to the policy makers, so that our policy could be. I think I have already discussed these things in details. What is indenture? So just factual one. The migration of Indian indenture labor. Sir, can I ask a question? If you Sorry? Can I ask a question? I think I will give you enough time for question. Just reserve your question. Let me finish it. Otherwise, it will be derailed. I would be very happy to have your question. But due to this online, if we digress, even then, if you have an immediate question, I won't mind it. I will be happy to answer you. Please ask the question, then we'll proceed. No, sir, it is fine. I will wait. No issue. Please continue. No, I don't mind it, because I will be very happy to have your question, but kindly reserve it so that how much time should I give? Tell me, Vaisi. No, sir, I will wait. You please finish with your slides, and then I ask. Definitely. So I will finish by 12. By 12, I will finish it. Let me assure you. So half an hour will be given for your questions. So your questions are very important. Your observations and the remarks would be very well taken. I always feel pleased to take the question. So let us have these facts and the figures, and then definitely we will discuss. The migration of Indian indenture began in 1834 and was officially ended in 19. So around more than 80 years. So a century it existed, basically, indenture system. So it's many books have been written, especially on indenture. So my point over here, so that in many countries, this system
were prevailing. The chief importing countries of Indian labor were the West Indian colonies, Fiji, South Africa, Mauritius, Malaysia, Ceylon, which is called Sri Lanka. So these were the countries. From India to these countries, people migrated or were imported rather. The Indian indentured labor also went to East Africa, such as Kenya, Uganda, Tanzania, Jamaica, and many more countries. So here we can choose one country and make our own research. Of course, researches have been done, but there's a need to make research. And one thing I would like to tell you that we are not doing much good in terms of research. There's a need on the part of all the teachers like us to make research, so that our country could be made proud of. Whenever what we call it ranking takes place around the world at the global level, our university, our educational institutions don't figure anywhere. So in terms of our quality of education, in terms of research, we are lagging far behind. Yesterday, I was talking to some of, I think, for BPS Mahila Vishwavidyalaya, I think one FIP is also going on. So I was discussing research and innovation. So hardly 0.5%, are only research in our own country. And see the situation. So I made the comparison. So if I take the time, I'm pointing out that there is a need, serious need rather, or crisis. There's a crisis in terms of the research. We don't stand even in quantity wise or quality wise. Both the things are missing in our research unless until we make research. And who is expected of research? We the teachers. The teacher cannot be a good teacher unless he or she is a good researcher. So we have to develop the habit and what we appreciate so that we could make research, and with the help of research we can earn name, fame, money and everything. I think, and it is waiting. A lot of funding agencies are there in India. So if time permits, we will discuss. So majority of the immigrants were recruited from the hill Kuli districts of, basically what are the places? Chota Nagpur division, as you know, Bankura, Birbhum and Burdwan districts of Bengal presidency. Even all these eastern part were the common. Bihar and eastern Uttar Pradesh were the leading area in North India, from where indenture system was prevailing, and people, or the UP Wala and Bihari people, went under this system, and they are still maintaining the Indian culture as what we call it language. So this is very important to understand. I think already I have explained. Even from all these presidencies, people went there. In South India, all these Madurai, Salem, Tanjore were the main recruiting agents. In West India, Bengal, Bombay President Ahmad district was the main area of recruitment. Not only this, many. So recruitment agencies were there, and they started sending Indians to these colonies, which were the part of British Empire at that time. And Kangani system, already I have told you, the word Kangani is basically the anglicized form of Tamil word. Konkani, meaning overseer and foreman. Under this system, a Kangani used to recruit the coolies in India, paying them in advance for expenses. The Kangani system of recruitment was used to supply South Indian labor to Malaysia and Sri Lanka, and the Mastery system to Burma. And you know that even Indians, to which I told you, the states, they have become stateless. No country is giving recognition to. Already they have lost. From India, they have gone there, but they are treated very badly in that even state. They have been made stateless. So this is a point of worry, and we the people must study what is their situation, what kind of problems they are facing. So as a human being, we must study. The Mastery system was more or less similar to the Kangani system, except that the former was characterized by involvement of middleman employees. So not much different, but it was a difference. 3 países already, I think it is repetitive, and
They dominate in towns. They monopolize trade and commercial activities in these countries, all these countries. And basically from Gujarat and Maharashtra, especially from Punjab, people went to this free or passage system to South Africa and all East African countries, and they are still there. They are still in number. Of course, majority, some of or at least 50% people went to Europe due to this internal strife or conflict, ethnic conflicts. So they faced. So let us now try to understand this voluntary migration. Already, I think I have told you the people who went to United States of America, Canada, or Australia or New Zealand, basically, and this was economic in nature. This was voluntary. This was optional, not like that system. And we all know the size, almost 6 to 7 million Indians. If you calculate in this part, I think they are huge in number. And so they have settled there. But since 90s, what happened actually? This was not the permanent kind of migration now. Since 90s, it is temporary also. If you are going, you will not be given, and getting the citizenship even in these countries are not easy task, especially in the United States of America. A bit Canada, a bit liberal kind of policy is there, but not in they have made their immigration policy very stringent and very strict. So it is not so easy. But temporary kind of migration is still going on, and that is going on rapidly and in a very substantial manner. And they are found almost in every sector. Every sector means even if you go to even Europe or United States of America, they are working in NASA, and Silicon Valley is very important. And if you go to Toronto, you will find a lot of Indians, and they have been again shining like anything. Silicon Valley. So as we all know this, I'm not going to dwell upon much more. Here there's a need to work and to understand labor migration to West Asia, which basically started in early 70s. Already I explained it to you that all of a sudden oil high took place due to the crisis. They enhanced their oil price. So they got a lot of revenue. When they got the revenue, so they started to diversify its own Gulf economic situation. So there was a need of manpower. And one thing which we also understand and try to understand, that we have had a very strong economic trade or man-to-man relation with this region. They have come, they came to India, Arabs came to India in Malabar region, or Kerala especially, and other coastal area, Gujarat, and Indians went to this Oman or even Saudi Arabia, they have settled. So it's not a new phenomenon, but substantially, basically, Indians started going to this region in 70s, after 73, and the number has started rising. So this number has gone up to, very huge. In 90 lakhs, means 99 million Indians are working there. Of course, if you see the settlement of the Indians, those who have got the citizenship of that region are not much, but number is there. So here, it's very important to understand that now India is the third largest remittance recipient country. I think now it has world largest. So right now, if you see, when this migration started taking place, especially from 70s, so what happened actually? At that time, the amount of remittances was not much. It was only 2
2 million in 70-71, which rose to 2 billion in 80-81. 10 times there was an increase. Almost within 10 years, it increased to 10 billion. If you see the scenario, right, subsequently it started rising when the number has also risen. Especially not to the United States of America or other countries, but this region is found to be very interesting and very productive from economic point of view, from the investment point of view. So see the situation, it became 12 billion in this, and now it has touched upon 80 billion. According to the World Bank report, if you go through 80 billion, it has risen. India has acquired the first position. Top 10 countries, or it has acquired the first position. So let me examine, let me try to make you understand that if remittances are coming, or it has acquired the first position, or 80 billion, or it is increasing. So is it a point of worry, or it is a point of happiness, or what we should feel? Because you know what 1991 happened actually. India was on the verge of financial crisis. So basically this came as a risk. FDI, these remittances are considered to be more stable as compared to FDI. So this is very important, and we celebrate and we feel happy that this because it is our foreign reserves, and it is used at the micro level. Basically, it is used to eradicate poverty, or to a larger extent reduce unemployment. So it's very important. That must be celebrated, that must be taken into account as how to consolidate, how to enhance, how to at least maintain this pace of inflow of the remittances. If remittances are coming in a huge way, and ours is an economy which is considered to be a very huge economy, you know, big economy, even around 3 to 4% contributions are made by these remittances. So this is very important and there's a need to study how we can enhance, how we can increase this, because now Ministry of Skill India is there. See the situation due to this pandemic. We all know that our economic crisis, even the whole world is under the grip of economic crisis, social crisis, even mental crisis, health crisis, all kind of crisis has taken place, and that is going on. So how to eradicate? Now we the people like us should study in the post-pandemic period, what kind of labor situation would be there? What kind of human resource we should create, we should build up, so that ours is a country which is labor surplus, or what a human resource. We are sitting on the pool of resources. So, you know, one thing it is clearly said that India has a tremendous potential for human resource. Human resource is considered to be very important, I think, agent or source for the development of the nation. 2/3 of the population falls under the category of what we call it, youths. India is considered to be the country of youths. So how we are going to translate these youths into the human resource? If we will be able to translate or transform these youths, or the big chunk of the population, into the human resource, it will become the big assets for the nation, and country can progress like anything. If we fail to do this thing, it will become the big liability for the nation. The boon would be translated into the bane. So how we can tap this policy, how we can have the apt kind of policy, appropriate policy, otherwise it will become the worst for the nation. As we all know that now we are saying that India is a demographic dividend country. Of course it is, but it will not be a demographic country 20 years, 25 years down the line. The same chunk of the population to which we all celebrate, and we all have holding the positive kind of aptitude or view, it will not be there. 25 years down the line, same pocket of population fall into the category of the old one. So here is a point, here is a catch on the part of India, or the policy makers, or the researchers like us, to do something so that we can take the benefit, we can tap
this human resource or the population to transform or to translate our economy into the positive direction. So here is a catch. Here is a thing that needs to be understood by all of us. So already I have told 80 billion situation. So in terms of the size of the what we call it diaspora, China has done wonders, but now it has been replaced by India in terms of the inflow of the remittances, and it is not a new phenomenon. For the last 10 years, more than 10 years, we are continuing, we are consolidating. So it's a point of happiness, and we must feel pleased, but at the same time we must work in this direction that more inflow of the remittances could take place, and that should not hamper. I know that in 2021 there will be problem, it will go down, but again when this situation will eradicate, means this crisis pandemic will go away, we have to do in such a way that our situation will get to normal, at least in terms of the remittance, in terms of the outflow of the labor. So Skill India and many more policies would be there. So like our immigration policy is, when it was enacted in 1983, before that it was enacted or it came into being in 1922. Thereafter, long gap, in India revised its immigration policy. So now we are thinking, of course, we are going to revise. So it should not take much time to revise its own policy. Simply because if we leave behind and lag behind some country, because there's a competition in terms of the outflow of the labor also. So many South Asian countries, Southeast Asian countries are in the arena, and they are in competition with China, with India. So we should act fast. We should be apt enough. Yeah, so far as the case of formulation of the policy is concerned. So this is very important to understand. So just I highlighted some facts and the figures. Remittances, as we all know that according to the World Bank report, India is the top position, as we all know that. Foreign direct investment, of course, it is there. And both the things come on the part of what we call it diaspora. According to a report by the UN trade body, India received 51 billion in foreign FDI in 2000 and was the world's 9th largest recipient of foreign direct investment in 2019. So here two things are very remittances and then FDI. So here we must work so that we could do better. Philanthropy, so it is nothing but the benefit. It comes on the part of the diasporic people. They help and they give charity. Whenever India faces crisis again, when Gujarat, when the earthquake took place, so they came with the philanthropic mind and they help a lot. So many overseas Indians supported social projects, educational and health services in their home countries. So this is very important. Unless until we have the connect, direct connect and internet and bilateral kind of understanding this of their technology, again we will have to have a very apt kind of understanding so that their faith, their what we call it, their confidence could be won. So we will have to provide the fertile ground. We will have to give the congenial, friendly and entrepreneurial, eco-friendly environment. Then I think it will be. So they contribute, means these diasporic people contribute their homeland through transfer of acquired knowledge in education, health, IT, industry and communication sector. Everywhere, since already I have told you, they have money, they have technology, they are more educated and they have worked with a very sophisticated kind of technology. So their help would be of immense help for India, and we should not take any delay in this direction so that we could take benefit out of diaspora advocacy. So already I have told you, the Prime Minister and many functionaries, Indian functionaries, when they go abroad, they address these very strong
diasporic Indian communities, and they also feel good about India if they are being appreciated, if they are being acknowledged by India, and they come with the good kind of things for helping in India. And if you go to even in all these GCC countries or West Asian countries or the European countries or anywhere, they have formed their association, Indian Community Association. Even the intellectuals like you, they have their own professional association. Almost everywhere they have their what we call it, NGOs or their cultural organization or the institution. So we can establish this kind of relation. As a teacher, see the situation as a teacher, if you are really interested to work in this area or some area, if you are going any country, and you can identify, you can Google, and you can establish connect with them, and they will come with their help to help you out. I think this is very important that we all should take advantage of this thing. Whenever you go abroad, you can take the help from them, and they are eager to help you out. As already I have discussed with you that government policy to engage, in that very report, it is clear how to engage them. Basically, what kind. So definitely, if we are giving some sort of fellowship or awards, revising PIO card and all these things, all benefits, if we are giving them, so definitely they will come here and they will invest there, provides an opportunity to engage vast diaspora for mutual beneficial activities. Of course, so there would be mutual kind of. So now 15 PBDs, means Parvasi Bharatiya Divas, have been held at various places in India. It is still going. During this, Parvasi Bharatiya Saman awards are given to honor the overseas Indians. Definitely, we have to. It is given in that in that report that unless until we acknowledge their effort, their sentiment in a different way, they cannot be allured, they cannot be attracted to that. So there's a need to work. So many, I think, things are there. And if you visit this, so there was a Ministry of Overseas Indian Affairs, which was enacted or which came into being in 2004. Okay, and this continued till 2015 or 16. Thereafter, it was thought that it is not working and it is creating impediments. So again, that ministry was merged with the Ministry of External Affairs. So if within the Ministry of External Affairs, if you go and visit, annual report and many things are there. So it's very important to understand all these things. Be taking this Indian Community Welfare Fund. So not many, all these incentives or recommendations which were made in that high level committee diaspora report, all were by and large what we call it met out, and it is discussed whenever Diaspora Day is celebrated. Three major areas: they assisting Indian diaspora in distress situation. Okay, so here Indian Community Welfare Fund. So these institutions were established in 2009 with the objective of helping Indian diaspora in times of emergency due to their natural disaster or any other conflicting situation. So we have also committed that what we could do for that. Three major areas India has to help them: assisting Indian diaspora in distress situation, support for community welfare programs, activity improvement in consular services. Always there is a complaint on the part of that we don't get, in diaspora people don't get support from our embassy wherever they are. So there is always complaint. So Government of India revised, and what we Government of India could do or government can do in order to solve this problem, Government of India has tried. India Development Foundation of Overseas Indians. So it's, IDF has collected about 88 projects from 15 states. On first, online payment gateway was started by ministry. So Government of India is trying hard. So my point of debate and suggestion
is here. So we the Indians, we the researchers, we the teachers should understand in the right perspective, and we should work all these projects, all these points, so that we could facilitate in this. Unless until we work in this big project launched by or initiated by government of India, that these diasporic people, about 32 million, should be engaged for our own development project. So it cannot be done alone, only on the part of government. They can formulate the policy. So they need the input in this direction, so that it could be good policy could be formulated. At the same time, it could be executed by the appropriate agencies. So here, we the teachers should work in this direction, as how they could be engaged in the right direction, in the apt direction. So these are the facts and the figures. I think if you open this India Center for Migration, so in 2018 I took around, it's a think tank, and I'm just sharing with you that if you are really interested to organize certain seminar, academic, it's a think tank. So academic kind of exercise is also very important. To 2018, I took 7 lakhs rupees from this ministry, especially India Center for Migration, and held the conference in Jamia Millia Islamia. Why I'm saying that? They provide fund for undertaking research, especially relating to migration. If you are really interested, and you should be interested of different aspects of migration or diaspora, I think you can submit, you can approach this ICM. I say it's a think tank, so it has its own money, earmarked money. So we the people could study on different aspects. In July 15, Ministry launched a portal for registration of Indian students studying abroad. See the situation. Now, this is very important. That in Germany, if you see, many large number of students have gone over there. So again, here, it's a point that how we can have our own educational institutions. Lot of money is, siphoned, is going. The remittances to which we are receiving. At the same time, the money is going outside. So what kind of policy we could have, and what kind of educational institutions we could have, so that we could tap our own students, and we can manage our own students so they could study here. Again, it's a point of investigation and the research on the part of the teachers like us. So see, 6.5 lakhs people are around, even more than that. People are there. So how we can do it? So here it's very important to develop. I also talked about the crisis in higher education when I was talking about research and innovation. So this is very important. The role of the teachers like us are very important. Unless until we play our role, alone country cannot do anything. So again, a scholarship program for diaspora children, all these things are there. But these diasporic people are not satisfied, whatever they have got it. So here, why I am saying that it's important to understand that how they could be engaged effectively. Again, there's a need to work in this direction, so that bilateral kind of understanding could be built up in more vigorously, in more stronger way. Then I think we could do something much more for our own nation, for these diasporic. They are our brothers. So when they need help, other kind of help, so it is the responsibility of the India to help them as they are ready to help India. So I think linkage between diaspora and development, there's a direct link. There's no doubt about that. There's a direct link between diaspora and development, as migration, diaspora and development has the direct link. So diaspora leads to if they are really coming over here and they have started investing in India, and they are remitting a huge amount of in the form of remittances to India, and these all remittances are used, FDI and remittances are used for our own productive activities.
So it is leading to it is considered as one of the independent factor, and it is nothing but the function of development in our own country. So this is very important, that should be taken into account in a very positive. Several studies show that diaspora has shown a great interest and the willingness to invest in India through one or the other ways. Yes, they are ready, as they say, but their demand is that you provide the congenial, friendly, or what atmosphere over this kind of investment could be made possible. Indian government has recently launched many schemes and provided flexibility in policy to tap the potential of its diaspora. Of course, every day, whenever this diaspora day takes place, even before, so many now institutions have been created. The function of that institution is to facilitate, and many more institutions are required, and that institutions could be only formulated, could be established only with the help of the input which has been given by the people like all of us. So we should walk in this direction. Annual figures shared by the government departments on remittances, World Bank. So already I think I have discussed. Nothing is government strategy to engage. So many strategy has been created by Government of India as how to engage them in the positive way. It is known that most of the government policies were found to be positive about the steps taken by the government for diaspora. However, they had concern on few policies which were benefiting only a specific segment of the diaspora. Again, this sort of problem is there, but all policies initiated by government have limited spread, as many are not even aware of the PBD and RPD, which are the most popular initiative of the Indian government to engage. So here it's very important. Who will highlight? What do we do? Basically, highlight means if we make research in this area, this point could be highlighted more. So PBD means public, what we call it, Parvasi Bharatiya Divas, and this is regional Parvasi Bharatiya Divas, means now even at the state level, and the UP or even other state like Tamil Nadu or Andhra, they have started engaging the diasporic people at the state level. They have the connect. So here, even at the local level, it's very important to work. And who will do? Only it could be done when we make a study in this area. Then I think it could be made possible. Dual citizenship, many countries now, why? Here it's very important to discuss. Many countries in the world, that over there is a provision on dual citizenship. Dual citizenship means you are the citizen of India, and at the same time you are the citizen of the United States of America. So they are very eager that they are not wishing or willing that wherever they are, that their citizenship continue over there. At the same time, they should acquire the citizenship of the motherland like India. But our rule, our policy doesn't allow this so far, but many countries it is there. So that is one of their very important easier and clear tax now. See the situation. Why dual citizenship? One of the important demands of the diaspora. It would facilitate their easy movement. It would enable them to contribute more through their investment. Easier and clear income tax now. Easier avenues to drive philanthropy, renewal of passport for NRI, convenient visa services, investment and banking policies for NRIs, demand for a common identity card fulfilling the need of Aadhaar and PAN card all in one, need for a platform for better interaction and to deepen cultural relationship. So these are the demands, not only it's a very huge and long list of charter of demands. Many demands were made by Government of India, but this is all not possible. This is only bargaining. So here I am going to conclude. So in conclusion, what we can say, that India's inclusive policy, philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has convinced many nations and Indians living there for joining hands to improve forward for various
venture. There is a need to further strengthen the Indian policy and utilize the growing interest and potential of Indian diaspora in development process of the nation. Diaspora can prove as an important determinant in India's quest to be a knowledge power on global platform. So now it has been recognized, well acknowledged that they can play a very role, and they will play a role if we identify or acknowledge and give the kind of direction, or if we are able to connect them in true letter and spirit. I think if we work together, because our interest, our mutual interest, collective interest converge here. And for more convergence, for more liberal kind of things that should happen jointly, we will have to work. We will have to try. We will try to understand them, because they have led the India. Their orientation is now the work culture to which they all are working is completely changed. We are different. So we will have to meet a certain point, common point, or create the certain common point over convergence is possible. I think they are the potential. They are the potential. We must consider them as the potential who are eager to help India, and at the same time, they need the help of India. If India is doing better, definitely that is also in their interest. So investment, development, I think is very much possible if we prepare ourselves mentally or otherwise. Also, we provide the positive kind of atmosphere, what we call it, economic viable environment friendly. If we provide, definitely I think they would do wonders, and India can do wonders with the help of diaspora, and they could also be saved. Their interest could also be saved whenever they face any kind of crisis, either in the first world or the Arab world or Southeast Asian countries. So here I think I promise that I will give you at least half an hour so that your questions will be taken. So before I conclude, I would like to submit before I will try my level best to answer your questions. But at the beginning, I told you every question has no answer. So if we work together, the day will come, you will get the answer. Get the answer in the same, because we have discussed and we are discussing a very complex kind of issues, not only relating to diaspora, means all the thing everywhere. So debate and discussion, critical analysis of the issues are the important in academia, to which we all belong. So we cherish ourselves. Why do we hold commission, seminar, symposium? We often go to seminar, not to get the answer all the time. We go to try to understand the issue in the right perspective, so that we work towards this. The day will come, it will be resolved. So with these words, once again, I am very thankful to all the delegates who have joined this course, and I wish you all the very best. So now this is the time for question answer. So Pawanji must be here. So now I'm looking forward to have your input, remarks, questions, comments. Thank you so much. I will try my level best to I'm very much here. respond. And I think, sir, before we go for question answer session, we can have a small break for 5 minutes. As per schedule, we have to give a 5 minutes break. Okay, Right? no issue. Then we will go for our question answer session, sir. Yes. So here we will take a 5 minutes break. We will rejoin after 5 minutes. Okay, that's fine. That's fine.
पानी नहीं, चाय पिला दो ना। इसको बोला था अंसारी को। Yes, please tell me. All well? Yes, sir, all well. Actually, there is an issue with my mobile. So sometimes it's some display issue. I think I have to go back to the mobile shop. No, now just after the class, sometimes the call is not coming. I cannot receive it. Okay, so when do you want to go? So go, I think, would you come in 1 hour? No. I don't know how much time it will take. But right now it's okay. Let me see if there is any problem. Okay. Technically. So you have to put the question NCQ today? Yeah, we will. She is not well. Okay. Muskan is not well. Did she tell you? And so she tried to call me, but No, she is not well. She told me in the night. she will not be attending the session. No. No, we will manage. We will manage, sir. There was a lecture. Still going on. Half an hour again by I think 12:30. सर अपना माइक बंद कर लो। हेलो सर। बोल दो। What should I say? I'm just coming. Sir, mute your mic, please, sir. Thank you. Pavan sir, did you say something? No, ma'am. Pavan sir? Ji. Okay, I thought you were saying something. No. Sir, did you make some announcement? No. There is no announcement. Okay, thank you. Okay.
जी, welcome back, sir, and participant. So now we will go for our question answer session round. Professor Rahman, can you hear me? Yeah, I'm hearing you. I'm Okay, hearing can- you. I'm Can we start here. with- Okay. Yeah, why not? Yeah, I'm waiting. जी, डॉक्टर नवीन मित्र. आप पूछें अच्छे one by one. Sir, good morning. Good afternoon. Actually, it's good afternoon now. Sir, actually, it's not a question. It's not a question. Basically, just I want to have some viewpoints in my mind which I want to discuss. So it's not a question. I have some concerns. Yes. Sir, migration is good because we get good remittances. So of course, it is a proud moment for us that we, because of the Indians which have gone and worked there and have been working continuously, they remit too much amount. But don't you think that it is only allowed only up to some extent, because more we go, then there can be some hatred among those people who are the original citizens of that nation in which they have gone for working. So they will tolerate us, or not only Indians, they will tolerate other people only up to some extent. But the moment other people start earning more in terms of financial considerations or in terms of reputation, there may be some hatred which can also build. So that is only my concern, and I don't want to say anything. That is only my concern. So what we can do as an Indian government, that don't you think that we should extend help in those countries for our own people, because one embassy or some consulate in that country is not sufficient, or for 50,000 people, Indians, or for 40,000 Indians, we must be having one office in different cities, if it is possible, or some people who will specially work for the safety of our citizens who are in their countries. Yes. Yes. And as far as the amount is concerned, because when we collect the taxes, tax can be spent by the government of India on any purpose, whether paying salary, highway, roads, etc. Why can't we having a special welfare fund, diaspora welfare fund, or something like that, which will be spent only for the safety of our Indians who are working in other countries and in those nations? That is only my discussion. So it's not a question, basically. I think it's very good. Very good response. I think very good comments and observation made by you. So let me respond to you. Can I respond or can we take up? I think let me respond and then we'll go. You rightly pointed what happened actually in Kenya, Tanzania, and many Eastern African countries. When Indians started doing very well as compared to the local people, basically it led to hatredness, it led to conflict, ethnic conflict between the Indian communities and the local communities. And that led to, what we call it led to the double migration which took place. Means the Indians who migrated from that region, again they were forced to migrate from that region to the Europe for more safety, for more lucrative kind of things. So it happens. So here my take is that it is the responsibility of the state, of the concerned state, to give the protection of anybody. And let me tell you, many international standards are there for migrants and their families, like 1990 UN Convention that provides the full protection of the migrants' families, migrants, and everybody. But alarmingly, unfortunately or alarming, not a single country, those countries which are considered to be the champion of protecting the human rights, like United States of America or France, Germany, not a single country has ratified that UN Convention. It is considered to be the Bill of Rights, but it is not considered. Even India, we have had a lot of migrants. India is, in terms of the diaspora, in terms of the international migrants, it's at the top. We send the maximum number of migrants to different parts of the world. If you see the size of migrants, it is around, according to the World Bank, latest World Bank report, 17.5% to 17.5 million Indians are international out of 272 million total migrants, which constitute 3.5
we cannot stop. It has been taking place since the dawn of history. And in this globalized era, it is also now acknowledged that it should not be stopped. When it is inevitable, you cannot stop. Unnecessary, you can make unnecessary attempt to, in order to. So there are some countries which feel that, which they make their, what we call it, immigration policy rather more stringent. Even it is not stoppable. See the situation. And let me tell, in economic parlance, there is a demand and supply. So if see the situation, entire world, it's the natural resources. It is free, and if we are able to utilize the optimum resources, either human or natural, that is for the benefit of the humanity. Where there was, what happened actually? When Second World War took place of manpower, there was a need of human resource. So Europeans did not do any kind of mercy or charity. So migration phenomena aspect is not a see the situation. So when Indians went there, that is, they benefited enormously for the economic activities of the European countries. They contributed immensely. At the same time, they remitted the money to India also to the extent possible. So the country of destination and country of what we call it origin, both are benefited in this. But the victim, who is the victim? Victim is in fact the diaspora or the migration. So it's a not good thing. When you migrate, it is not out of a happiness or pleasure you migrate. It is not adventurous, There are certain situations which forces people to migrate, to take the refuge elsewhere. So this is not but what can we do? If at that time there was unemployment due to famine and a structural change which was brought by the British Empire, so Indians did not have any kind of option, but they opted to go to Kenya, Tanzania, other European colonies or the British colony at that time in order to earn their livelihood. They went there, they worked very hard with sincerity and punctuality, and they did very well. When they started shining, they did very well in terms of the business, in terms of work. So there was again hatredness. So here my take is that since they are benefited, they have benefited, they are benefiting the home country and the host country. So it is a responsibility of both the state to protect their interests. There shouldn't be any kind of hatredness, because they see the situation. The Indians who are working in Gulf, Gulf people are not doing any kind of mercy to these our Indians. They have become the part and parcel of the Gulf economy. So they are contributing immensely to the Gulf. At the same time, they are remitting money to India. So it is in the interest of India and in the Gulf countries. So both country states should come together, have the understanding and protect their interest. I think this is my take over here. And since it is migration, diaspora is invited only for market situation, a labor market requirement, which is created and which is the need of the labor market, people migrate. Where there is a job opportunity, people migrate. So is the case happen in our own country. See the situation from Bihar and eastern Uttar Pradesh. People migrate and have migrated to Maharashtra, Gujarat and even Haryana, Punjab, because they are found to be more prosperous, employment oriented. Again, it is the responsibility of the Haryana government or the Indian government to protect their interests. They should not be harassed by the in Maharashtra or elsewhere. So legally speaking, we know that any Indian can go anywhere in India for their job, for establishment, for staying, to make their house, to just for settle down. Our constitution says. So who will give the guarantee? Who will protect the interest of the constitution? We the Indians, the government operators, state. It is the responsibility. In the same case applicable in the hatred.
since they have done the very good job and hard work, they have done wonders. So it is not to protect the interest or to give security, human security, dignity, and everything. And international standards are there. Not only international, even no government in any country, for that matter, will say that yes, these people are working. They are working with some legal document. So you cannot do, even illegally speaking, everybody has the natural right. It is our right to live, is the fundamental right. Natural right, let me tell you, natural right. It is the responsibility of the state, in the modern state, to protect its interest. And again, it is in the benefit of the country per se. Basically, we are not so happy in paying tax to the government of India. Basically, we are not so happy. Why? Because we don't think that we will get some direct benefit. Of course, we ignore the indirect benefits, like I'm getting some air, good quality air, or police or judiciary. I fail to incorporate these because these are not my personal benefits. But now, Yes. if you see yourself, the tax which you have paid in the past 30 or 35 years of your service, after retirement, you are not going to get some direct benefit from the government, direct benefit, some personal security of my health, etc., etc. So the moment I get some direct benefit also, if I have paid so much tax in my last 30 or 35 years, what benefits I will get? Little bit some direct benefit. It gives me some attachment, and I'll be motivated to pay tax. So same is the case when now, of course, we have to do some research that these people, how much tax they have given to us, to the government of India, and out of that tax, how much amount directly we can spend for the safety and security of these people. So don't you think that it will also provide some attachment and to these people, that the government has started thinking about us directly? Don't you think, sir? I think many benefits have been extended to these diasporic people, but their charters or demand are very enormous, very lengthy. So all the time there's a need for bargaining, there's a need for negotiation. Business takes place only with the help of negotiation. So benefit, and they have enjoyed the benefit of the European society or the Western society. So like this situation, we cannot. Even they ask, or even if we wish, we will not be able to do it. Light gone. So what happened yesterday? Even I am sitting in the university, Delhi-based university. Light went off. So connection, we lost connection. So it happens. But you cannot think of this kind of thing in the Western society. You must have gone there, spent 2, 3, 4 years. Not a single time you will say that power has gone off. So it happened. So anyway, we are developing our own society. See the situation, at least if you say in terms of material development of the West, at least they are at least 100 years ahead of developing countries like South Asian countries like us. Let us accept it. They established metro in London 1900. In Paris, it was established in 1901. In India, 2000. I think 2002 in Delhi, 2002 or like this. So just I am giving some sort of indication. If you see, they have made their society materially very well up. We must accept it. But at the same time, we are doing also wonders. We are also progressing. We have our own colonial legacy, and many pitfalls are there. So we should work in this direction so that we could also develop. When we develop, we will be appreciated. And how, see the situation, all these universities to which we all are celebrating, they hardly figure in top 100 universities. So only by saying that they have their own indicator or like that, it is not suffice. It is not, we don't figure. So we must accept it, we don't figure. Our quality is not, our institutional standards are not of that mark. So how we can do, unless certainly we identify our problem, issues, we cannot come up to that level. So let us strive, let us work together so that we could do also wonders. See the situation in two sectors which are very important. And why out of this box I am saying,
And my point of discussion is just to inspire you and to just give this kind of responsibility. See the situation: health and education. Two things are in the two sectors we are not doing well. We are not doing it. How we can do wonders? How we can do better in this? So there's a need to work. Take the example. We are basically educationists or academicians. So we should play. See, now we are having a very good document, policy. All the time, let me tell you, this is not only the good document. All the time, 86, it was a good document. In 1968, first national education policy came into being in 1960. It was also a wonderful document. All policies were document. Let me tell you. In all these policy, it was written. It failed in 86, and I don't know what will happen. So my take over here is that let us strive, let us try to make the consciousness, awareness amongst the population, amongst the masses, amongst the intelligentsia, so that government could be pressurized. In democracy, I think pressure group works. So if you don't, you will never find any party manifesto, in any political party manifesto, if I win, if my political party wins the election, it is going to implement 6% of GDP for education. See, 68, it didn't happen. 86, it didn't, I don't know what will happen. So that at least, see the case of South Korea, 10% it spends. Malaysia, 12%. So many more countries are there. If any country ignores health, means Shiksha, Swasth and Shiksha, if no country can afford to ignore these two sectors. But we have been ignoring. We have been ignoring for, see the situation. Almost every what it is not open. Only the college, university and schools. All malls are open. But educational institutions are not open. So what does it mean? It means we are not giving. So we all are educated enough. We follow the protocol. Everything we follow. And we can follow. For general masses, all these things, so it means it implies that we are not giving much importance. Not during this period, we have never given importance to education. Our status, see the situation, high teacher education, teacher status in any country, advanced countries or developed countries are at the top. But it is not in our own country. We are playing a very deep role, an important role. We are called to be the nation builder of the society, a nation builder. Our role is very progressive in building a better society. But we are not given acknowledgement. We are not acknowledged as we deserve. So this is something which is a miss. That should be brought into the डिबेट, दैट शुड बी ब्रॉट इनटू द डिबेट एंड डिस्कशन. तब मुझे लगता है कि कुछ बात बनेगी और होगा. ये हमारी कंट्री तभी हम वी फील प्राउड ऑफ आवर ओन कंट्री. अगर शिक्षा की हालत और स्वास्थ्य की हालत अगर पहले से बेहतर करें और इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, इसकी महत्वता देना ही पड़ेगा. अदरवाइज कंट्री ये दोनों क्या करता है, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में इसका बहुत ही यानी दे प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल. एंड आवर्स इज ए कंट्री विच इज ह्यूमन रिसोर्स. उसी पे हम बैंक करते हैं, उसी पे हम फख्र करते हैं, उसी पे हम प्राउड करते हैं, उसी पे गर्व करते हैं. सो we say that India has the potential for human resource, big pool of human resource. But here it is a miss. ये कैसे होता है human resource? How could we transform human resource population into human resource? With the help of education, with the help of training, with the help of giving एट द सेम टाइम अगर हम बहुत सारी चीजें दें, हेल्थ इज मिसिंग हो, हमारी तबीयत ही ठीक नहीं रहो, कैसे हाउ कैन आई टीच यू, हाउ कुड आई प्ले ए रोल, इकोनॉमिक रोल और एनी काइंड ऑफ रोल. सो शिक्षा और एजुकेशन दोनों एक साथ जाएगा और एजुकेशन और शिक्षा हेल्थ से हम इसको बेहतर से, और कोई भी कंट्री इट इज प्रूव
एनीवेयर। उसके अगर आप डेवलप्ड कंट्री जो होगा वहां एजुकेशन का स्तर भी बहुत ऊंचा है होगा और हेल्थ का भी होगा, दोनों का होगा। तो हियर देयर इज अ नीड टू वर्क नाउ। My point is, we the teachers, educated citizens and enlightened citizens of this nation, responsibility falls on our shoulder कि हम कैसे इस तरह के माहौल बनाए, वातावरण बनाए कि इसके इम्पोर्टेंस को हमारे देश में समझा जाए, जितना आपको समझाए लेकिन इससे ज्यादा समझा जाए कि so that we could catch up, we will be able to catch up with the fast changing society or advanced society of the world। कैसे हम मैच करें फ्रांस से, कैसे हम मैच करें चाइना से, कैसे हम मैच करें साउथ कोरिया से, कैसे हम मैच करें, कैसे हम उनके कंपटीशन में आए जापान से, कैसे होगा? ये दो ही है, टू एजेंट्स, टू सेक्टर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। मेरे हिसाब से तो यही है। सो एनी मोर क्वेश्चन प्लीज? यस सर। Sir, I agree कि diaspora can't be stopped and it's a natural right to go anywhere. But sir, my question is that कि migration of intellectual people harming the country of origin and benefiting only the country of destination. So there should be a proper policy measures to check on these migration of intellectual people. Can I respond? बातें बताऊं मैं, बोलूं? हाँ जी सर। इसमें देखिए ऐसा है कि कैन आई स्पीक इन हिंदी? यू अंडरस्टैंड हिंदी? सभी हिंदी तो समझते, थोड़ी अपनी भाषा में बात करें वैसे, क्योंकि जब भी दिल की बात होनी चाहिए वो अपनी जुबान में होनी चाहिए, अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। एवरीबडी विल अंडरस्टैंड। तो मेरी इससे ये कहना, जो आप बताइए कि हमने जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमने जो सिस्टम लिया है जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी, गणतंत्र की बात करते हैं, इसमें आप किसी को कैसे रोक देंगे? अगर आप मान ले कि एजुकेटेड हैं, आप पीएचडी किए हुई हैं और आपको चाहिए टीचिंग का जॉब चाहिए, एक आई एम गिविंग यू एग्जांपल। सो वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ सिस्टम कि साहब आप नहीं, अनलेस अनटिल आई डोंट हैव एनी राइट कि आपको हम जॉब भी ना दें और आपको कहें कि आप मत जाइए, आप मातृभूमि को आप सर्व कीजिए। अगर हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतनी चीजें नहीं है, फिर आई डोंट हैव एनी मोरल राइट टू स्टॉप यू। सेम थिंग हैपेंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जितने उनका कहना है कि आपने मुझे जॉब नहीं दिया। अब आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल। देखिए, इसलिए कि एग्जाम्पल से बहुत सारी, हर गोविंद खुराना यू मस्ट बी नोइंग, ही डिड नॉट गेट द जॉब ऑफ कलर इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। डू यू नो? अब उनको जॉब नहीं मिली, क्या कलर की भी जॉब नहीं मिली, एंड ही वेंट टू यूएस एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज। आप जितने गए, अभिजीत बनर्जी वेंट, ही वाज द प्रोडक्ट ऑफ जेएनयू। आई एम नॉट सेइंग, व्हेन ही गॉट ऑल दीज फैसिलिटीज आर देयर। भाई जब ये होगा ही नहीं तो आप क्या करेंगे? आपके पास अगर ये सारी सुविधाएं नहीं होंगी जिससे हम रिसर्च करते हैं, हम टीचिंग बेहतर कर सकते हैं, unless until you get it, you cannot deliver the goods. So हायर एजुकेशन में इतनी क्राइसिस है, एजुकेशन में इतनी क्राइसिस है, हेल्थ की दशा दुर्दशा है, तो इसको कैसे जब तक नहीं बनाएंगी, ये ऑटोमेटिक होगा ना। आपको पता है या पता होना चाहिए, अगर हमें जॉब मिल जाता, अगर हमारे घर के करीब, तो मैं दिल्ली क्यों आता, मैं इतनी दूर क्यों आता? वैसे कम से कम 1000 किलोमीटर हमारा घर इससे दूर है। तो मैं इसलिए आया ना कि अच्छी शिक्षा थी यहाँ, वहां से मैंने हाई स्कूल किया, देखा कि अब यहाँ तो 1 साल की डिग्री जो होगी, सर्टिफिकेट होगा, वो आपको 2.5 साल में मिलेगा। आई एम टॉकिंग ऑफ बिहार एट दैट टाइम, वे बैक। तो मुझे लगा कि ये तो लाइफ खराब हो जाएगी, टाइम इज इंपॉर्टेंट ना। आई केम टू अलीगढ़, वहां सारा काम ठीक हो गया। उसके बाद देखा कि इससे भी जहां आगे बेहतर है, आई केम टू दिल्ली, वहां हमने जेएनयू में दाखिला लिया, वहां से पढ़ाई किया, फिर जॉब यहीं मिल गई, रुक गया। तो वाई अगर अच्छा शिक्षा अगर मुझे बिहार में मिल जाती, अपने डिस्ट्रिक्ट में मिल जाता, अपने शहर में मिल जाता, तो देयर वाज नो पॉइंट टू कम। सो आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। जो 7 समंदर पार जो गया, क्यों गया?
इसलिए कि वो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली या जितना चाहिए था। हर गोविंद खुराना जी नहीं गए होते तो उनको अगर वहां जॉब भी मिल जाती तो कहते हैं ना, तो क्या होते, क्लर्क से यूडीसी हो जाते, यूडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो जाते, लाइफ खत्म। सो अपॉर्चुनिटी, unless until we give the opportunity, unless until we create the infrastructure. So कल बात कर रहा था, I was talking of issues of inadequacy. सारी चीजें आप बताइए कि कॉलेज में, आपके कॉलेज में भी होगा, जो पोजीशन से कोई रिटायर हुआ फिर उसको भरा नहीं गया. It is happening in Delhi, in premier institution like Delhi. और many colleges और many institutions. तो कैसे होगा जब फैकल्टी नहीं होगा? If you are a प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, आप मॉडर्न इंडिया में आपका स्पेशलाइजेशन है, एंशियंट इंडिया वाला प्रोफेसर साहब रिटायर हो गए, यू विल बी आस्क्ड बाय योर प्रिंसिपल टू टीच. अब वो भी पढ़ा, मेडिवल वाला गया तो वो भी पढ़ा रहे हैं, तो हाउ कुड यू मेक जस्टिस? सो सिस्टम, लेट अस स्ट्राइव, लेट अस वर्क. Why हम प्रॉब्लम को क्यों डिस्कस कर? Why do we discuss the problem? So that we could identify the problem and try to NIRF रैंकिंग हैज स्टार्टेड, ठीक है ना, रैंकिंग कर रहा है NIRF रैंकिंग नेक. Why do we do? इसलिए in order to identify the weaknesses, shortcomings of the institution, if we identify the certain limitation and the shortcomings, if we are really interested, we can resolve, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे. तो बीमारी को आइडेंटिफाई करने का मतलब ये होता, ये नहीं टू जस्ट टू लैमेट, इसलिए कि हम अपनी कमजोरी को समझेंगे तो हम उसको दूर. उसी तरह अगर देश की जो कमजोरियां हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज है तो हम उसको अपने राइटअप में लिखेंगे. वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दिस सो दैट वी कुड मेक आवर सोसाइटी better up, we can make our nation proud. Yeah, that is the purpose of debate and this discussion. In the same way, इसका ये मकसद है, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, टू मोटिवेट द टीचर. एक लाइन में है ये पूरा, कोई जाने की जरूरत. You all have connected here and you are listening to me. I don't have the power. I don't have that much knowledge to teach you. But I have come here to just inspire you, just to motivate you with my own understanding, so that after going back from here, you would be a good teacher, you would be a good researcher, and something which I have told you, हो सकता है कि कुछ आपको पसंद आ जाए कि इन्होंने ये जो बात, you start working on that. So that is the purpose of this program. It is the punchline of this program. Otherwise, you all are the master, you all are qualified enough, you all are educated enough, good enough to discharge your responsibility. But we are learning from each other. That is the motto of any kind of faculty development program or any refresher course. Refresher क्या मतलब होता है? Whatever you know, we all have a sample here to refresh ourselves. हम इसलिए इकट्ठा एकत्रित हुए कि हम एक दूसरे की बात को सुने. Otherwise, we know each and everything. You know diaspora, but there are certain points and dimensions that need to be discussed here. So I think we are running shortage of time. So I am requesting the coordinator साहब, कहाँ गए? Sir, I'm here only. Okay. Here it is changeable ना, तो बताइए हमारी ड्यूटी. Sir, it was wonderful, sir. Thank you so much, Professor Rahman, for this wonderful, or I can say informative session in which you have explained diaspora and linkages between diaspora and development and many other things related to diaspora. And I can see the feedback in the chat box from the participants, sir. They like your session very much. Thank you So so with this much. word, I am again once again thankful to you and looking forward to have you in other sessions, sir. Thank you so much. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा. I learned a great deal. It is inspiring for me. I hope I have done some justice to all of you. With Definitely. these words, once again, Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. I'm looking Thank you, forward. sir. Thank you, sir. Looking forward Thank you, to sir. meeting you. Sure, sir. Definitely. Sure, I will sir. be happy Sure. to meet you, sir. Thank you, sir. Let us work collectively, jointly for the better, to make our country prouder, to make our society better off. जब तक हमारा रोल इंटेलेक्चुअल्स का, इंटेलिजेंसिया का बहुत है. और लेट मी विद दिस वर्ड्स आई एम स्टॉपिंग हियर. जिस प्रोफेशन में है इस पे आप लोग जरूर, इससे दुनिया में अच्छा कुछ भी नहीं है.
लेट मी टेल यू अगेन, आई एम रिट्रेटिंग, इस पे सोचेंगे आप लोग गहराई से, ये कम से कम 5-10 मिनट्स जस्ट हैव ए प्रोटीन, इससे बढ़िया दुनिया में कुछ भी नहीं। लेट मी टेल यू, और इसमें नाम है, इज्जत है, शोहरत है, ये तीनों चीज जब तक हम जिंदा रहेंगे, इवन जाने के बाद भी कुछ काम करके चले जाएंगे, कोई रिसर्च करके चले जाएंगे, कोई अच्छी बुक लिख करके चले जाएंगे, कोई बुक लिख करके कोई पेपर लिख करके जाएंगे, it will be always helpful for the society. So let us strive to work something which would be immortal for that. I think it is not a big deal. ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हम जिस एकेडमिया में हैं, ये this has been made possible and it could be made possible. So thank you very much. Thank you. So my doors are open for you. If any question is there, my I think email is with Dr. Pawan ji. आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। Definitely, sir. And lunch from our side is due. After COVID, Yeah. we will sit together and have our lunch. I have the pleasure. I had the pleasure to have the lunch, a very good lunch at your beautiful university. What I say, I often say it is an oasis in the island. So Thank whenever I came in the past, I always enjoyed greenery of lush greenery of in the way. तो मुझे बहुत 110 किलोमीटर है यहाँ दिल्ली से, 108 किलोमीटर, so I thoroughly enjoyed. So I am looking forward to get to the normalcy so that we could discuss this kind of deliberation face to face. So Sure, thank you definitely. so much. Hope for the best. Thank you Yeah. so much once All again. the best. I will all the best, and I wishing you that after, as soon as you go away from here, you get promoted so that you could incentive. It could work as an incentive. Thank you. Thank you so much for this wonderful words, sir. Thank you so much. Thank you. So it's time for the lunch break. We will be rejoined after the lunch break. After it's 12:45. So 1:30, I guess it's enough time. 30 to 45 minutes, right? So we will be meeting. जी 1:30. Okay, sir. I hope कि आप सबने अपनी attendance mark कर दी हैं. जी Yes, sir. सर। Any issue related to attendance today? No. यस सर। नो सर। जी जी ओके थैंक यू। जो यूट्यूब लाइव सेशन का लिंक है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, सो यू कैन चेक इट ओवर देयर, राइट? सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी मीटिंग डॉक्टर कुलभूषण फ्रॉम HPTU. Enjoy your meals. Thank you. Thank you so much. हेलो सर। जी जी सर ये अटेंडेंस लिंक हमारे व्हाट्सएप पे नहीं आया हुआ। नहीं, इसमें हमने आपको चैट बॉक्स में शेयर किया थी राज शर्मा जी। सर वो डिलीट हो गया, एक बार सर काइंडली दोबारा सेंड कर दीजिए एक बार। जरूर जरूर जरूर। हाँ। आई थिंक आप बीच में मीटिंग लेफ्ट कर गए होगे, इस कारण आप नहीं देख पाए उसे। नो सर वो एक बार कॉल आ गया था उस समय, फिर ये डिलीट हो जाता है ना सारा जो जी, कॉल्स जी, के जी। जो मैसेज होते हैं। नो इशू नो थैंक इशू। जी ओके सर, रिसीव। थैंक यू। So we will be meeting after lunch break. हेलो।
I think we should start, sir. So, welcome back after a healthy lunch break. And good afternoon to all. Our resource person for the day has already joined. He is Professor Kulbhushan Chandel. He is an excellent teacher, researcher, and as an administration while working in Himachal Pradesh University, Shimla. He started his career as a manager marketing in Indian MNC in 1994 and served more than 7 years till 2000. But he was passionate to join teaching as a career. Therefore, he joined HP University in the year 2000. Professor Kulbhushan has been working in Himachal Pradesh University, Shimla for the last 18 years. His area of specialization is marketing and HR. He has been teaching studies of MCOM, MPhil, MBA, MBE, BBed, 16 students of PhD and 69 students have been awarded MPhil degree under his guidance. Dr. Kulbhushan has also guided 60 master students and business administration and more than 60 students of BBA. So Dr. Kulbhushan is a professor in the Department of Commerce. He remained chairman Department of Commerce, Himachal Pradesh University, Shimla from July 2014 to 2016. Professor Kulbhushan remained chairman the Board of Study for UG and PG in the same period. He also remained a member of the Academic Council, Himachal Pradesh University. He also worked as a Deputy Director, Academic Staff College, Himachal Pradesh University for the 3.5 years. Professor Kulbhushan is also a member of Academic and Research Committee of various neighboring universities. Dr. Kulbhushan has successfully completed several research projects funded by UGC, World Bank, IHS, and Ministry of Human Resource Development, Government of India, on several important issues of contemporary nature. He has recently completed a project on EPG Pathshala in the management and developed the e-contact of paper marketing management, organizational development and change, human values and business ethics and HRM. He also a resource person in academic staff college in various universities like Punjab University, Chandigarh, Patiala, Kurukshetra University, and Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya and Himachal Pradesh University, Shimla. Dr. Kulbhushan has also been associated with All India Radio AIR and Doordarshan Kendra, Shimla as an expert of last 15 years where he has delivered more than 100 radio talks. So it's all about you, sir. Thank you so much for accepting our invitation and sparing your valuable time. We are really grateful to have you. I welcome you on the behalf of Bhagat Phool Singh Mahila Vishwavidyalaya, on the behalf of UGC-HRDC, and on the behalf of participants of our refresher course and on my personal behalf. I welcome you, sir. Thank you. Thank you. Over to you, sir. Thank you, Dr. Pavanji. At the outset, I would like to put my heartfelt thanks to academic staff, Human Resource Development Center, Bhagat Phool Singh University, one of the beautiful university of the region, and also especially to Professor Sipalli Nagpal, who called me, I feel that 10 days back, and reminded me through mail, but unfortunately I could not get her mail touched. And in that way, that when she called me day before yesterday, that sir, day after tomorrow you are to talk, and then definitely that time was again a wonderful time for me, because this is rather my 6th or 7th lecture in Bhagat Phool Singh University, rather there in Human Resource Development Center. I am thankful to Human Resource Development Center, especially Nagpal ma'am, and also to Pawan Kumar
who is a coordinator of this program and remained in touch with me since yesterday and talking regularly up till now. Whatever he said, definitely whenever one is presenting someone as a resource person with the participants, this always remain in their mind that whatever better best can be talked about him, then definitely that itself remain good for them also, because it also set one kind of standard of such kind that you are giving me a target. In that way, I am not taking any kind of target from your side, but again, herein what I say, that whatever he said, that you can also deduct accordingly from your record, that whatever he said, that it is his one kind of that very particular gesture which he is giving to me. Anyway, whatever topic has been given to me, it is one kind of that very topic which is on the again, if I say that it is a talk of the town nowadays, that everyone is talking about this very particular national education policy. In that way, you have also taken a national cause. This is one kind of that very topic which is equally important, as you are taking certain topics like human values, you are taking topics like disaster management, you are taking some other common topics. In that way, national education policies are also that very topic which everyone love to just speak and everyone love to just listen also and learn also. While I was working as deputy director of Human Resource Development Center at that very time, it was named as Academic Staff College long back, I think 10 years back. This is itself 10 or 12 years back. And definitely that very time I learned a lot from Academic Staff College, because of the fact that the people who joined and who come as a participant, they always remain a source of learning and inspiration to every resource person also. In that way, I always love to just go to the Academic Staff College for sharing my viewpoint. And I'm thankful to all of you, all the participants also, because of the fact that I am here only because of you people, that I'm just delivering my discourse to you people. I will be talking only on this very policy. I will not be just teaching something, or I will not be just explaining something, but whatever I know and whatever I listened about this very particular policy, at that very viewpoint I will be sharing with you. Being Dean Academic Affairs of Himachal Pradesh Technical University nowadays in Hamirpur, Himachal Pradesh, we got one letter also from Ministry of Education, Government of India, and they also advised us to just organize various webinars or seminars or FDPs on this very topic, so that the public, or so that the various teachers, students and other stakeholders, they could be aware about this very policy. I organized many webinars and seminars, and more than 20 webinars I organized. In those webinars, I invited the people from the level of Vice Chancellor, also the people who are the policy makers, and also even the education ministers. They also remained a part of those webinars. In that way, definitely those 20 webinars, which I also joined as a not only the resource person but also as a participant, definitely that very experience I would like to just share with all of you. At the outset, I once again put my heartfelt thanks to all of you. Coming to the topic itself, that is itself one kind of very important topic. Yesterday, when I was just going through with this very particular topic, then I was also reading one our Puran, that was Vishnu Puran. तो जब मैं इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तैयार कर रहा था, तो साथ में विष्णु पुराण का, जिसको मैं कंटिन्यूसली देखता भी हूँ, आई वाज जस्ट रीडिंग फर्स्ट, जो उसका जो अध्याय है उसको ही पढ़ रहा था। तो उसमें श्लोक 19वां जो श्लोक था,
उसको देख करके मुझे ये लगा कि शायद जो हमारी जो पॉलिसी बनी है उसमें वो विष्णु पुराण का जो अध्याय 1 का जो 19वां श्लोक है, उस श्लोक को जो है शायद इसमें बेस रख करके बनाया था। आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन दैट वेरी श्लोका टू यू पीपल आल्सो। पहले संस्कृत में, थोड़ा उसको हिंदी में करूंगा। वी डू हैव 2 sessions and again we will be just interacting also with each one. तत्कर्म यन बंधाए सा विद्या या विमुक्ते आया साया परम कर्म विद्या न्याय शिल्प न्याय पुण्यम। अभी देखें 4 लाइनें तो हैं संस्कृत की, तो उसका मतलब क्या हुआ? तत्कर्म यन बंधाए मतलब कर्म वो है जो बंधन में ना बांधे। हमारा जो कर्म हमें बंधन में बांधता है वो कर्म, उसको हम कर्म की श्रेणी में नहीं लेते। और दूसरा जो विष्णु पुराण का श्लोक बोलता है, विद्या वो होनी चाहिए जो मुक्ति प्रदान करे। विद्या वो होनी चाहिए जो मुक्ति प्रदान करे। अब देखें, मुक्ति प्रदान किस चीज से करे? मुक्ति प्रदान करने की जब बात आती है तो विद्या वो होनी चाहिए जिससे हमें कोई रोग, द्वेष, being clear that this very education policy is a basis of all which will be liberating we people definitely from all kind of evils itself. तो आगे की जो लाइन बोलता है कि आया साया परम कर्म विद्या न्याय शिल्प न्याय पुण्यम। बोलते बाकी सारे कर्म जिनको हम कहते हैं वो सारी कारीगिरी है। और मैं ये कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि विद्या वो जो मुक्ति प्रदान करे। तो शायद इस पूरी जितनी भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस बात का ध्यान रखा गया है कि जितनी भी कमियां हैं इनको दूर करने का प्रयास इस शिक्षा के माध्यम से हो। और साथ ही साथ आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू विवेकानंद जी द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर एजुकेशन व्हाट ही जस्ट हैज गिवन। He has given 4 different basic principles for education. तो जो एजुकेशन की उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो। ये विवेकानंद जी के शब्द हैं। तो उन्होंने 4 सिद्धांत जो थे एजुकेशन के बताए थे। 1, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का मानसिक विकास हो। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे का बुद्धि का विकास हो, जिसके उसका बौद्धिक विकास हो। और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चा स्वावलंबी बने, मतलब रोजगार परक हो। तो ये चारों के चारों सिद्धांत शायद हमारी इस एजुकेशन पॉलिसी का ये पार्ट है। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर जल्दी आते हुए, शायद नाउ दिस माय स्क्रीन इज जस्ट ऑडिबल टू यू पीपल आल्सो। एंड अगेन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 opportunities and challenges. Now see, I would like to mention one thing clear here. This is our 3rd education policy. इससे पहले भी एजुकेशन को लेकर के बहुत सी चीजें हुई हैं, बहुत सी since independence and number of efforts have been made for making our education one kind of say a very clear and wisdomful to everyone. But the main drawback which remained over there, that the implementation could not happen possible. तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए दिस वेरी पर्टिकुलर डिस्कोर्स विल बी बेस्ड अपॉन। मैं इसमें बिफोर गोइंग टू द टॉपिक इटसेल्फ आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन हियर दैट हाउ आवर एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी, दे जस्ट एवोल्यूटेड सिंस 1947। एक रोड मैप जो आज हम देख रहे हैं, इसके पीछे की जो हमारी जो एक ये रही है, एक जितनी जो यात्रा रही है वो कैसी रही है। इन 1948 and 49 University Education Commission was set up, that was also known as the Radhakrishnan Commission. It was led by Sarvapalli Radhakrishnan, and the main focus of this very commission was on higher education, to improve the quality and also to just the standard of our higher education. तो मैं जो कह रहा था कि this is not only the one effort which we have made in the form of National Education Policy 2020, but up till now many efforts have been made.
तो पहली एफर्ट हमारी 1948-49 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अगुवाई में जो थी ये हुई थी. एंड द सेकंड एजुकेशन कमीशन, इट वाज जस्ट सेट अप इन 1952-53. दिस इज आल्सो फॉर वी पीपल आल्सो टू नो दैट step wise how this happened. This was focused on the education after primary school and before the university that begins. ये इसका जो मेन फोकस जो था, it was in between the primary school, after the primary school and before your university that begins. ये 1952-53 में सेटअप हुआ था, which also remained in the again very important aspect of our this very particular journey. And then the Education Commission's 1964-66, it was which was known by the Kothari Commission. It was just led by Dr. D.S. Kothari, very important one, जो हमारा जिसने पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसकी बात कहें, जो वो उन्होंने हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 जो उन्होंने पहली दी थी, ये वो उसके ऊपर जो था उनकी रिकमेंडेशन, इट वाज जस्ट बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन. एंड मेन फोकस ऑफ दिस वेरी पर्टिकुलर कमीशन, दिस द रिकमेंडेशन, इट वाज ऑन द होलिस्टिक अप्रोच ऑफ थ्रू एजुकेशन. होलिस्टिक अप्रोच मतलब बच्चे का जो इस तरह से सर्वांगीण विकास जिसमें मतलब हो, वैसा इसमें फोकस किया गया था. इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दे वर ऑफर्ड थ्रू दिस पॉलिसी. एंड अगेन जो इसके नेशनल इंटीग्रेशन की आज जो बात करते हैं और हम कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो बात करते हैं, थ्रू एजुकेशन पॉलिसी ही इज एम्फेसाइज्ड. अब अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या रहा? अनफॉर्चुनेट पार्ट वाज देयर दैट द मेनी, नॉट ओनली मेनी, द majority of the recommendations of Kothari Commission, they could not be implemented. ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी बनी थी. National Education Policy, which was on education 1968, which based upon the recommendation of the Kothari Commissions, which were again the basis of our holistic approach to the education. It definitely it was one of the beautiful policy जो उस वक्त हुई थी. But the main drawback that remained over there, that could not be implemented. Only the 15 or 16% of that recommendations they could be emphasized. तो ये हमारे उस एंगल को भी ये कर रहा है, which itself will be making we people conscious कि अभी हमने 2020 में पॉलिसी तो बना दी, पर हम इसको कितना इंप्लीमेंट कर पाएंगे वो उसकी ओर हम आगे जाकर के इसमें डिस्कस करेंगे. डेफिनेटली लेटर ऑन विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस वेरी पार्ट. एंड देन इसके बाद जो 1976 में 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, जहां पे व्हेन वी इंक्लूडेड एजुकेशन द कॉन्करेंट लिस्ट of the state by the union government itself, जो state list में इसको दिया गया था. Then national education, national policy on education, NPE 86, ये जो हमारी दूसरी education policy आई 68 के बाद. Of disparity. So this was again a very good policy. This very policy was implemented in 1992. 86 में तो ये हुई थी, पर proper जो इसकी implementation. And in that way, can I request someone से कि आप अपना माइक जो है उसको डाउन कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आवाज से थोड़ी फिर डिस्टर्बेंस रहती है. Now see, 1986 when this very policy was announced, this was implemented in 1992. I am a witness of that very policy, but I do not know that when the policy was framed and when it was implemented. I do remember that at that very time I was just going to the for my doing my higher education at the university level. अब यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जब पढ़ रहे हैं
कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं, आपको ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि कोई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है कोई बहुत बड़ा बदलाव जो है आगे आया है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है. अब now see, this remained the main reason also, that again this policy could not be implemented properly. Only 14-15% of that national education policy was implemented. तो उस पॉलिसी में भी जैसे मैंने कहा ना कि जो पहली 68 का बेस था उनके पास कोठारी कमीशन का, और उसके बाद उनके पास इसका जो इसका वो फिर इसका 86 में जो SC ST और वुमेन के लिए जो था स्पेशल प्रोविजन दिए गए थे, इन सबको लेकर के जब साथ में ये पॉलिसी बनी थी, इट वाज वन काइंड ऑफ ब्यूटीफुल पॉलिसी, बट अगेन दैट कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली. देन उसके बाद बहुत से और भी प्रोग्राम बने, जैसे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो विच वाज अडॉप्टेड बाय द UPA 1 गवर्नमेंट, एंड मोर और लेस अगेन इट वाज ऑन also on the same lines as we have discussed earlier also. Then in 2009, Right of Children to Free and Compulsory Education, RTE Act, Right to Education Act was passed, which was again made for the elementary education as a fundamental right for every child. कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है हमारा एक फंडामेंटल राइट है और हर एक बच्चे को जो है मिलना चाहिए. ये चेंजेस जो साथ में बीच में आए थे, फिर उसके बाद भी सुब्रमण्यम कमेटी जो थी वो बनी, जिसकी रिपोर्ट 2016 में आई, एंड विच आल्सो बेस्ड टू इम्प्रूव Not audible, sir. Sir, we are not able to hear. Twice there. 2020, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी was just based upon the recommendation of Dr. K. कस्तूरी रंजन कमेटी, एक बनी जिसके हेड जो थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन थे, और इन्होंने जो रिपोर्ट दी, which was just the report which was just placed before the government on May 31, 2019. उसके बाद उसमें deliberations, बहुत ज्यादा deliberations हुई, lakhs of say the teachers they involved, and again the students, again not only other experts also जो pertaining to the educationist also, which helped to frame this very policy. This very policy is addressing the challenges of access, then the equity, then the quality, then the affordability and accountability. अब ये चेंजेस आ गए. जैसे पहले वाली जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज में जैसे पहले वाले में हमने होलिस्टिक अप्रोच को फोकस किया, देन द SC एंड वुमेन इनको किया, उनको भी साथ में रखते हुए, देन इन दिस वेरी पॉलिसी द मेन फोकस दैट वाज मेड ऑन द एक्सेस, कि एजुकेशन की सबको एक्सेस होनी चाहिए, एंड देन द इक्विटी, कि सबको say it should not be just discriminated on the basis of certain caste, creed, economic background or anything. Then the quality, everyone should get quality education. अब quality education की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो quality education means that if you are taking one sort of education, then definitely the other one should also be, everyone should get the same level of education, the quality of education. Then the affordability. It should not be like this कि आज की तारीख में एक बच्चा, जैसे आप यू आर वेल अवेयर ऑफ दैट, कि एक बच्चा जो है एक ऐसे स्कूल में पढ़ता है जिसकी फीस जो है लाखों में है, और एक बच्चा जो है ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां पे पैसे दे करके अगर पढ़े तो नहीं पढ़ सकते, और जहां क्लासेस भी नहीं लगती. एजुकेशन, quality education and at affordable rates it should be, and then the accountability that has been just taken as a basic principle of this very education policy. But I would like to say here that in this way, this very education policy which was just been again announced, this policy is containing many things.
in the first part of my presentation, I would like to just state here that what does contains in this very policy after going with the background of this National Education Policy 2020, and then how it is different from other ones जो पहले हमारी policies हुई उनमें और इसमें क्या differences आए. And the third part of my discourse that will be based upon that say what are the challenges been in front of us. कि जो changes हमने पहली education policy और this education policy के बीच में जो हमारे changes आए, what in that way what will be the challenges in front of us. And in final discourse, I would like to just state here that my discussion that will be that what will be the main say कि जो हमारे करणीय बिंदु क्या होंगे, what the immediate steps we are to take immediately just to make this very policy implemented in a true spirit as it has been announced. Now let me start now here that say when we are just talking of contents that in this very policy, this all is included, but herein I would like to just leave the school education part because in your approach, the school education part that is not in your scope because I will be touching only the higher education, the school education I will be leaving in these discussions. Now see, when we are talking of national education policy, now see, it's one kind of comprehensive framework which is just being prepared for the development of education in the country. And now see, this is the third education policy which has been just announced. And again, this policy has been announced after 34 years, 86 के बाद अभी इसको जो है वो अनाउंस किया गया है. इसके बीच में बहुत से बदलाव आए जो मैंने आपसे शेयर भी किए. Now see, what is the vision of the National Education Policy 2020? Again, it is based upon the principle of for providing equitable and or contributing to an equitable and vibrant knowledge society. Now see, herein one kind of word has been used, knowledge society, and also by providing high quality education to all. This seems one kind of that very particular word, hypothetical one, जो हमें लगता है कि जैसे कि एक hypothetical है, but no, the way government is just committed, it seems that it is definitely possible. Again, we are talking of vibrant knowledge society. Up till now, जैसे अभी हम बात करें, we are just focusing only on the dissemination of the information. अब information से हमने knowledge की ओर इसको कन्वर्ट करना है. Everyone knows कि शिक्षित करना ही स्टूडेंट को काफी नहीं होता है. Again, I like to mention कि सिर्फ शिक्षित की आवाज बहुत ज्यादा आ रही है. Can you इस तरह की आवाज आ रही है? Please, this create disturbance itself. When we are just talking of door close करना, mommy coming. आप ये देखिए अपने माइक बंद कर दे. मैं इनसे पवन जी आपसे आग्रह करूंगा कि आप इन सब जी all the participants are requested to mute their mic, please check. हाँ, फिर इससे you are requested, please mute yourself. Yeah. Now mute see, your mic, please. Yeah, thank you. When we are just talking of knowledge society, as I'm talking here, the dissemination of information, हमें information से knowledge की ओर बढ़ना है. तो information से knowledge की ओर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? हमें शिक्षक से गुरु बनना पड़ेगा, तब जाकर के हम जो है information को knowledge में convert कर पाएंगे और knowledge को wisdom में convert कर पाएंगे. आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज क्या सबसे बड़ा हमारे सामने है कि हम एक शिक्षक से गुरु कैसे बने. There's a difference between शिक्षक and guru. We are to just make ourselves like that and instilling skills, values that support responsible commitment to human rights and other things. That this is itself one kind of a vision of this very policy. And then
what is the objective of National Education Policy 2020? Again, I would like to just focus here that it will be enabling creative learning among the students and boosting their employment perspectives. Just say, now see, when we are just talking of say imparting skill education to the student, right from the class 6th onward, जब 6th onward से आपने बच्चे को स्किल एजुकेशन के ऊपर फोकस कर देना है, then definitely the employment perspective of the students they will be enhanced. And again आगे इसको ऑब्जेक्टिव ये भी रखा गया है कि हमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जितने जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन है, then the 4 verticals it will be just one. I'm not just going in detail of this because this will be just only information for you people. What are the key principles of National Education Policy 2020? अब हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो 2020 है, इसके जो की प्रिंसिपल्स क्या है? 1, रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड द लोकल कंटेक्स्ट. क्या मतलब हुआ इसका? Herein, in our curriculum and pedagogy, we are to add again the component of diversity and the local context. I was just listening to our Honorable Prime Minister. उन्होंने very clearly he stated that we have to be vocal for the local. And vocal for the local का मतलब क्या हुआ? Vocal for the local का मतलब हुआ कि every place do have its unique characteristics, and that very unique characteristics that must be added or that must be a part of your curriculum. अब देखिए, अब this seems to be one kind of that very particular perspective कि यार ये कैसे possible है? अब हमारे यहाँ पे जो मान लो हरियाणा का सोनीपत का तो वातावरण डिफरेंट है, अब आगे कुरुक्षेत्र आएंगे तो डिफरेंट है, तो करिकुलम में कॉमन पार्ट कैसे बन सकता है? वी आर नॉट टू मेक इट कॉमन. What they stated, हमें इसको कॉमन नहीं करना है. Whatever is the one kind of the strength of one region that must be a part of, say जैसे मान लो आपके 2 क्रेडिट ऐसे ऐड कर दी जाए करिकुलम में, जिसमें जो एक मान लो which are the in the based upon that very particular local context, कि इसके ऊपर आपने वर्क करना है जो आपका लोकल कंटेक्स्ट है. तो उससे क्या होगा? वो लोकल कंटेक्स्ट भी, जैसे मान लो मैं हिमाचल की बात, हिमाचल में इट इज आल्सो नोन फॉर इट्स वन काइंड ऑफ कल्चरल हेरिटेज. जैसे मैं एक इसकी किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में वहां की जो कैप है, वहां का जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, उसके लिए जाना जाता है. बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या हो गया? द स्टूडेंट्स दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम किन्नौर. अगर किन्नौर का बच्चा अपनी जो बेसिक कल्चर को कैरी नहीं करेगा तो बाहर वाला आकर के वहां स्टडी थोड़ी कर पाएगा. तो वहां रहते हुए अगर मान लो 2 क्रेडिट उसके जो लोकल जो पर्सपेक्टिव में उसमें ऐड कर दिए जाए करिकुलम में, दैट ही मस्ट हैव और शी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ लोकल कंटेक्स्ट, और नॉट ओनली से द हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, मैनी अदर थिंग्स आर आल्सो देयर. Or suppose one student is again having interest in one thing and interest in other thing, that should be a part of our curriculum. और वो 2 क्रेडिट उसको उसके मिले तो वो लोकल कंटेक्स्ट भी अनरिच होगा और साथ साथ में बच्चे का एक मानसिक और बौद्धिक विकास भी होगा. In that way, our honorable Prime Minister stated that we have to be vocal for the local, and then equity and inclusion. And equity and inclusion means that we have to not to discriminate anyone on the basis of caste, creed, or say on the basis of our say the economic front. आज की तारीख में अगर देखें तो what is happening in our higher education also, ये 2 तरह की मेरिट बनती है. एक मेरिट जिसमें मान लो एक बच्चा जो है हायर एजुकेशन में एडमिशन लेता है 85, 86 और 90% के आसपास, वो बंद हो जाती है, वो बंद होगी जी, मेरिट खत्म हो गई. तो और दूसरी में क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि जी हाँ पेड सीट है हमारे पास, अगर पेड सीट में आना है तो उसी एजुकेशन में जो पेड सीट की हाईएस्ट मेरिट जा रही है वो जा रही है 70%, 65, और लोएस्ट जा रही है 65%. And now see the 2 set of education we are just now just delivering over there. And in that way what is happening कि एक तरफ तो बच्चा जो है वो एजुकेशन ले रहा है अपने मेरिट पर आकर के, और दूसरा बच्चा जो उसमें मेरिट में नहीं आ पा रहा है वो पैसे के बल के ऊपर एडमिशन ले रहा है. इस चीज को इस एजुकेशन पॉलिसी से में बिल्कुल बाहर रखा गया है.
देन द इंक्लूजन, देन सोशल इंक्लूजन की बात की गई। वी हैव टू इंक्लूड ऑल द क्लासेस हियर, SC, ST, women, other backward areas, and also say our differently abled people. They must be included in for the education purpose. Then the community participation is also a key principle of our national education policy. And in this way, when we are just talking of community participation, private and community participation, that is there encouraged. अब दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। अभी तो जैसे बच्चा जो है, अब देखें थोड़ा सा भी अगर इसमें अगर आप देखें तो +2 तक जब बच्चा जो है एजुकेशन लेता है, वी ऑलवेज प्रेफर टू जस्ट एनरोल अवर स्टूडेंट इन द प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल। बट आफ्टर +2 वी जस्ट फोकस कि बच्चा प्राइवेट में ना जाए, बच्चा जो है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, ताकि और ना ही इतना ज्यादा उसमें स्कोप भी रहता है और ना है भी। In that way, again now itself there will not be, अब ये discrimination नहीं होगा। Community participation, that will be equally encouraged. Then the use of technology. When we are just talking of teaching and learning, herein when we are talking of teaching and learning, another perspective, that use of technology that will be used. अब जैसे कोरोना पैंडेमिक 19 की बात अगर करें तो nobody was knowing that there will be a time here जब हमें पढ़ाने के लिए इस तरह से जो है चॉक एंड टॉक वाले सिस्टम को रिप्लेस करके इसमें जाना पड़ेगा। But this happened. When this happened, initially we thought that how it will be just covered. As पवन जी was just reading my credentials and वहाँ पे कर रहे थे कि इन्होंने EPG पाठशाला में भी as जिसको बोलते हैं कि more than 120 different ये तैयार किए हैं। Again those, when I came to know that say at that very time that we are to just help the students, those particular lectures they help the students. Not only my lecture, but many people of my time. Sir, we are not able to listen you, so please check your mic setting. Students also, ई लाइब्रेरी आपके वहाँ एस्टेब्लिश्ड है, तो उसके थ्रू हम इस सारी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर दिस पर्टिकुलर एजुकेशन पॉलिसी, रिमूविंग लैंग्वेज बैरियर। अब से दिस इज वन काइंड ऑफ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। मैं एक छोटा सा लैंग्वेज बैरियर की आपसे थोड़ी सी बात करूं। I am also in a NAC peer team as a member secretary. I visited many colleges. When I was there in Tamil Nadu, I'm not just criticizing anyone. I was there in the college and again interacting with the students. To my wonder, they were just not able to just speak in Hindi. They were not able to speak in English, and it was very difficult for me. कि अब क्या करें इसमें? And I took the help of their local people and जो उनको कहा, पहले मैंने उनको कहना, फिर उन्होंने आगे उनको नरेट करना, फिर स्टूडेंट ने कहना, फिर उन्होंने मेरे को कन्वे करना। This was a big one language barrier. Then again, when I asked them कि why you are not preferring हिंदी और इंग्लिश, वो बोलते कि हमें अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई कभी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते थे। Now 3 language formula which has been just developed कि आपकी लोकल लैंग्वेज तो होगी, उसके साथ साथ में आप एक नेशनल लैंग्वेज जैसे हिंदी और इंग्लिश इनको भी आप साथ में ऐड कर सकते हो। तो साथ में एंड बाय यू कैन आल्सो टेक एंड यूज द टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंटली एबल पीपल्स। उनके लिए मान लो कोई अगर स्पेशली कोई अगर आपको कोई क्लासेस मॉनिटर करनी है, स्लो लर्नर्स है, या मान लो कोई ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो उनके लिए भी उसका एक प्रिंसिपल ऑफ से यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को जो है इसका बेस साथ में रखा गया है। देन एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अगेन रादर देन टू द रोट लर्निंग एंड लर्निंग फॉर एग्जाम। अभी तक यही चीज सामने आ रही थी कि बच्चे जो है उनको शिक्षित तो किया जा रहा था, पर बच्चे में वो जो समझ का पार्ट जो था, विजडम का जो पार्ट था, उसको डेवलप नहीं किया जा रहा था।
We are not only to just make them just learn, but also again we have to inculcate the knowledge and wisdom part among the students. For that, the emphasis in this very particular national education policy, that is on conceptual understanding. Then the unique capabilities. Yeah, this is very important. I have seen many students. जैसे मान लो एक स्टूडेंट जो है उसको इसका कॉमर्स का स्टूडेंट है, पर कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ में ही कैन सिंग वेरी वेल. अभी देखना आपने भी अभी चलो ये तो आपका ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स है, इसमें भी जैसे मान लो एक हिडन टैलेंट के लिए एक सेशन होता है जिसमें हिडन टैलेंट में बच्चा कोई भी पार्टिसिपेंट जो है अपना टैलेंट जो है आगे दिखाता है. तो उसमें कोई बहुत अच्छा गाना करता है, बहुत अच्छा गाना. That very unique capability that remain up till now untouched. वो जो यूनिक कैपेबिलिटी जो उसमें रहती है वो अनटच्ड ही रह जाती है. नाउ दिस हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम. जैसे मान लो इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट, you can also, if you are having interest in singing, you can take one subject of your music. तो वो इसमें एक यूनिक एक चेंज जो है वो साथ में लाया है ताकि वो आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको भी साथ में उभारा जा सके. देन द क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी. Critical thinking and creativity, why I'm just again now see this is itself has been just made to encourage the logical decision making and innovations. अब देखिए किसी भी राष्ट्र को अगर मान लो कि जो बेसिक जो उसकी जो ग्रोथ मॉडल जो रहता है, उसकी जो डेवलपमेंट का जो मॉडल रहता है, मैं माइकल पोर्टर की एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम था कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस. तो उसमें कम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस में उसने उसके 4 phases, he has just stated 4 phases of development कि एक देश जो तरक्की करता है उस कैसे किन डिफरेंट स्टेजेस से तरक्की करता है. सबसे ऐसा नहीं होता कि सबसे पहले सीधा ही वो, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत से कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा गरीबी में है कि वो सीधे एकदम इनोवेशन में आ जाएंगे. नहीं, उसके लिए फेजेस होते हैं. उन फेजेस में जो पहला फेज है दैट इज टू फोकस ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. कि देश जो पहली फेज में क्या करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो का जो मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो एक मेन फोकस रहता है ताकि उसका जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके. जो पहला जो उसकी मेन रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ समय के बाद क्या होता है उसको तो साथ में चलाता है कि उसके जो बेसिक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो तो चले रहे, या कई जगह वो कम भी हो जाते हैं, पर उसके बाद जब उसके पास एक कॉन्फिडेंस आता है तो उसके बाद देन इट इज रिप्लेस्ड टू द वेल्थ ड्रिवन नाउ. अब जैसे मान लो सऊदी अरेबिया है, गल्फ कंट्रीज है, ये सारी के सारी चेंजेस जो इसमें क्या करते हैं, जो ये देश जो है ये जो अपनी एक जो उनकी एक स्ट्रेंथ होती है उस स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज करते हैं, वहां से वेल्थ अर्न करते हैं और उस वेल्थ के बेस के ऊपर ही पूरी इकोनॉमी को रन करते हैं. तो सेकंड जो फेज इसमें आता है वो वेल्थ ड्रिवन इकोनॉमीज का आता है जब उसकी डेवलपमेंट के स्टेजेस में. जो तीसरा जो आता है फिर देन थर्ड वन दैट इज इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमीज. तो पहला क्या था, फैक्टर और जो फैक्टर ड्रिवन होगी, दूसरा हो गया आपका वेल्थ ड्रिवन होगी, तो तीसरी जो इकोनॉमी आई वो आई इन्वेस्टमेंट ड्रिवन. मैं अपने इस पर आ रहा हूँ, क्रिटिकल थिंकिंग वाले पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको आपके साथ फोकस करना चाह रहा हूँ. जो तीसरा जो मेन फोकस इसमें आता है वो आता है इन्वेस्टमेंट ड्रिवन. जो जैसे चाइना है, जितनी दुनिया भर की फैक्ट्रीज है वहां पे लगी हुई है, उसने बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर दिया है कि हमारे यहाँ पे आप आए, लेबर सस्ती, जो रिसोर्सेज हैं वो सारे अवेलेबल. एंड इन दैट वे अभी जैसे आप क्या करते हो कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में आप फिर साथ में स्टार्ट कर देते हो. पहले अपने देश में की, फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे डिफरेंट. अब जैसे चाइना की बात करें तो ही इन्वेस्टेड इन 56 डिफरेंट कंट्रीज. तो उसकी इकोनॉमी नाउ इज फ्लोरिशिंग, बट दैट इज इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी. यूएस ने भी अब जो था भी आगे पहले इसको जो है किया था, चाहे उसमें WTO का जो है उसने बेस लिया था या कुछ लिया था, पर उसको मैनेज किया था. पर अब जैसे अब WTO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब तो इसके ऊपर मेनली जो चाइना जो है करता है, डिक्टेट कर जाता है. बट एक टाइम ऐसा भी था तो यूएस भी था. और जो चौथी स्टेज इसमें आती है दैट इज इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज, जिसकी मैं क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूं.
तो जब when we are talking to encourage logical decision making and innovation, then that is the fourth stage of any economy. तो वो फोर्थ स्टेज, जैसे यूएस इज ए फुली इनोवेशन बेस्ड अपॉन द इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। अब देखिए अब इसमें अगर छोटी सी बात करें, एक नई इनोवेशन करता है, आईफोन की बात करें, जस्ट दैट कॉस्ट टू द ट्यून ऑफ $18 एंड सेलिंग दैट वेरी आईफोन एट द रेट ऑफ $700। तो ये $682 US क्या हुआ? दिस इज ओनली एंड ओनली द कॉस्ट ऑफ इनोवेशन। And that is a patent, intellectual property and other things. ये सारी चीज intellectual property के ऊपर शायद आपका कोई लेक्चर हुआ होगा, तो उस लेक्चर में आपको शायद बताया होगा। But now see, the economies, they are also based on this. And again, they are investing on the young minds. And वहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है the people who are thinking out of the box, thinking beyond the box. And when we are investing on those factors, then itself that becomes that very particular type of economy जो सिर्फ और सिर्फ innovation को बेस रख करके आगे। आज US is a big example of that. And in that way, now see, this very policy is now also focusing, क्योंकि इंडिया ने पहली स्टेज को क्रॉस कर लिया है, दूसरी स्टेज को क्रॉस कर लिया है, अब तीसरी स्टेज में है, तो तीसरी से चौथी में अगर जब जाना है तो इनोवेशन ड्रिवन हमें बनना होगा। इनोवेशन ड्रिवन बनने के लिए वैसे हमें साधन और वैसे ही हमें मीन्स और मोड्स सारे वैसे तैयार करने होंगे। एंड नाउ व्हेन इट बिकेम द पार्ट ऑफ आवर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, देन डेफिनेटली दैट इटसेल्फ बिकम्स अ वन काइंड ऑफ मिशन एंड विजन ऑफ द पॉलिसी, एंड अगेन इट्स वन काइंड ऑफ बिग एफर्ट। एंड देन द कंटिन्यूअस रिव्यू। The key principle of national education policy is, again, when we are just talking of continuous review, it is based upon sustained research and regular assessment by educational experts. तो ये continuous review साथ में होगा, और जो भी एक sustained research के ऊपर जो है साथ में ये it will be based upon. Now coming to the higher education itself. हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारी इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन की can I ask you right now or after your अगेन मैं अभी चाहूंगा कि वैसे 2 सेशन है, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट माय प्रेजेंटेशन एंड देन यू राइट जॉट इट डाउन, और उसके बाद में तो पता क्या होगा, इसमें एक चीज तो जरूर होगी, आप अपने पॉइंट्स लिखते जाएं और या इसमें आप ये तो इसमें डाल दें या उसमें लिख के, आई विल बी गिविंग यू डेफिनेटली एटलीस्ट 40% ऑफ द टाइम। आप ये ध्यान में रखना, अगर इन 2 सेशन में कम से कम 1 घंटा में आपको जो है डिस्कशन के लिए दूंगा 2 सेशन में। अभी अगर देखिए, मैंने आपसे जो पहले बात की कि अगर मेरी प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होगी तो उसमें पता क्या होगा, हो सकता है बहुत से पॉइंट आगे वाले पॉइंट्स में से जुड़े हो, पहला पॉइंट अगले पॉइंट से जुड़ा हो, तो मेरी प्रेजेंटेशन के बाद ही आप उसमें पॉइंट्स लिखते जाएं और उनको आखिर में इसी सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें यही रहता है कि पहले प्रेजेंटेशन होती है, फिर ये रहता है, एक तो रहता है कि हमने आपस में डिस्कशन के ऊपर सारा चैप्टर खत्म करना है, एक है कि लेट मी स्पीक फर्स्ट। अगर मान लो आपके पॉइंट जो है मेरे अगले इसमें क्लियर होते हो तो हो सकता है कि आपके पॉइंट्स वैसे ही क्लियर हो जाए, ये भी तो एक बात है ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस ना? Now see, are the major reforms which have been made in higher education. Now see, in higher education now, the gross enrollment ratio by 2035, it has been targeted 50%. अभी हमें ये मालूम भी होना चाहिए कि अभी हम कितने इसके ऊपर हैं। At present in higher education, 20.2%, that is only the gross enrollment ratio. I would like to mention here कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ही हमें अभी फोकस नहीं करनी है, साथ साथ में इस एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हमें ग्रॉस एम्पावरमेंट भी साथ में देखनी है। अभी मान लो ग्रॉस एनरोलमेंट तो बढ़ी साथ में,
पर बच्चे का साथ में विवेक और विजडम डेवलप नहीं हुआ तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। वो एम्प्लॉयबल नहीं बना तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो उसको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए साथ ही साथ में GER को हम इसको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, ठीक है इसका मीनिंग ये है, बट इसको ग्रॉस एम्पावरमेंट से भी जोड़ करके करेंगे। And in that way, they will be empowered also. Then holistic multidisciplinary education. इसमें what does it include? देखिए आज when we are talking of holistic multidisciplinary education, the multiple entry and exit points. This is very important. जैसे when we are just talking of today's system, जैसे एक बच्चा अभी ग्रेजुएशन कर लेता है, फाइनल ईयर तक चला गया, फाइनल ईयर पर जाने के बाद फाइनल ईयर में पहुंचने के बाद बच्चे के मन में आया कि मैं आगे अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा या उसको नौकरी लग गई। अब वो जो फाइनल ईयर में पहुंचा हुआ बच्चा है उसको नौकरी से उसी वक्त उसको ज्वाइन करना पड़ेगा और एजुकेशन को छोड़ना पड़ेगा। कुछ सालों के बाद जब दोबारा उसका मन करता है देन ही कैन नॉट रिटर्न बैक। और उसकी एजुकेशन ये नहीं, वो कहीं नहीं बोल सकता जी कि मैं BA2 पास हूं, BSc 2 पास हूं, मेरी एजुकेशन +2 है, यही उसकी काउंट होगी। Now in this new national education policy, this has been made like this, that if you are making exit after 1 year, you will be getting certificate. If you are making your exit after 2 years, then you will be getting diploma certificate, and after 3 years there will be degree. अब देखें, मान लो कुछ सालों के बाद, अभी तो बच्चा चला गया, मान लो उसने 2 साल लगाए, डिप्लोमा लिया और साथ में चला गया, उसको जाना पड़ा। कुछ सालों के बाद, मान लो 5, 7, 10 साल के बाद उसके मन में आया कि आई विल बी कमिंग बैक वंस अगेन एंड अगेन आई विल स्टार्ट माई एजुकेशन, वंस अगेन आई विल स्टार्ट माई। नाउ ही कैन कम बैक and again start his education from that very point from where he has taken the exit. वही 1 साल लगाना है बच्चे को और उसकी कंप्लीट होगी। This is one kind of beautiful change which has been made in our higher education system. Then UG program that will be 3 year और 4 year. अब देखिए 3 साल में तो हो गया सीधा बच्चा जिसने BA करनी है और साथ में बाद अपने इसमें चले जाना है जो भी उसका जो इंटरेस्ट है। जिसने रिसर्च में जाना है उसको 4 साल में आगे जाना पड़ेगा। और ऐसे ही पीजी में 1 साल की और 2 साल की पीजी होगी जो बच्चे रिसर्च के साथ में आगे जाएंगे। और बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट एमफिल हैज बीन डिसकंटिन्यूड नाउ, क्योंकि इसको ही हमने इसी के पार्ट में जोड़ दिया कि दिस इज नॉट मैंडेटरी टू एवरीवन टू जस्ट गो फॉर 4 year or someone who is having interest in that very particular component, only they can opt for that they can go for that component. सबको जाना उसमें जरूरी नहीं है। And then an academic bank of credit to be established. जैसे मैंने बात की कि अभी इसमें वो academic बैंक जो है हो जाएगा, बच्चा 2 साल के बाद भी वापस आएगा तो उसको अपने उसी बैंक में से उसको वो सर्टिफिकेट दिखाएगा, डिप्लोमा दिखाएगा और साथ में उसका वहीं से स्टार्ट कर सकता है। Then multidisciplinary education and research universities. This is very important. जब मेरूज की बात करते हैं, it will be at par with IITs, IIM, and most important is that that affiliation system will be phased out. अब देखें, this is itself one kind of that very question which itself seems to be hypothetical. कि कहाँ IITs, कहाँ IIM, और हम बात करते हैं अपने इसमें। I was just with some college, being dean academic affair, I visited one of the college wherein 2 streams they were just running. एक आर्ट्स की थी और एक कॉमर्स की थी, and the college was running since last 8 years. मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ। Only 6 rooms were there, और वो 6 कमरे भी जो थे they were hired from a school. अब एक स्कूल से 6 कमरे लेकर के 2 स्ट्रीम कॉलेज के, और 8 साल से कॉलेज चल रहा है। एंड वी आर थिंकिंग टू कंपेयर आवर स्टैंडर्ड विद IIT and IIM. This seems to be one kind of hypothetical one, but not difficult at least, because the commitment of the government is very, 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 very strong. And then phasing out of affiliation system in 15 years. This is most important. अब देखिए, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में है उस इंस्टीट्यूट को ऊपर आना ही पड़ेगा।
और जब वो ऊपर आएगा, एफिलिएशन सिस्टम विल बी फेज्ड आउट, दैट इंस्टीट्यूट विल बी ऑटोनोमस, will be providing degrees, will be providing diplomas, certificates, course to everyone, every student. तो अब जब आप अपने लेवल पे एग्जाम कराओगे, अपने लेवल पे पेपर सेट करोगे, अपने लेवल पे डिग्री डिप्लोमास दोगे, तो डेफिनेटली दैट वेरी पर्टिकुलर सिस्टम व्हेन इट विल बी डेवलप्ड, इट विल बी डेफिनेटली यूनिक काइंड ऑफ सिस्टम. बट द वन टाइप से ओनली 15 years हैव बीन टेकन फॉर दिस. 15 साल में इसको हम फेज आउट कर देंगे, पर 15 साल में हमें अपने इन कॉलेजेस का लेवल उस लेवल पे लाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा. ये देखने वाली बात है. हम कहां पर स्टैंड करते हैं हम ज्यादा जानते हैं, दूसरा कोई इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती. देन द नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग एंड इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उस स्कूल को या कॉलेज को रन करने के लिए इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होगी, जो आज की तारीख में है. आज की तारीख में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे मान लो, जैसे अभी एक कॉलेज की बात करें, अब यहाँ पे हरियाणा की मेरे को मालूम नहीं है या बाकी जगह की मेरे को इतना मालूम नहीं है. एक टीचर जो है जिसको इसमें कॉलेज में अपॉइंटमेंट मिलती है, एक जगह पोस्टिंग मिलती है, पोस्टिंग के 2 साल के बाद 3 साल के बाद उसकी ट्रांसफर भी हो जाती है यहाँ पर. अब 6 महीने उसको समझने को लगेंगे, सिस्टम को 1.5 साल डिलीवर करेगा, फिर टेंशन में आ जाएगा कि मेरी ट्रांसफर पता नहीं कहाँ को हो जाएगी. हरियाणा पंजाब में तो इतना, या दिल्ली में बाकी जो प्लेन एरिया में तो इतना फर्क नहीं पड़ता. पर इन द एरियाज लाइक हिमाचल, इन द एरियाज लाइक से अगर आप अरुणाचल की बात करें, जहां अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर मान लो 50 किलोमीटर जाना है, देन यू आर टू जस्ट ट्रैवल बाय 3 hours, दैट विल बी टेकिंग 3 hours. तो 3 घंटे लगेंगे अगर मान लो फॉरफ्लंग एरियाज की बात करें. तो लोग इसमें भी, पर इस नई एजुकेशन पॉलिसी में इसमें इस चीज का हल दिया गया है. बट हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, दैट येट टू सी दैट हाउ मच इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. देन हायर एजुकेशन कमीशन एक अम्ब्रेला रहेगा, which will be set up as a single umbrella body and governing body for all higher education institutions. But medical education and legal education has been kept outside. अभी तक इसको बाहर रखा है. आने वाले टाइम में हो सकता है ये भी साथ में हो, पर अभी तक इसको बाहर रखा गया है. And again, the self disclosure which will be based upon transparent system for approval. अभी तक क्या होता है, जैसे मान लो हमारी इंस्पेक्शन आती है तो उस वक्त उस कॉलेज की रंग रोगन सब कुछ शुरू हो जाता है कि जी इंस्पेक्टर्स आएंगे, या मान लो बाहर से इंस्पेक्शन टीम आएगी. तो अभी ऐसा नहीं होगा. आपका सेल्फ डिस्क्लोजर होगा. आप अपने आप सेल्फ डिस्क्लोज करेंगे अपने आप को कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट द अप्रूवल विल बी ग्रांटेड. एंड देन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फॉर रिसर्च. This is very important because when we are talking of fostering a strong research culture and building research capacity, this is one kind of that very challenge, which again is still nowadays also a big challenge with everyone. अभी देखिए आप, अब मन में एक बात आती है, हम बार बार इस चीज को भी पढ़ते भी हैं और इस चीज को देखते भी हैं. मैं एक अध्यापक हूँ, रिसर्चर भी हूँ. इन्होंने कहा कि 69 रिसर्च पेपर्स हैं, बट द थिंग इज देयर कि हाउ मच आई एम कमिटेड फॉर द रियल टाइम रिसर्च. पहली रिसर्च जब पीएचडी की तो मन में आया कि यार मेरे को पीएचडी डिग्री मिलनी चाहिए, डॉक्टर मेरे साथ में लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा. पीएचडी हो गई, मेरे इतने रिसर्च पेपर होंगे, मेरा एपीआई बढ़ेगा, और एपीआई बढ़ने से मैं एसोसिएट प्रोफेसर बनूंगा. या 6000 ग्रेड पे, 7000 ग्रेड पे, 8000 ग्रेड पे, 9000 ग्रेड पे ये मिलेगा. दूसरा लेवल ये क्रॉस किया. बट द लेवल ऑफ रिसर्च दैट वाज नेवर टारगेटेड कि मेरी लेवल ऑफ रिसर्च ये होगी तब मिलना चाहिए. द फोकस वाज कि मेरे रिसर्च पेपर जितने होंगे चाहे जैसे भी होंगे. ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने है. For strengthening this research component, the National Research Foundation has been established. मैं एक बात साथ में रखना चाहूंगा. आप देखिए, आप सारे जिसमें कितने लोग पीएचडी आप में से होंगे, बहुत लोग पीएचडी हो गए. प्रश्न पूछिए अपने आप से, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम फोकस करते हैं लिटरेचर रिव्यू के ऊपर. लिटरेचर रिव्यू को, मान लो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर जो है हमने लिटरेचर रिव्यू इकट्ठा किया, 50, 60, 70 रिव्यू इकट्ठे किए, फिर एक बड़ा लंबा सा एक टेबल बनाया. उस टेबल में लिखा कि फॉलोइंग आर द रिसर्च गैप्स
and those gaps, they are establishing the need of my research topic. अब देखें 20, 25, 30 साल की रिसर्चेस और गैप्स कितने 60, 70, इतने ज्यादा रिसर्च गैप्स कैसे? एक एग्जाम्पल छोटा सा आपके सामने हुआ। अभी आप तो मैनेजमेंट और कॉमर्स के हैं, अगर हिंदी और संस्कृत के कोई विद्वान होते तो उनके सामने में अगर ये बात रखता तो साथ में समझ भी ज्यादा अच्छी तरह से आती। कबीर साहब कोई पढ़े लिखे नहीं थे, गुरु नानक जी को तो स्कूल में जाने का मौका ही नहीं मिला, जो गए तो टीचर ने ही बोल दिया कि मेरे से ज्यादा ज्ञान है इनके पास। सूरदास जी तो अंधे थे, पर उन्होंने जो उस वक्त जो आपने जो वाणी में जो दिया, जो उन्होंने 500 साल पहले कहा, वो उस वक्त भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। उनमें गैप क्यों नहीं आया? दे नेवर फोकस्ड कि मेरे द्वारा जो लिखा गया है उसको कोई पढ़ेगा, सुनेगा या फैलेगा, या जो मैंने लिखा उसके ऊपर मेरे को पीएचडी मिलेगी, उसके ऊपर मैं कभी कोई एपीआई खड़ा करूंगा। Their focus, it was never been on those जो physiological aspects. उनका जो फोकस था, उनका बेस जो था वो अध्यात्म बेस था, और उस अध्यात्म बेस के कारण जो उनके अंदर से जो निकला वो एक ऐसा सर्वकालीन सत्य था जो हमेशा सत्य ही रहेगा। मैं एक एग्जांपल और दूंगा आपको इसके साथ में। अकबर के दरबार में एक तानसेन नाम के बहुत महान गायक हुए। अब सिंगिंग में भी तो रिसर्च है। एक ऐसा गायक जिसके गाने से मेघ बरसने लगते थे, एक ऐसा गायक जिसके गाने से हवाएं चलने लगती थी, दीपक जलने लगते थे। अकबर को अभिमान था, एक दिन दरबार में कहता कि मुझे अभिमान है कि तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गायक हो, मेरे नवरत्नों में से एक हो और मेरे दरबार में हो, मगर मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूं। जिस गुरु ने तुम्हारे को बनाया, इस लेवल पे तुम्हारे का निर्माण किया, उस गुरु को मैं मिलना चाहता हूं। तो उनके गुरु हरिदास थे, वो कहते कि नहीं, मेरे गुरु जो है आपसे मिल नहीं सकते, मेरे गुरु बाहर जाते ही नहीं है, मेरे गुरु तो अपने कुटिया में रहते हैं। महात्मा थे, बोलते कोई बात नहीं, मैं कुटिया में चलूंगा। फिर कहते कि महाराज अगर आप जाएंगे तो मेरे गुरु आपके लिए नहीं गाएंगे, क्योंकि उनका गायन प्रभु के लिए होता है, और वो भी संध्या काल सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होता है। बोलते कोई बात नहीं, मैं चलूंगा, जाऊंगा। भेष बदला, सुबह 4 बजे पहुंचे, सुनने के बाद जब दोबारा वापस आए, दरबार दूसरे दिन लगा, तो तानसेन को कहते कि अकबर कहते कि तानसेन में भ्रम में था कि तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गायक हो। अरे तुम तो अपने गुरु के निमित्त मात्र भी नहीं हो। अब ये बताओ कि तुम में और तुम्हारे गुरु में इतना बड़ा फर्क कैसे है? तो तानसेन जवाब देते हैं, महाराज मेरे द्वारा गाया हुआ भजन मेरे पेट को समर्पित है, मेरे द्वारा गाया हुआ भजन आपको खुश करने के लिए समर्पित है, पर मेरे गुरु के द्वारा गाया हुआ भजन उस प्रभु को समर्पित है, उस प्रभु को खुश करने के लिए वो गाते हैं। तो पेट के लिए समर्पण और प्रभु के लिए जो समर्पण होगा, तो दोनों में फर्क होना जरूरी है। तो उसी फर्क की वजह से मेरे में और मेरे गुरु में इतना फर्क है। और आज भी यही कारण है कि रिसर्च जब फोकस्ड होगी हमारे उन कारणों की ओर, जहां मेरे को ध्यान में होगा कि मैंने रिसर्च करनी है पीएचडी के लिए, एपीआई के लिए, तो उसके लेवल में और जो गुरु नानक देव जो कह गए या कबीर साहब जो कह गए, उनके कहे हुए शब्दों में इतना फर्क होता ही है और होगा ही, और आगे भी रहेगा जब तक हमारा फोकस इस तरह से रहेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ये जरूर फोकस करेगी कि रिसर्च जो है फॉर द सेक ऑफ रिसर्च ना हो, जो रिसर्च का फोकस हो वो समाज उपयोगी रिसर्च हो, नीड बेस्ड रिसर्च हो, अनुसंधान ऐसा हो जो समाज उपयोगी हो, जिसमें कोई ना कोई समाज की उपयोगिता हो, समाज का भला हो, जिससे कोई देश का भला हो,
इस तरह की रिसर्चेस आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एंड देन मेजर रिफॉर्म जो हमारे फाइनेंशियल सपोर्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स, अब इसमें जैसे मान लो हमने कह दिया कि हमारे जो लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट विल बी एट पार विद आईआईटी, आईआईएम, तो उन जो मान लो जो बच्चे जो नहीं कर सकते, नहीं दे सकते, फीस नहीं दे सकते, फॉर दोज स्टूडेंट्स freeship that will be encouraged, scholarships for those students that will be just increased, and in for that also private higher education institutions, they will be encouraged to just go for that. And then open and distance learning, this is again very important also. Up till now अभी तक तो हम बोलते हैं कि मैंने जी ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग से की है, पीजी जो है मैंने डिस्टेंस लर्निंग से की है, उसको बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, बट आज की तारीख में इसका इंपॉर्टेंस तब पता लगा जब हमें इस कोविड-19 पैंडेमिक से जब गुजरना पड़ा। Now again in this, through this national education policy, this will be playing a significant role in increasing the gross enrollment ratio, which we have just taken in the higher education 50% by 2035. उसको 26% से 2035 करना है, कैसे करना है, ये उसमें इसका रोल बहुत रहने वाला है। In that way, will be encouraged also. And then online digital education. This will be encouraged. Technology in education, as we discussed, that say this will be definitely a part of our again curriculum itself. And then a common entrance exam for all higher education institute will be held twice a year. अब इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है करेगी, 2 बार होगा, जैसे मान लो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, और सबके लिए वही होगा जैसे आज की डेट में नीट कर दिया गया है, उसी के बेस के ऊपर जो है अभी ये आने वाले समय में भी ये रहने वाला है। This is itself one kind of let's say the repetition. तो इसको I'm leaving this, and then again optimal learning environment, student sports. This is criteria based grading system. एक क्राइटेरिया इसमें डेवलप किया जाएगा जिसमें जैसे ग्रेडिंग सिस्टम आज का हमारा सीबीसीएस में है, उसको रिफाइन करके बिल्कुल उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की एक आवश्यकता भी होगी। अभी इसके ऊपर वर्क भी शुरू हो गया है, क्योंकि मैं तो इसका पार्ट हूँ, पॉलिसी मेकिंग का पार्ट भी हूँ, यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी हूँ अपने जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो पॉलिसी बननी है, तो उसको कैसे करना है उसके ऊपर जो है हमारी वर्कशॉप जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। देन इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक प्लान्स रेंजिंग फ्रॉम करिकुलर improvement to quality classroom transactions, and this is for the institutional development program जिसकी हमने इसमें बात की। Then internationalization of this is important also, but this is also challenging also, because इसमें एक बात की गई है कि हमने विश्व गुरु बनना है तो हमें अपने एजुकेशन के स्टैंडर्ड को इंटरनेशनलाइज करना पड़ेगा। तो उसमें साथ ही साथ ये देखने वाली बात और भी है, साथ में ये भी कहा गया है कि 100 टॉप इंस्टीट्यूट्स they can just come to India, or they can again open their campuses here. अब देखने वाली बात यह है कि वहां से क्या वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जाएंगे या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी वहां से आने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस दे आर मोर व्हेन वी आर जस्ट टॉकिंग एट इंटरनेशनल लेवल। एंड अगेन इफ those government institutions, they will be just coming, then that will be a wonderful part. But private institutions, if they will be just coming, then definitely again तो उनका मोटिव कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव ही ज्यादा रहता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने अनाउंस की है, उन्होंने उनकी पॉलिसी तो वही है, तो अगर उनकी पॉलिसी में वही प्रॉफिट मेकिंग का पार्ट होगा तो that will be yet to see. And then student activity and participation and financial support for students, then we have already taken that freeship and other things, scholarships, they will be encouraged. And then this is very important, the teaching duties not to be excessive. Now see, just compare yourself. How many hours you are devoting as a teacher? कितनी ड्यूटी आपको देनी पड़ती है, अभी आप देखें, बहुत ज्यादा। Not only say the one kind of teaching you are doing, जो 3-4 क्लासेस पढ़ाते हैं, उसके अलावा आपको साथ में जो सीबीसीएस में जो एक क्लरिकल वर्क भी है वो कितना करना पड़ता है, घर में जाकर के काम ही करना पड़ता है। It has been well defined.
Teacher student ratio, that will be low. I was just talking to one of my student who is teaching in DAV Institute. So I was talking to then वो मेरे को जो उन्होंने बताया कि मैंने पूछा वैसे कि how many students do you have in your class? She replied 300 plus. अब 300 plus student अगर क्लास में है, then I asked that टाइम कितना है क्लास का? 45 minutes. Again strange कि अगर 300 बच्चों की अगर आपने ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस लेनी है, how much time you will be taking? कितनी टाइम ले लोगे आप? I feel that more than 15-20 minutes. और फिर आप लेक्चर स्टार्ट करोगे, फिर लेक्चर बाइंड अप करोगे. ऐसा चलो, तो मैंने ऑनलाइन क्लास की बात की. अगर ऑफलाइन भी हो तो 300 बच्चों को क्या आप अपनी आवाज पीछे माइक के ऊपर तो आप बोल नहीं रहे हो. This is very strange, but in new education policy, it is well defined that the student-teacher ratio, that will be like this. Then faculty to be appointed at individual institutions and should not be transferable. मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि 2 साल के बाद तलवार लटक जाती है जी कि हमारी ट्रांसफर हो जाएगी. जब ट्रांसफर की तलवार लटकेगी तो टीचर हमेशा वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा जो डिलीवरी अदरवाइज दे सकता है. तो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में द टीचर्स अपॉइंटमेंट दैट विल बी एट इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन लेवल एंड ही और शी विल नॉट बी ट्रांसफरेबल. वहीं पर परमानेंट उसकी वो रहेंगे. Then empowering the faculty to conduct innovative teaching, research and services. अब ये टीचिंग, रिसर्च और सर्विस यही उसका बेस भी होगा उसके आगे उसके जिसकी हम एपीआई की आज बात करते हैं. तो इसी बेस के ऊपर जो है उसकी आगे इवैल्यूएशन भी होगी. And excellence to be incentivized through appropriate rewards, promotions, recognition, movement to into the institution. This is yet to see that how it will be just done, but again this has been taken in this very particular policy. And equity and inclusion and when we are just talking of providing financial assistance, scholarship, ये तो पहले बात कर दी हमने कि सोशो जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्री शिप और स्कॉलरशिप्स होंगे. तो इंक्लूजन का पार्ट इसमें है. Then again they will not be discriminated while taking the admission कि आप कौन से रीजन से हैं, कौन से क्लास से हैं. Then it will not be just the discrimination, that will not be there. And then increasing employability potential of higher education program, and that is very important. Up till now अभी हम जो पढ़े लिखे बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी एक फौज तैयार कर रहे हैं. तो ये जो डिविडेंड हमारा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये ऐसे इस तरह से जा रहा है. एक तो पढ़े लिखे हम उनको काम करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे. आई हैव नो हेजिटेशन टू से इवन टुडे जब बीटेक की बात करते हैं, बीटेक से ज्यादा डिमांड अभी इसकी बच्चों की जो आईटीआई करके आते हैं उनकी मानी जाती है कि बीटेक से ज्यादा बच्चे. जो मैं ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ आईआईटी एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ दैट वेरी लेवल. बट अगेन फॉर द गोइंग ऑन इंस्टीट्यूशंस, because I am in charge of that very particular part, but again this is a very unfortunate. Government is spending huge amount, but still the results, they are not just been we are getting like that. वो एक बहुत बड़ा गैप इस सेकंड एजुकेशन पॉलिसी में आ गया था. अदरवाइज 92 से पहले ऐसा नहीं था. पर ये अलग बात थी कि एक्सेस कम थी बट क्वालिटी एक्सेस थी. Then developing more degree courses and again that to be taught in the Indian languages, इसको भी एक इस encouragement मिलेगी नई एजुकेशन पॉलिसी में. And then all these aspects, they have also been taken here in this very national education policy. And then teacher education, 4-year integrated B.Ed, चलो ये तो आपके इसका नहीं है, इसको मैं नहीं लूंगा. All fresh PhD entrants, irrespective of discipline, will be required to take credit-based courses in teaching, education. ये सारी चीजें जितने भी PhD करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको टीचिंग भी करनी पड़ेगी. जो टीचिंग पैडागोजीज है उनमें भी पार्ट बनना पड़ेगा. और जितने भी मतलब इसमें है उसके जो आपके जो
करिकुलम का जो है पार्ट ये रहने वाले हैं सारी चीजें, ये जितने irrespective ऑफ एनी डिसिप्लिन क्रेडिट बेस्ड इसका जो है बेस रहेगा. Then the use of technology of such as Swayam or Diksha for online training of teachers, it will be encouraged as we are again we are not taking the training here on Swayam today, but again in the time to come the Swayam portal, the training parts of refresher courses and other things, they will be just encouraged through Swayam portal. And then vocational education will be integrated in the educational offerings, and the secondary schools will be collaborated with ITIs. This is very important. जैसे स्कूल लेवल पे अगर मान लो +2 लेवल पे कोई बच्चा अगर मान लो पढ़ रहा है, उनकी collaboration होगी ITI से, पॉलिटेक्निक से, local industry से, so that the students who is having the particular interest in that very field can be just again encouraged to that very particular field. तो उस फील्ड में बच्चा जो है कुछ कर सके. और लाइक दैट, जैसे मान लो अभी हम इसकी भी बात करते हैं, मान लो अब बीकॉम बच्चों को हम करवा रहे हैं, या मान लो बीबीए करवा रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर जस्ट हैविंग, अब बात तो करते हैं हम कि बीबीए में हम जो है इंडस्ट्री टूर लगा रहे हैं, पर एक इंडस्ट्री टूर में एक दिन में बच्चा कितना सीखता है, इंडस्ट्री में हमारे कितने दिन लगने चाहिए. मैं इस बात को समझ सकता हूं कि हमें अभी जब तक करिकुलम का पार्ट नहीं है तब तक नहीं हो सकता, बट वी डू नो कि अगर मान लो हमारा बीकॉम के बच्चे को अगर एक इसकी बात भी दे दी जाए कि आप इसको पोस्टिंग करें एक वोचर की इसकी, तो उसको वो शायद उतना वो भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं दी. तो उसका कसूर भी नहीं है, हमारा भी कसूर नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे सिस्टम में का वो पार्ट ही नहीं बना. in the time to come, if this will be a part of our system. And then the National Committee for Integration of Vocational Education, इसके लिए एक कमेटी बनेगी जो जिसमें स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन इसको जो है साथ में हम फोकस करेंगे. And then this we have taken. Then this is inclusion of research and internship in undergraduate curriculum. This is again which what I said कि अगर undergraduate में 3 साल या 4 साल जिसने रिसर्च में जाना है वो अंडरग्रेजुएट लेवल से ही अपनी उस फोकस को कर लेगा. अभी तक तो नहीं ऐसा होता. पीजी में जाता है बच्चा, फिर वहां जाकर के भी फिर जाके एमफिल करेगा, फिर जाकर के सोचेगा कि मैंने क्या करना है. अब जिसने रिसर्च करनी है उसका झुकाव उसी इसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल से ही उसमें होगा और उसका कोर्स करिकुलम भी वैसे ही रहेगा. Then again, successful research will be recognized and implemented through close linkage with government agencies, industries and private ऑर्गेनाइजेशंस. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एक इसमें अभी फरवरी की बात है, व्हेन आई विजिटेड समवेयर इन महाराष्ट्र, तो वहां पर जो बच्चों के जो प्रोजेक्ट थे, तो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर बीटेक एंड दे वर इन द से थर्ड ईयर, तो वो जो थर्ड ईयर में के जो बच्चे थे वो अपने आप में उस इंस्टीट्यूट में, नाम भूल गया उसका, उस इंस्टीट्यूट में अपने जो मॉडल तैयार कर रहे थे, उन्होंने उसमें कार के ऐसे ऐसे मॉडल तैयार किए थे जिनको एक नहीं किए थे. जो मैंने वहां पे जो एक उनका जो ये देखा, जो कॉन्क्लेव देखा, तो उसमें बहुत और जगह से भी आए हुए थे, पूरे महाराष्ट्र से आए हुए थे. तो उन महाराष्ट्र के बच्चों ने अपनी अपनी जो साथ में जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, तो एक दूसरे से जब वो सीखे, तो जो एक पीयर लर्निंग के थ्रू जो सीख रहे थे, दैट वाज वंडरफुल टू सी. एंड दैट टाइप ऑफ practice that has also been added in this very national education policy. And now see, these are the different organizations which will be governing these institutions. And then this is itself, BOGs will be there, separate BOGs will be there. Now see, this is the part which I will be just taking here. Focus on, now see, what are the key focus areas of our national education policy. अभी तक तो हमने जो किया तो उसको आपने ये देखा. इसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस ले लूंगा पहले सेशन के बाद. अभी अगर आप इस स्लाइड के बाद अगर किसी का क्वेश्चन होगा, then I will be taking your questions, because now the one kind of presentation part is over. Now the evaluation part will start. इसके बाद evaluation part होगा, तो मैं क्वेश्चन भी आपके साथ साथ में ले लूंगा. Focus on competencies and subject integration. Now see, competency based education, अभी this is very important. Say, when we are just talking of competencies, innovations, creativity, तो बच्चे की जो innovation और creativity है उसको जब develop करना है,
तो उसको इसका मेन फोकस इस पॉलिसी में रखा गया है. Then the integration of subjects. Just suppose if you are having, as I discussed with you, if you are studying in BCom and again having interest in sports or music, you can just integrate your subject over there, or ICT. तो आपका उसमें integration हो सकता है. Then developing scientific temper. Then again, the inclusion of knowledge and practice of human and constitutional values. पैट्रियोटिज्म, सैक्रिफाइस, नॉन. अभी हमने जैसे कहते हैं ना कि हमने एक ऐसे एक मैं किसी का ये पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा एक ये था, लाइनें थी कि मुझे एक ऐसे इंजीनियर से मिलाओ जो व्यक्ति को व्यक्ति से मिलाने का एक ऐसा पुल बनाए जो व्यक्ति से व्यक्ति को के दिमाग, जिसको बोलते हैं कि माइंड सेट को मिला सके. एक ऐसा इंजीनियर मुझे चाहिए जो व्यक्ति को व्यक्ति से के जो व्यक्तियों का निर्माण करे, व्यक्तियों को व्यक्तियों से जोड़े. ऐसा मेरे को एक ऐसा इंजीनियर चाहिए जो इस तरह का निर्माण कर सके. तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो वैल्यूज, द लॉस्ट वैल्यूज, they are also being focused in this very particular education policy, and there are no loss among subjects or learning. And again here no hard separation between करिकुलर, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर. अभी तक बोलते हैं ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटी है, ये वोकेशनल एक्टिविटी है, everything that will be a part of your curriculum. Then emphasis on digital literacy, and emphasis on digital literacy and coding, computational thinking, ethical and more moral reasoning. ये ज्यादा इसमें रहेगा. इंग्लिश में टीच करें तो ज्यादा बेटर है. नो, द टीचिंग दैट शुड बी इन दैट वेरी लैंग्वेज विच इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन, विच इज अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन. माइंडसेट से माइंडसेट मिले, ये साथ में फोकस रखने का जो है वो प्रयास किया गया है. तो आई फील दैट अगेन अभी आपका ये 1.5 घंटा हो गया है. अगर आप थोड़ा सा इसमें ब्रेक लेना चाहें तो इसमें ब्रेक ले सकते हैं, और साथ में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस भी हैं तो आप क्वेश्चन साथ में दे सकते हैं मेरे को. 5-10 मिनट हम इसको साथ में ये कर सकते हैं. Now I invite you to just also for certain your anxieties also or questions also. Can I allow, sir? May I ask the question, please? Yeah. So, sir, actually, we all belongs to higher education, and we have witnessed the time when our higher education is not at par with the world class standards. We struggled with QS ranking. Yeah. And standards we are coming up with are mainly enforced by UGC initially. Yeah. So the self-paced performance evaluation is being has been focused. Asked so many of them. Am I audible to you clearly? Yeah, clearly you are audible. And again, you are not only questioning, but you are also answering. जिस जो आप बोल रहे हैं वो आपके साथ में आंसर भी साथ में है. कहें आप, बोले please. I have 3 questions actually. I've just on text box also. We are article about the nature and the benefit that NEP is offering, because NEP is aims to educate everyone. Then how come the ability comes? How come the NEP has a lot of promises, but when it comes to a country like India where we have 50% of young people. 50% of our generation, 50% of population is the young people. And if you go with the estimates, by 2050, over 75% of the population will be the young people. So if we are educating everybody, so here comes the employability comes, and employment will come. So do we have the supply also for this? Do we have the demand also for this supply? Because we are, trying to boost everyone. Let me clear this very first. This was only also government was trying to educate everybody, since they have education for everyone. Lot of policies has government was having. It's not about NDA government. It was earlier government also. They had a lot of education to all, education for everyone, rights to education and other stuff. My second question is, if
National Research Foundation come up. So what is the strategic roadmap of that? National, Is it national. the universities and local colleges also? Especially when it comes. Sorry, I could not get your question. Second question. The first question, sir. First question, that is clear. That as you said that again, how the supply side that will be. That's why that in the beginning I was saying that अगर आपने मेरी पूरी प्रेजेंटेशन सुनी होती तो शायद आपके क्वेश्चन का आंसर जो था मेरे इसमें प्रेजेंटेशन में मिल जाता, पर चूंकि आप मेरे को ये लगा कि आपने इसको अभी you are keen to just listen, but again this again remained as a one kind of that very particular evaluating part of my discussion जो मैंने second part में अभी कवर करना है, जिसको मैं challenges में साथ में कवर करने वाला हूँ. But फिर भी आपने जब question किया है, definitely I would like to just make mention here. When I told you that when we are talking of internationalization of higher education, and in that, when we are just inviting 100 different top institutions to India, what kind of institution they will be? ये बड़ा क्वेश्चन है. Whether they will be private institution or they will be public institution. If they will be private institutions, what will be their focus? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जैसे मैंने कहा, ये हमारा जिसको बोलते हैं कि सब्जेक्ट है, ये इसको हमने अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में लागू किया है. उनका सब्जेक्ट तो फिर भी प्रॉफिट मेकिंग हो सकता है, तो उससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है. एक, अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके, फिर बात थोड़ी अलग हो सकती है. जहां तक आपने सप्लाई साइड की बात की, डेफिनेटली हमें एक चीज को क्लियर करना होगा. एजुकेशन, ये ठीक है, मैंने आपसे कहा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि जिससे बच्चे का मन का विकास हो, तन का विकास हो, उसके बुद्धि का विकास हो, और साथ में बच्चा जो है वो जिसमें एम्प्लॉयबल बने, जिसमें उसको एम्प्लॉयमेंट मिले, ये साथ में उसका फोकस था, जो उनका फोकस था स्वामी विवेकानंद जी का. इस पॉलिसी में जहां हमने क्लास 6 से बच्चे के जो माइंड सेट में उसके इंटरेस्ट को जनरेट करना शुरू कर दिया, स्किल के कंपोनेंट को जोड़ दिया, बाय 10th और जिसको बोलते हैं ना स्कूल लेवल, नाउ ही विल बी क्लियर और शी विल बी क्लियर दैट वेयर टू गो, कि मेरा इंटरेस्ट किस तरफ को जनरेट हो रहा है, और जिस तरफ को जनरेट हो रहा है उसी तरफ को जाना उसको होगा. एक. नंबर 2, मैंने एक साथ में अपनी प्रेजेंटेशन में आपसे ये भी बात की कि स्कूल लेवल का जो फोकस साथ में रहेगा, whatever interest of the student will be having, the tie-up that will be with the IITIs, tie-up that will be with the polytechnics also, and tie-up will also be with the local industries. I am talking here local industries, जहां वो बच्चा पढ़ रहा है उसके आसपास के जो उद्योग है, आसपास में जो काम धंधा है, उनके साथ उनका टाई अप साथ में होगा. तो उससे बच्चे की न केवल स्किल डेवलपमेंट होगी, पर बच्चे का इंटरेस्ट भी जनरेट होने वाला है. तो इन दैट वे इट विल बी ऑटोमेटिकली not only the students that they will not be going after the job now. हमें जॉब सीकर से ज्यादा जॉब जिसको प्रोवाइडर जो है वो तैयार करने पड़ेंगे. तो जॉब प्रोवाइडर ज्यादा तैयार होंगे तो जॉब प्रोवाइडर अपने आप जॉब सीकर्स का जो है वो आंसर बनेंगे, जो शायद अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गई तो इसमें इसका आंसर देखने को मिलेगा. बट अगेन क्वेश्चन इज देयर दैट हाउ मच. हमें पिछली एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एक ऐसा बुरा अनुभव ये रहा है दैट ओनली 15% ऑफ द टोटल कंपोनेंट्स दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी हम इस स्टेज पर पहुंच पाए हैं. अदरवाइज अगर उसका कहीं 60-70% इंप्लीमेंट हो गया होता तो आज के 100 इंस्टीट्यूट्स में, जो आपने एक बात कही कि हमारे तो टॉप 100 में इंस्टीट्यूट्स ही नहीं होते, तो अगर टॉप 100 के इंस्टीट्यूट्स में हमारे भी इंस्टीट्यूट्स होते, आज हम नालंदा, तक्षशिला इन जैसे विश्वविद्यालयों की बात वो हिंदुस्तान ने ही पैदा किए थे, तो वैसे ही नालंदा और तक्षशिला आने वाले समय में दोबारा शायद भारतवर्ष में देखने को मिले, ये हम कल्पना कर सकते हैं. तो शायद आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट्स आल्सो. अब सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? दूसरा प्रश्न ये था कि स्पेशली वो था क्वेश्चन, पढ़ देता हूँ उसे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेके. जी, रिसर्च फाउंडेशन एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप अगर आप डिस्कस
डिस्कशन दें हमें थोड़ा सा उसका हाँ, मैंने आपसे बात की ना कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन द फोकस दैट विल बी ऑन क्वालिटी रिसर्च एंड नीड बेस्ड रिसर्च। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मतलब टीचर स्टूडेंट ही होता है पहले, तो डेफिनेटली वी आर नोइंग कि हाउ मच फोकस दैट इज रिमेनिंग फॉर द नीड बेस्ड रिसर्च। आज की जो नीड हम, अब आई एम सॉरी टू जस्ट से हियर कि मैंने एक, आई एम जस्ट शेयरिंग वन ऑफ माय एग्जांपल, वन ऑफ माय एक्सपीरियंस। समवेयर आई वाज जस्ट इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, मैं कहीं इंटरेक्ट कर रहा था और इंटरेक्ट करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स मेरे से मिलने को आ गए कि सर मैंने 4 साल हो गए मेरे को करते हुए, अब मेरा फाइनल स्टेज में है और मैं चाहूंगा कि आपका मेरे को थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि चलो, बच्चे ने पूछा, आई आस्क्ड देम कि बच्चे कितने तुम्हारा कंप्लीट हो गया, कैसे हो गया? बोलते सर फाइनल स्टेज में है। कितने चैप्टर हो गए? सर मैंने 5 चैप्टर तो कर दिए, बस अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर को इसको पूरा कर लूं जल्दी जल्दी, और इसके बाद मैं अपना बाकी का काम करता हूँ। नाउ यू कैन इमेजिन नाउ दैट व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च इट विल बी इफ इट इज बीन डन, इफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज बीन डन आफ्टर से 4th year of their research, and again this as a 6th, जो छठा चैप्टर, वो भी जो 2nd चैप्टर या 3rd चैप्टर होता है, उसको आप एक साइड चैप्टर के नाते जो है कंप्लीट कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे को अभी तक ये मालूम ही नहीं है एज ए रिसर्चर कि उस रिसर्च टॉप, मैं सब स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो रिसर्च नहीं करना चाहते पर रिसर्च में ला दिए गए। तो रिसर्च, जैसे मान लो अभी जो बच्चा जो ग्रेजुएशन करेगा वही बच्चा रिसर्च में जाएगा जिसका रिसर्च में अपना इंटरेस्ट है, और जिसका रिसर्च का एप्टीट्यूड उसका अपना है वही रिसर्च में जाएगा। रिसर्च फाउंडेशन जो है ये साथ में ये इंश्योर करेगी। अभी तक तो हमने इंश्योर ये किया कि इसमें ये नहीं होना चाहिए, प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ये नहीं, तो प्लेजरिज्म के भी रास्ते लोगों ने निकाल लिए कि सिमिलरिटी इंडेक्स को साथ में देखते देखते जो है उसको डिसिमिलर कैसे करना है उसके भी रास्ते लोगों ने निकाल लिए। तो अब साथ में जब हमारा फोकस ही, एक तो क्वालिटी स्टूडेंट्स रिसर्च में आएंगे, दूसरे हमारी रिसर्च जो है वो समाज उपयोगी हो, जिसमें बच्चे को, जैसे मान लो हमने कोई एक ये ले लिया, मैं एक एग्जांपल इसमें दूंगा, जैसे हमारा इसका एक मनरेगा जो हमारी है, महात्मा गांधी की जो रूरल डेवलपमेंट जो स्कीम जो हमारी है, एक इसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो स्कीम है वो है, उसमें बहुत सा पैसा इसमें आता है, बहुत सा पैसा आता है। और पैसा आने के बाद कैसे वो उसमें लगता है, कैसे नहीं लगता, आप भी जानते हैं। इसके ऊपर जैसे मान लो बच्चे जो रिसर्च कर रहे हैं, तो ऐसा भी देखने में आया है, जो रियल टाइम रिसर्च हुई है, कि उस रिसर्च के बेस के ऊपर जो पर्टिकुलर जो PRIs थे उनके ऊपर जो थे वो एक्शंस भी हुए। तो जब समाज उपयोगी रिसर्च होगी तो उससे देश का भी भला होगा, बच्चे का भी भला होगा, और देश विकसित भी होगा। रिसर्च जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इसका हमेशा फोकस यही रहेगा कि जो रिसर्च के लिए जो भी एक पैरामीटर्स और जो इसमें जो मानदंड जो तैयार किए जाए वो ऐसे हों जिनको आधार रख करके अगर रिसर्च होगी तो डेफिनेटली इन द टाइम टू कम यू विल सी द चेंजेस। Again, I would like to mention here, the role of teachers will be different here and will be very important here. अगर टीचर चाहे तो वो सारे, जिसको बोलते हैं कि इतिहास को बदल सकता है, और अगर टीचर ना चाहे तो कुछ नहीं होगा। फिर हमारे एक वाइस चांसलर थे, वो कहते थे कि अब तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा पर वो देश की भीतरी सीमाओं के अंदर लड़ा जाएगा, और जो भीतरी सीमाएं हैं उसमें जैसे जो आपकी बुराइयां हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नेपोटिज्म है, इस नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें उस के लिए एक विश्व युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी। और वो जो विश्व युद्ध जो होगा, एक किस्म जो विद इन द बाउंड्रीज होगा हर देश की, उसको लड़ने के नायक और महानायक हम टीचर्स होंगे। हम उसको शिक्षा के माध्यम से लड़ेंगे, ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करेंगे जो स्टूडेंट्स एक मॉरल ग्राउंड के ऊपर एक ऐसी एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले टाइम में उस एंगल से, उस लाइन पर सोचने वाले और ऐसे बच्चे तैयार हो ताकि इन सारी बुराइयों से छुटकारा मिल सके।
तो आने वाला टाइम तो ये आने वाला है। तो रिसर्च फाउंडेशन का, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। पर साथ ही साथ मत भूलें, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अपने आप में कुछ नहीं कर सकती, करना तो हमको ही है और हमें ही आगे अपने आप को तैयार करना होगा। जी आगे। सर एक अंतिम प्रश्न ये है कि जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स हैं हमारे, जो विदेशी, अभी अब आपकी आवाज कट गई, दोबारा कहेंगे? मैं कह रहा हूँ सर, एक फॉरेन एजुकेशन बिल आया था 2013 में, उसके अभी दूसरी बार इंसेप्शन ये हो रहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ किया जाए यूजीसी रूट से कि वो यहाँ पे कोलैबोरेट कर सकें। बड़ी तो सर सक्षम हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज, बिकॉज दे आर डूइंग रियली गुड। मैंने पहले भी कहा, अभी हमने 100 टॉप 100 जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए नई एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है एक व्यवस्था की है। पर सोचने की बात, जो दूसरा प्रश्न है कि उन टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत से इंस्टीट्यूशन जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी है। हाँ सर, whether the government institution will be encouraged or the private institutions, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो आएगा उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव रहेगा। नहीं, मेरा प्रश्न ये, हाँ, just to intervene you sir, my concern कि whether it is private or government university or college who's getting benefit और foreign counterpart उसमें से profit पाए निकालेगा, because हमारी paying capacity होगी as a student तो हम higher education के लिए pay कर सकते हैं, उसके लिए अलग एक segmentation हो सकता है। मेरा कंसर्न ये साथ सर कि जो पहले मैं क्लियर कर दूं अभी आपको, इसमें अलग से सेगमेंटेशन नहीं होगा। सबके लिए जो इक्विटी की बात की है, एक्सेस की बात की है, वो बराबर होगी। ये मैं आपसे क्लियर कर दूं, क्योंकि वो सेगमेंटेशन अलग से अब नहीं होगा। ये वेरी क्लियर इट इज इन द एजुकेशन पॉलिसी। इक्विटी और एक्सेस यही है कि हमें अलग से जो सेगमेंटेड एजुकेशन नहीं देनी है कि ये सेगमेंटेड एजुकेशन इस ग्रुप के लिए है, ये सेगमेंटेड एजुकेशन इस ग्रुप के लिए है। उसी चीज ने तो सबसे बड़ा जो है हमारे इसमें फर्क डाला है, उसी चीज ने सबसे बड़ा फर्क डाला है। जब सेगमेंटेड एजुकेशन, एक बच्चा जो है जिसका यहाँ पर नंबर नहीं आता है, वो फॉरेन कंट्री में जाकर के मेडिकल में एडमिशन ले लेता है, यहाँ आकर के फिर उसको कहीं से 2-4 साल में ट्रेनिंग लेके या कुछ लेके वो क्लियर भी कर लेता है। फिर जब मान लो 4 साल 5 साल के बाद क्लियर हो गया उसका जो MCI का टेस्ट, और उसके बाद फिर जब वो करने लगता है तो जितना उसने सीखा होता है उसको भूल गया होता है। दोबारा जब जीरो से दोबारा स्टार्ट करेगा तो उस टाइप की जो चीजें हैं, इन चीजों को अब डिस्करेज करने वाला टाइम आ गया है। अब इन चीजों को डिस्करेज, क्योंकि हमें यहाँ पर न केवल अपने ब्रेन ड्रेन को भी रोकना है, बल्कि उनको क्वालिटी की ओर ले जाते हुए इक्विटी और एक्सेस के साथ आगे बढ़ना है। सर इसमें जो छोटे संस्थान हैं, स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी का तो तब भी पोजीशनिंग अच्छी है, जो एफिलिएटिंग कॉलेजेस वो कैसे इस परव्यू का एडवांटेज लेंगे सर? अभी आपने शायद मेरा सुना नहीं होगा, 15 साल में देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एफिलिएशन। एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन 15 साल में नहीं होंगे। 15 साल में सारे कॉलेजेस ऑटोनोमस होंगे। ये नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही पार्ट है। नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमें अपने स्टैंडर्ड को इतना डेवलप करना पड़ेगा, इधर टू डेवलप और टू हमें फिर सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे अगर हमने अपने आप को ऊपर नहीं किया, क्योंकि फेज आउट हो जाएगा 15 साल में जितना भी एफिलिएशन का सिस्टम है। एवरी इंस्टीट्यूशन विल बी ऑटोनोमस। यही तो बात मैंने कही थी बीच में। सर आपने स्टार्ट ही माइकल पोर्टर से किया था, वो दैट वाज द बेस्ट पार्ट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन। हाँ नहीं, वो देखे, वो तो जो माइकल पोर्टर का जो मैं बाई चांस कल पढ़ रहा था उस बुक को, तो उसको हाँ, तो उसमें बल्कि आप भी उसको देखें, इट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ द नेशन। उसमें जो 4 उसमें बताई है, फेजेस बताई है, दैट द मोस्ट साइंटिफिक। शुड आई स्टार्ट नाउ? आई थिंक अगर मान लो हमारे डिस्कशन में ऐसा ना हो कि सब थैंक यू सो मच। हाँ चलो, थैंक यू। एंड नाउ सी द की फोकस एरियाज के बाद मैं इसमें थोड़ा सा मैं इतना आपसे शेयर करना जरूर चाहूंगा कि मैं आधे घंटे में अपनी पूरी बात को खत्म करके फिर आपके द्वारा क्वेश्चन आंसर साथ में लेता हूं। होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, this will be the main focus of this very policy. Flexibility to choose the subject, this will be remaining. Multiple entry और multiple exit की बात की हमने, and education for lifelong
अभी तक जैसे रह रहा था कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद, अगर मान लो फाइनल ईयर में बच्चा और फाइनल ईयर के बाद अगर बच्चे ने मान लो छोड़ दिया तो वो +2 ही माना जाता था। बट आने वाले समय में अब ऐसा होने वाला नहीं है। आने वाले समय में इसको अगर देखेंगे तो इट विल बी, अगर आपने डिप्लोमा ले लिया, जब दोबारा लाइफ लॉन्ग इसमें दोबारा आपको जब कभी गुंजाइश हुई तो उसमें अगर दोबारा उसको शुरू करना चाहे तो उसी स्टेज से शुरू कर सकता है। और इसमें शायद आपके लिए ये मिलेगा कि फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर रिसर्च इन द कंट्री। द कंट्री में जो रिसर्च का जो एनवायरनमेंट होगा वो बहुत फेवरेबल होगा। Then the internationalization of education. Top 100 universities can open their campuses in India. ये अब देखने वाली बात है कि वो लोग कौन होंगे। Then special schemes for disadvantageous regions and sections, जिसमें SC, STs, women, वो सारी चीजें इसमें हैं। Indian values and cultures and local dialect, जिसकी vocal for local की बात हुई थी, वो सारी चीजें इसमें। And to eliminate the gap in between government and private institutions. This is also important. Education in any language and education in blended mode. जो मैंने बात की कि चॉक एंड टॉक के साथ में आपको इसमें भी साथ में जाना पड़ेगा, जो ऑनलाइन एजुकेशन में। And then भारत सेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसी. This is very important. मैंने आपको भारत शब्द यूज किया। ये भारत बोध हमें कहीं ना कहीं संस्कृति से जोड़ता है, संस्कारों से जोड़ता है, तो तभी भारत सेंट्रिक एजुकेशन पॉलिसी होगी। एंड ड्राइविंग इंडिया फ्रॉम इंफॉर्मेशन सोसाइटी टूवर्ड्स नॉलेज सोसाइटी। जो भी बताए इंफॉर्मेशन ड्रिवन, बोलने का मतलब क्या हुआ कि हमें अपने आप को इंफॉर्मेशन से नॉलेज की ओर ले जाना है और नॉलेज से विजडम की ओर ले जाना है। द फोकस दैट विल बी रिमेनिंग ऑन हाउ टू थिंक rather on what to think. This is also important. If main इसका crux जो मैं आप अभी निकाल के दे रहा हूं आपको, how to think rather on to what to think, इससे बहुत फर्क पड़ता है। how to think से बच्चे का माइंड डेवलप होता है। what to think again, okay, जो उसको करना है उसको करना कैसे है, ये चीज भी साथ में उसने देखनी है। देन फोकस ऑन, ये मैं प्राइम मिनिस्टर को सुन रहा था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, तो उन्होंने कहा कि स्किल के ऊपर जोर होगा, रीस्किल के ऊपर जोर होगा और अप स्किल को करने के लिए जोर होगा। जैसे यू आर स्किलफुल, रीस्किलिंग, अप स्किलिंग, तो ये सारी चीजें जो है साथ में आने वाले समय में ये मेन फोकस रहने वाला है। एंड देन दिस इज सेटिंग अप ऑफ पर्क, ये सारी इसमें रहेंगी। जो परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको पर्क नाम दिया गया है। और ये इसका टाइमलाइन रहेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन से 2021-22 में हमने क्या करना है, जिसमें फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2021-22 में हो जाएगा। अगेन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन आल्सो, ये टीचर एजुकेशन के लिए भी 22 मतलब 2 सालों में हमने ये करिकुलम का फ्रेमवर्क कर देना है। तो मतलब क्या हुआ, हमें अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज को तैयार करना पड़ेगा 2022 से पहले, और उससे पहले करके उनको इसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा। अ कॉमन गाइडेंस सेटअप नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। अब ये स्टैंडर्ड भी 22-23 मतलब 3 साल में ये स्टैंडर्ड्स भी सेट हो जाएंगे। और फिर आगे जो इसकी बात कही है 25-26 में, अटेनिंग यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन ऑल प्राइमरी स्कूल्स फॉर ऑल लर्नर बाय ग्रेड 3, ये इसका स्कूल लेवल का है। और देन आगे 2028-29 का टारगेट है, 29-30 का टारगेट है, और फिर 2040 तक का जो टारगेट है। तो ऐसे इन टारगेट्स में इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हमें साथ में इसको आगे ले जाना है। पर साथ में मैं एक फोकस करना चाहूंगा, मैंने 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज की बात की और साथ में डिफरेंट और जो साथ में जो डेवलपमेंट्स हुई है उनकी बात की थी। मुख्य बदलाव क्या थे, जो चेंजेस बीच में आए, हाउ दिस पॉलिसी इज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वन। जो पहली पॉलिसीज थी उनसे डिफरेंट कैसे हुई, अभी तक तो जो था वो बताया, साथ में उसको एक्सप्लेन भी किया। मेन चेंज विच वी हैव मेड हियर दैट मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। अभी जो यूनिलेटर जैसे एकल विद्यालय या विश्वविद्यालय जैसे बोलते हैं ना कि आई एम हियर इन द हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, कि इसमें सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन होगी, नहीं, अब नहीं ऐसा होगा। मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन विल बी इम्पार्टेंट।
प्रत्येक जिला में एक विश्वविद्यालय होगा। अब देखिए, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज आंसर टू योर क्वेश्चन आल्सो, जो आपने बात की थी कि क्या हमारे विद्यालय, जब प्रत्येक जिला में एक विश्वविद्यालय या उसके लेवल का एक इंस्टीट्यूट होगा, जिसको आप क्लस्टर विश्वविद्यालय भी बोल सकते हैं, तो ये एक उसमें एक बहुत बड़ा एक स्टेप इस पॉलिसी का माना जा सकता है। और यूजी लेवल पर भी आप मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेंगे, नॉट ओनली एट पीजी लेवल बट यूजी लेवल पर भी। देन इंस्टीट्यूशन सारे ऑटोनोमस होंगे। आज the one question was raised here that कि हम ये बताएं कि जो हमारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे इसमें करेंगे। नो, यू विल नॉट बी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन, यू विल बी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस। अब जब ऑटोनोमस होंगे तो उसके लिए आपके एक मानदंड होंगे, उन मानदंडों को क्रॉस करना पड़ेगा। When you will be crossing those standards, you will be getting that autonomy in your institution. आप खुद सर्टिफिकेट देंगे, आप खुद डिप्लोमा देंगे, आप खुद उसमें से एग्जाम लेंगे, और जब उसको खुद इवेलुएट करेंगे, अपने आप में आपका अलग तरह का एक माहौल भी बनेगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। एंड फॉर दैट वी हैव टू चेंज द करिकुलम। जो जितना करिकुलम है उसको चेंज करना पड़ेगा। पेडागोजी, जितना शिक्षण का जो शास्त्र जिसको कहते हैं हम, उसको चेंज करना पड़ेगा। इवेल्युएशन का मैटर जो है सारा चेंज करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू मेक अ वन काइंड ऑफ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव चेंज इन ऑल काइंड ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टूडेंट्स। वो सारे चेंज करने पड़ेंगे। एंड देन मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, ये नई इसमें अभी आई एम डिस्कसिंग, बट हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पॉलिसीज। मल्टीपल एंट्रीज एंड मल्टीपल एग्जिट्स, ये इस पॉलिसी का एक पार्ट है। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है कि एक मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, ये इसी पॉलिसी का पार्ट है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वाज नेवर टारगेटेड लाइक दिस कि मैं 50% हमें 2035 तक अचीव करना है। दिस इज द बिग वन चेंज विच वी आर जस्ट गेटिंग हियर इन दिस पॉलिसी। देन अगेन जो बोलते हैं कि आपका जो शिक्षण, आपका जो रिसर्च और आपके जो सर्विसेज जितनी है, टीचिंग, रिसर्च और सर्विसेज है, उनको बेस रख करके जो है आपकी आगे प्रमोशन होगी। अभी ये नहीं होगी कि आपका एपीआई कितना है, आपने रिफ्रेशर कोर्स कितने लगाए हैं, आपने ओरिएंटेशन कितने लगाए हैं। Your teaching, your research, and your service part, that will be the basis of your career development. And National Research Council, that will be the one body for research, which will be guiding and monitoring all the research components. आपकी जो peer evaluation भी होगी, जो आपके साथ के जो सहकर्मी होंगे वो भी साथ में आपको इवेलुएट करेंगे, स्टूडेंट्स को भी, टीचर्स को भी साथ में आपकी जब इवेलुएशन से साथ में रहेगी। तो ये चेंजेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और जैसे मान लो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो होंगे, वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नेंस की एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, विच विल नॉट बी अगेन डिक्टेटेड बाय द गवर्नमेंट। वो एक ऑटोनोमस बॉडी होगी जो गवर्न करेगी इन सारी चीजों को। दीज रेगुलेशंस दे विल बी लाइट बट दे विल बी टाइट। लाइट होंगे पर उनसे डेविएशन नहीं होगी। और पहली बार एक्सेस की बात हुई है, इक्विटी की बात हुई है, इंक्लूसिवनेस की बात हुई है, ये पहली बार हुआ है। और इसमें जो SC ST वुमेन्स और बैकवर्ड क्लासेस को जो है विशेषकर इसमें एक जो इसमें इसकी बात की गई है कि इसमें स्कॉलरशिप्स एंड अदर थिंग्स, तो वो सारी चीजें इसमें रख के इसको डिफरेंटली करने का जो एक प्रण लिया है, इट मेक दिस वेरी पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब प्रश्न साथ में पैदा एक जो बहुत बड़ा होता है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस? हमारे सामने जो है वो चैलेंजेस क्या है? मान लो हमने अभी स्टडी किया कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड देन व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस? हमारे पास एज टीचर क्या चैलेंजेस है? द बिगेस्ट चैलेंज विद अस इज द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। जैसी हमने पहले बात की कि पिछली एजुकेशन पॉलिसीज में कोई कमी नहीं थी। 68 की पॉलिसी बहुत अच्छी थी, 86 की पॉलिसी भी बहुत अच्छी थी, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। द इम्प्लीमेंटेशन दैट विल बी अ बिगेस्ट चैलेंज। तो शायद आई विल कांग्रेचुलेट मैडम शेफाली एंड पवन जी who took this very opportunity कि जिसने आज 38 डिफरेंट और 40 और 50 डिफरेंट जो ट्रेनर्स जो थे उनको ट्रेंड कर दिया आगे इस काम को करने के लिए। नाउ यू आर ट्रेनर्स,
You will be teaching the others, say, components, whether other stakeholders. और दूसरी जो सबसे बड़ा चैलेंज रहने वाला है, पाठ्यक्रम कैसे बदलेंगे? हाउ द करिकुलम विल बी चेंज्ड? उनका आधार क्या होगा? हमने बात तो कर दी कि जी मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट, पार्ट 1 के बाद एग्जिट हो गया, पार्ट 2 के बाद भी एग्जिट हो गया, पर उसके अनुसार करिकुलम कैसे बदलेगा? कितना करिकुलम सेट होगा? उसका बेस क्या होगा? एनरोलमेंट 50% टारगेट ले लिया, पर उसको बढ़ाने को क्या हमने उसके लिए हमारे पास कौन सी एक मंत्र जो है हमने सामने रखा है कि ऐसे इसको बढ़ाएंगे? प्राइवेट पार्टिसिपेशन को कैसे हम जाकर के फिक्स करेंगे? ये बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। और एक जो बहुत बड़ा, इससे बड़ा चैलेंज है, बोलते हैं कि किसी भी देश की जो शिक्षा प्रणाली जो है, उसकी जो बुनियाद होती है वो वहां के शिक्षक होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षक ही बुनियाद होते हैं किसी की जो शिक्षा प्रणाली होती है। पर देश में कुशल शिक्षकों की भारी कमी है। आप भी जानते हैं कि हमने एक चीज बहुत नोटिस की है, कितने लोग कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं? 10,000, 15,000, 20,000, इवन 8,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। अब 10,000 से लेकर के एक ही क्लास को पढ़ाने के लिए 1.5 लाख तक का टीचर है। जब इतना बड़ा डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी वो एक बहुत बड़ा एक गैप भी साथ में देखने को मिलेगा। तो कुशल शिक्षकों को का जो अभाव है, उनको कैसे प्रशिक्षित करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। इसके मानदंड क्या होंगे और शिक्षक को गुरु कैसे बनाना? अब सभी शिक्षक गुरु नहीं है, शिक्षकों को गुरु बनना होगा। ये बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक चुनौती है, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और एक सबसे एक महत्वपूर्ण एक बात और जो चैलेंज बहुत बड़ा है, बोलते कि किसी जो देश का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें विश्व स्तरीय संस्थानों की आवश्यकता होती है, जो देश को अगर मान लो आपने डेवलप करना है एजुकेशन के सेक्टर में। जैसे आपने भी बात की, एक हमारे सहभागी थे उन्होंने बात की, तो उसके लिए एक बोलते कि एक नीति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, संस्थान अच्छे होने चाहिए और नीति भी अच्छी होनी चाहिए। नियामक ढांचा जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अब अच्छी नीति तो बन गई है, पर अभी शेष करना बहुत काफी है। मान लो अच्छी नीति ही अकेला क्या कर लेगी? कुछ नहीं करेगी अच्छी नीति, पर साथ में हमें शेष करना बहुत बाकी है। और उस शेष को करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, इस बात को रख के मैं अपनी बात को विराम भी दूंगा और साथ साथ में आपसे फिर मैं क्वेश्चंस भी साथ में लूंगा। हमें एज टीचर तत्काल करणीय बिंदु हमारे क्या होंगे, तत्काल कार्य बिंदु हमने क्या रखने होंगे? जो हमें सबसे इमीडिएट जो मेन जो फोकस होगा, हमें विश्वविद्यालय स्तर पर हमें एक कार्यदल जो है उनका गठन करना पड़ेगा। कार्यदल मतलब कमेटीज का जो है निर्माण करना पड़ेगा। हमें मान लो अपने इंस्टीट्यूशन को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो के अनुसार जो है मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बनाना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा टीचर्स के लिए, हमारे हम जैसे टीचर्स, हम एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कंप्लीट उसका अध्ययन करें, कंप्लीट स्टडी करें, पूरे 108 पेजेस का अध्ययन करें। और उसको बनाने के लिए जैसे मान लो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है, हमने अपने इंस्टीट्यूशन को उसके लिए एक विजन साथ में तैयार करें। और उस विजन, क्योंकि ऑटोनोमस आप होंगे, जब ऑटोनोमस होंगे तो आपका विजन अपना होगा, तो उसको बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें। पहले एक कमेटी अपने कॉलेज लेवल पे तय करें और उस कमेटी को वो बैठे अध्ययन करे, विजन डॉक्यूमेंट तैयार करे। सिर्फ सरकार की ओर देखते रहेंगे तो शायद ये काम नहीं बनेगा, हमें अपने लेवल पे ये करना पड़ेगा। फिर इसके साथ में जो दूसरा कार्य होगा, हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और वो स्टेज वाइज प्लानिंग है वो कैसी होगी? जैसे मैंने कहा ना कि 2022, 24, 26 हमें अपनी जो कार्य योजना है, मान लो 3 महीने में हमने विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना है, 3 महीने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी ये देखना पड़ना, ये जरूरी है हमारे लिए। इसका हमें तैयार करना पड़ेगा। 6 महीने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, 1 साल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, 2 साल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, 2025 के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, 2030 की स्ट्रैटेजी क्या होगी, 2035 और 40 के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी।
हमें स्टेज वाइज प्लानिंग करनी होगी. वी हैव टू जस्ट प्लान अवर स्ट्रेटेजी नाउ स्टेज वाइज. ये हमें साथ में तैयार करनी पड़ेगी. फिर जैसे रिसर्च की बात की, इनोवेशन की बात की, एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, हमें इसके ऊपर जो है फोकस करना पड़ेगा. क्योंकि हमने स्किल की भी बात की, हमने एम्प्लॉयबिलिटी की बात की, हमने बात की कि वी आर टू मेक एम्प्लॉयबल स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल. आपने ये भी कहा कि आने वाले टाइम में 75% बच्चे, हमारा जो 75% यंग होंगे, उनके लिए क्या कार्य योजना है. उसके लिए हमें रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, इसके ऊपर जोर देना पड़ेगा. हमें बच्चों को आगे आने वाले टाइम में वी आर नॉट टू मेक देम द जॉब सीकर्स, वी हैव टू प्रमोट देम और मेक देम एज ए जॉब प्रोवाइडर्स. पर साथ में इतना जरूर ध्यान में रखें कि इक्विटी और इसमें इंक्लूसिवनेस हो, मतलब सभी स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल हो. ये सारे साथ में रखें. हमें जैसे मान लो रिसर्च और इसके इनोवेशन, हमने इसकी बात की, अनुसंधान की बात की, तो हमारे शोध और अनुसंधान वो नीड बेस्ड हो, ये पूरी ध्यान रखने वाली बात, जिसकी हमने बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूं और फोकस हमेशा करता हूं. और उनकी समाज में उपयोगिता हो. They must be beneficial to from the societal point of view. And industry's participation in the formulation of the curriculum, that must be there. अब कितने महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनकी बोर्ड ऑफ स्टडीज में इंडस्ट्री से हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं. अगर हमारे इंडस्ट्रीज की पार्टिसिपेशन हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में नहीं है, तो इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा गैप रहने वाला है. और इस गैप को जब इतना बड़ा गैप होगा तो उस गैप को कैसे फिल करना है, इसके लिए हमें इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन साथ में तय करनी होगी. अपने अपने कॉलेजेस में जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमें इमीडिएटली एक जिसको बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी बनाते हुए इंक्यूबेशन सेंटर्स, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स और इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरेक्शन सेल, इन सब के ऊपर जो है फोकस करना. अगर हम इनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूं कि हमने, ठीक है 6% बजट तो हमने कर दिया कि 6% बजट हो. पिछली बारी भी 6% बजट था कि टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्च होगा. इस बारी भी 6% है. पिछली बारी खर्चा हुआ हमारा 3.2%. तो इस बारी अगर 6% नहीं कर पाए तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन स्टेज से पहले ही फ्लॉप हो जाएगी. तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है. हमें एक और देखने, जैसे अभी बात हो रही थी कि एक टॉप इंस्टीट्यूशंस की, हमें अपने से जो उत्कृष्ट जो संस्थान है और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल के जो संस्थान है, उनके साथ एमओयूज करने की आवश्यकता है. जैसे एनआईटी हो गया, आईआईटीज हो गए, आईआईएम हो गए, मान लो इंडस्ट्रीज होगी, टाटा हो गया, बिरला हो गया, रिलायंस हो गया, ऐसी जैसी इंडस्ट्रीज के साथ एमओयूज करें और इन इंडस्ट्रीज में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इन इंस्टीट्यूट्स कैसे वर्क कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आना जाना जो है हमारा खुले, ताकि हम एक दूसरे से सीखें. जब तक एमओयूज नहीं होंगे, ना तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, ना ही हमारी डेवलपमेंट हो पाएगी. ये तो पहला इमीडिएट कार्य, साथ में इमीडिएट करने वाले कार्य में एक कार्य रहेगा. और जैसे ऑनलाइन एजुकेशन की बात करती, हमें ऑनलाइन एजुकेशन को भी साथ में प्रमोट करना होगा. हमें ब्लेंडेड एजुकेशन को, हमें बच्चों को अब जब घर चले गए तो फ्री नहीं रखना है, हमें उनको साथ में ब्लेंडेड मोड में ही एजुकेशन देनी होगी, ताकि जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक 19 के टाइम में जो कुछ हुआ, इस तरह से दोबारा जब मान लो कोई ऐसी घटना घटित ना हो, और अगर मान लो ऐसी चीजें भी सामने दोबारा आए, तो हमारी तैयारी उसके लिए कंप्लीट तैयारी हमारे सामने हो. तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर मान लो ऐसे जैसे ब्लेंडेड मोड में करना है, अगर ऑनलाइन एजुकेशन भी करनी है, तो आप चीज एक सामने जरूर रखेंगे कि जब तक आपका जो टीचिंग पेडागोजी या मान लो जो करिकुलम जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, तब तक बच्चा जो है उसमें पढ़ेगा भी नहीं. तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना, क्लास को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना, बच्चे को सुने क्यों, टीचर सुने क्यों, टीचर को बच्चा सुने क्यों, ये चीज देखने वाली बात रहेगी. हमें उसमें इंटरेस्ट जनरेट करना होगा. जो टीचर्स का जो ट्रेनिंग है, फैकल्टीज की जो ट्रेनिंग है, उनको साथ में देखते हुए उनकी कॉम्पिटेंसीज को
फोकस करना, ये भी हमारा इमीडिएट कार्य रहना चाहिए। हमें जैसे मान लो हमने बात की कि हमारे जो करिकुलम में जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी की जो संरचना है वो कैसी होनी चाहिए, इसकी तैयारी और इस भी हमें अभी से करनी होगी। हमें अपने जो पॉलिसी मेकर्स जो साथ में है उनको साथ में जोड़ना होगा। हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज जो साथ में रहता है वो ये है, हालांकि इस एजुकेशन पॉलिसी में इसको जो है बहुत डिस्करेज भी किया है कि हमारे जो जितनी भी मॉनिटरिंग एजेंसीज होंगी उनके हेडशिप या साथ जितनी भी एजेंसीज होंगी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज होंगी, उसमें टीचर्स ही उसमें ज्यादा उनका रोल रहेगा। पर प्रैक्टिकली जैसे मैं हिमाचल में ही देख रहा था कि मान लो 16 मेंबर्स की टीम बनी तो 16 में से 13 ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो हमें इस चीज को भी देखना होगा कि वो चैलेंज जो है उस चीज से भी अब जो एक रहेगा, तो उस चैलेंज को भी सामने रखते हुए हमें अपनी पॉलिसीज बनाए, गवर्नमेंट को भी अवगत कराएं कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स का रोल कम है, ब्यूरोक्रेट्स का रोल नहीं है, पॉलिसीज में ही नहीं है। जब पॉलिसी में नहीं है तो उसको शामिल क्यों किया जा रहा है? तो हालांकि हरियाणा जैसी स्टेट में बहुत अच्छी पॉलिसी बनी है, कमेटीज बनी है, तो उनमें अच्छे से भी काम हो रहा है। तो मैं अगर एक बात करूं कि इसमें हमारा रोल भी इसमें साथ में इंपॉर्टेंट है तो शायद गलत नहीं होगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट के लिए हमें साथ में जैसे करिकुलम बनना है या मान लो अपने आप को हमने तैयार करना है, टास्क फोर्स को तैयार करना है, उसके लिए वो भी साथ में तैयारी करने वाली है। अब लास्ट में मैं इतना जरूर कहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमें एक दिशा दिखा दी है, पर अब इसे लागू करना है। जो मेन चीज है उसे लागू करना है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है जिसको मैं करना चाहूंगा कि केवल उच्च विचार या अच्छे विचार इस पर चर्चा करना ही काफी नहीं होता, रादर इसकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर अब मेहनत करनी होगी, जो मेन फोकस हमारा होगा। और हमें एक और बात का ध्यान में रखना होगा कि हमें विद्यार्थियों को और अभिभावकों को इसमें शुरू से ही शामिल करना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक इनको शामिल नहीं करेंगे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। मेन जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो ये है कि अध्यापकों को एक आदर्श के रूप में विद्यार्थियों और समाज के सामने आना होगा। अध्यापकों को एक आदर्श के रूप में विद्यार्थियों और समाज के सामने आना होगा, क्योंकि टीचर्स दे आर ऑलवेज द टीचर्स। एक टीचर चाहे मान लो एक चल रहा है, ही इज टीचिंग, ही इज वॉकिंग बट ही इज टीचिंग, everyone is watching him. He is buying, he is again teaching. Everyone is monitoring him, everyone is watching him. When he is talking, again he is teaching. उसको एक रोल मॉडल के सामने की तरह विद्यार्थियों और समाज के सामने आना होगा। और एक मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बोर्ड ऑफ स्टडीज और जो टीचर्स हैं इनको नई एजुकेशन पॉलिसीज के इन द लाइट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक डेफिनेटली उनको जो है इसके लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। जब तक जिसको बोलते कि जो एक पेडागोजी हुई, करिकुलम हुए, हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम हुआ, इसमें अमूलचूल परिवर्तन होगा। तो जब इस परिवर्तन के लिए उनको जो है तैयार भी करना होगा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एक आने वाले समय जो है एक चैलेंजिंग समय भी रहेगा। इंपॉर्टेंट बात रखते हुए कि सकारात्मक वातावरण और दृष्टिकोण की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब तक सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक कोई भी पॉलिसी जो है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। और इसके लिए मैं जरूर इतना कहूंगा कि एक संस्कृत का श्लोक जो जिसको मैं एक टीचर्स के सामने हमेशा रखता हूं कि एक नई पॉलिसी ने बहुत सी चीजें आपके सामने दे दी हैं, पर अब आपको एक रोल मॉडल के साथ एक योजनाकार की भांति भी आगे आना होगा। वो संस्कृत का श्लोक इस तरह से है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनो औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। मतलब क्या हुआ इसका? अमंत्रम अक्षरम नास्ति, हिंदी शब्दकोश का ऐसा कोई शब्द नहीं है जो मंत्र रूप में ना हो, हर शब्द मंत्र रूप में है। और अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनो औषधम, नास्ति मूल मनो औषधम मतलब ऐसी हरी भरी वनस्पति जो हम अपने आसपास देखते हैं, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषधीय गुण ना हो। हर शब्द मंत्र रूप में है और हर वनस्पति औषधि के रूप में है।
अयोग्य पुरुषो नास्ति, मतलब ऐसा कोई पुरुष और नारी नहीं है जो अयोग्य हो। हर पुरुष और नारी को कमी है तो सिर्फ और सिर्फ योजनाकारों की कमी है। पर जब आप जैसे योजनाकार एक आगे आएंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति निश्चित रूप से नए फल के साथ इस देश को जो है आगे की ओर ले जाएगी। मैं बाबा नानक के इस प्रसंग के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बाबा नानक के पास एक बार एक भक्त गया, उसने अपने जीवन का उससे पूछा कि बाबा मुझे मेरे जीवन का मूल्य समझाइए। बाबा ने उत्तर नहीं दिया। बाबा ने एक अपने झोली से जेब से एक लाल पत्थर निकाला और उसके हाथ पर रखा कि बेटा जा मार्केट में जा और इस बाजार में जा और इस पत्थर का भाव लगा करके आ, पर बेचना नहीं है। भगत गया, आगे एक संतरे बेचने वाला मिला, पत्थर दिखाया, भाव पूछा तो पत्थर संतरे बेचने वाला कहता कि तुम्हारा पत्थर बहुत अच्छी तरह से चमक रहा है, 12 संतरे ले ले, पत्थर छोड़ जा। नहीं, बेचने का हुक्म नहीं है। आगे गया तो एक सब्जी बेचने वाला मिला, पत्थर दिखाया, भाव पूछा। सब्जी बेचने वाला कहता कि तुम्हारे पत्थर की चमक अच्छी है, मेरे ड्राइंग रूम के किसी कोने में पड़ा रहेगा, 1 बोरी आलू की ले ले, पत्थर छोड़ जा। नहीं, बेचने का हुक्म नहीं है। आगे गया, एक सुन्यारा मिला, सुन्यारे को पत्थर दिखाया, भाव पूछा। सुनारे की नजर जब पत्थर पर पड़ी तो उसकी आंख की पुतली खड़ी हो गई। कहता बता कितना चाहिए? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना चाहिए? बता, पत्थर छोड़ जा। नहीं, बेचने का हुक्म नहीं है। आगे गया, एक जौहरी मिला, जौहरी को पत्थर दिखाया, भाव पूछा। जौहरी ने उत्तर नहीं दिया। पत्थर लिया, सफेद चादर बिछाई, पत्थर रखा, परिक्रमा की, शीश नवाया, फिर पूछता कि बता तैने क्या पूछा था? मुझे पत्थर का भाव बताइए। तू जानना चाहता है कि इस पत्थर का भाव क्या है? तो सुन, तू चाहे तो सारे जहान को बेच ले, तू चाहे पूरी कायनात को बेच दे। अरे बेशकीमती पत्थर है, कहां से लाया तू? वापिस दौड़ा दौड़ा आया, बाबा के चरणों में गिरा, आप बीती बताई कि बाबा संतरे बेचने वाले ने कहा कि तुम्हारा पत्थर 12 संतरों के भाव का है। सब्जी बेचने वाला कहता कि तुम्हारा पत्थर 1 बोरी आलू के भाव का है। सुन्यारा कहता कि तुम्हारा पत्थर 2 करोड़ का है। जौहरी कहता कि तुम्हारा पत्थर बेशकीमती है। मैंने आपका काम कर दिया, अब मुझे मेरे जीवन का मूल्य समझाइए। बाबा बड़े सहज भाव से जवाब देते हैं, तो जानना चाहता है कि तेरे जीवन का मूल्य क्या है? तो सुन, तू चाहे तो अपने जीवन को 12 संतरों के भाव बना ले, तू चाहे तो अपने जीवन को 1 बोरी आलू के भाव बना ले, तू चाहे तो अपने जीवन को 2 करोड़ का बना ले, और तू चाहे तो अपने जीवन को बेशकीमती बना ले। तेरी सोच पर निर्भर करता है कि तैने जाना किधर को है। अब वो बाबा का पत्थर रूपी जो लाल पत्थर था, ये नई एजुकेशन पॉलिसी के रूप में हमारे सामने है। ये हमारी अब दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा कि हमने जाना किधर को है। इसके आधार पर मैं ये मान के चलता हूं कि अगर इसको 100% ट्रू स्पिरिट में इसको लागू कर दिया गया तो भारत को पूरे विश्व गुरु बनने का जो अवसर मिलेगा। शायद 2040 जो अंतिम वर्ष है वो भारत का एक विश्व गुरु के लिए विश्व गुरु के रूप में कोई साल होगा। और मुझे भी अपने जीवन काल में मैं पूरी इसकी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि उसे जो भारतवर्ष को एक विश्व गुरु के ऊपर पुनः स्थापित हुए देखने का जो है एक अवसर मुझे भी मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम शिफाली नागपाल का बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद जिन्होंने मेरे को बहुत ही इस अच्छे भाव से सुना। मैं आपके सभी जितने भी अब प्रश्न हैं उनको लेने के लिए अब आपके सामने हूँ। अब जो भी मेरे से अगर प्रश्न करना चाहेंगे आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। Good evening, sir. This is Dr. Aradhana Nanda from Sri Guru Gobind Singh College, University of Delhi. My question is, am I audible, sir? Yeah, ma'am. Yeah.
My question is, sir, given the sustainable development goals, which are to be achieved by 2030, and given the fact that India incorporated this SDG goal from 2015, sir. So there are 17 goals, and reformation and restructuring of education is one parameter which is highly essential to achieve all the 17 goals of the sustainable development. Yeah. जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सुमन मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। सुमन मैम। सुमन मैम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक म्यूट करें। थैंक यू। यस मैम, आराधना मैम कैरी ऑन। हाँ जी। सो सर ये जो 2030 तक हमें 17 गोल्स अचीव करनी है, आउट ऑफ दैट एजुकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल्स, एंड टू अचीव ऑल द गोल्स रिफॉर्मेशन रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एजुकेशन इज वन ऑफ द पैरामीटर. सो आई थिंक इंडिया बीइंग वन ऑफ द लीडिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव अडॉप्टेड the changes and restructuring, and so the national education policy. So, but in this light, I would say, sir, in India, we have, as you rightly have shown us, and we have also understood that we have had many 2-3 times, structuring of national education policy. But you see, there are things like, sir, my query is, if we already have a system like midday meal scheme, sir, for the poor people to attract them to come to education, schools and all that. But studies have revealed that they don't come to schools to educate themselves. It is only with the praloban of getting food that they come to get enrolled in the school. Sir, such kind of, I would say poverty and mindset, this is a big challenge for India. So what is the solution out of it? मैम आपका बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। रादर इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो मिड डे मील के साथ में ब्रेकफास्ट को भी साथ में शामिल किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा, पर बात मिड डे मील की नहीं है। मिड डे मील को ऐड करने के पीछे कोई ये नहीं था कि जिस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, बात सारी नहीं स्टैंड हो गई कि वेयर वी लैक्ड ऑन द पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट था आपका, जो आपका क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल पूरी तरह से बहुत एक आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगा तब तक पॉलिसी चाहे जितनी मर्जी अच्छी बन जाए। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि पॉलिसी अच्छी थी, पहले वाली पॉलिसीज भी बहुत अच्छी थी। अभी मान लो मिड डे मील के साथ में अगर आपने ब्रेकफास्ट भी ऐड कर दिया, पर अगर आपका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट अगर वैसे ही रहेगा जैसे पहले वाला है, तो निश्चित रूप से हम दोबारा उसी स्टेज पे होंगे जिस स्टेज पर आज हैं। पर इस बारी का जो मेरे को जो बदलाव जो लग रहा है, माइंडसेट का बहुत बड़ा बदलाव है। आप देखें, इससे पहले ऐसे कभी प्रयास नहीं हुए थे। मैं तो विटनेस हूं 86 की पॉलिसी का, कि 92 तक तो हमें पता ही नहीं लगा कि कोई पॉलिसी भी आई है कि नहीं आई है, और वो चुपचाप जब इम्प्लीमेंट हो गई तो उसके बाद कब उसके परिणाम भी आने लगे, वो 2003, 4, 5 में जब पता लगा कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर ये 10-15% जितने भी जो चेंजेस या 20% चेंजेस हमने लिए उसके आधार पर हुए। पर अभी की जो पॉलिसी है, इट हैज बीन सेलिब्रेटेड लाइक एनीथिंग, इट हैज बीन सेलिब्रेटेड लाइक फेस्टिवल, और इसको हमने फेस्टिवल की तरह जो है इसको ये कर रहे हैं, अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, और इस वी आर मेकिंग एवरी स्टेक होल्डर अंडरस्टैंडेबल कि इस पॉलिसी में क्या चीज है। दिस पॉलिसी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर। जब हमें अपनी जिम्मेवारी का जो है आभास होगा, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप सामने आ जाएगा। क्योंकि अगर हम फिर उस बात पर आएंगे कि पहली पॉलिसी में भी तो था, मिड डे मील जैसी पॉलिसीज तो थी उसमें भी, पर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट बहुत बड़ा, और उसमें लीकेज कितनी बड़ी हुई, इतनी ज्यादा मनरेग्स की मैंने बात की, इतनी लीकेजेस साथ में हुई। उन लीकेजेस को हमने, अब उसको हम ये नहीं बोल सकते कि पॉलिसी में कोई फर्क था, और पॉलिसी बहुत अच्छी थी, पर जो मेन पार्ट जो रहा वो रहा इम्प्लीमेंटेशन का। जो मैंने लाइट बट टाइट की जो बात की, वो लाइट बट टाइट जो है
that is one kind of that mindset which government has shown to everyone कि कोई चारा नहीं है, हमें करना ही पड़ेगा। अगर विश्व स्तरीय हमें बनना है तो हमें आना ही पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है और गवर्नमेंट इज कमिटेड टू डू दैट। जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट से हमें पता, आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी गवर्नमेंट, बट जो उनकी कमिटमेंट लेवल से जो अभी तक आभास हो रहा है, जिस तरह से उन्होंने इसको अभी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज से पहले ही इसको लॉन्च करने के लिए कैसा लॉन्च पैड तैयार करने के लिए कैसा प्रयास किया है, उससे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। आई फील लाइक दैट। Thank you, sir. A great thanks, sir. जी मैम, थैंक यू। जी, any other question from the participants? Sir, I want to ask one question. जी, अभी मैम वैसे मेरी एक ये थी कि आई आल्सो वांट टू लर्न समथिंग। आप मेरे से शेयर करिए क्वेश्चन पूछते ज्यादा आप ऐसे बोले कि सर आई डू हैव सर्टेन थिंग्स टू शेयर, तो क्वेश्चन और आंसर साथ साथ में हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आई लव जस्ट इंटरेक्शन साथ में बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आंसर में तो ऐसा लगता है जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे कोई चीज ना हम इसको इंटरेक्शन लेता हूँ सर। Right, sir. Sir, I want to share something with you. Sir, as you said, you are the member of such an important committee in National Education Policy. Also, you are the member or you contributed in some way. Yeah, पूरे मतलब member secretary. Sir, I want your opinion कि जो हमने अपने बच्चों को प्रमोट करने का सिस्टम आजकल अडॉप्ट किया हुआ है कि प्रमोशन कर दीजिए कि if they are having reappears in their previous exams, still the student get promoted. Sir, हमारे टाइम में थोड़ा सा हमें डर होता था और हम बिल्कुल कोशिश करते थे कि हमें अच्छे मार्क्स से पास होना है। Sir, मतलब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ फ्रॉम मेनी ईयर्स कि जो ये डर एक बच्चों के अंदर से निकल गया है और उनको प्रमोट कर दिया जाता है, तो हम बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी एजुकेशन, बट ये क्वालिटी कैसे आएगी जब मैं 100% आपकी बात से फेवर करता हूँ। I do not favor this promotion policy. Examination is examination, whether it is in any form. चाहे आप किसी भी फॉर्म में लें, एग्जामिनेशन होना ही चाहिए, बच्चे की इवैल्यूएशन होनी ही चाहिए। अगर आपने उसको इस तरह से प्रमोट करना है, आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन में 1500 मेल्स सीएम पोर्टल के ऊपर कर दी व्हेन वी अनाउंस्ड द डेट शीट ऑफ आवर यूनिवर्सिटी। मैं तो डीन एकेडमी का फेयर हूँ। 1500 मेल्स जब एक दिन में सीएम पोर्टल पर हो गई, उसके बाद एकदम चीफ मिनिस्टर जी का भी एक आया कि भाई जब बच्चों का इंटरेस्ट इस तरह से है तो आप उस तरह से कुछ करें। देन वी थॉट दैट अब क्या करें। Then again we took the decision the exam that will be of only final year students, and rest of the students they will be promoted on the basis of their class performance or on the basis of that very component which otherwise other colleges have just sent by adopting any criteria. पर सबसे बड़ी बात थी उसमें जो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनके बच्चों के नंबर आए 65, 75, 70%, और जो प्राइवेट कॉलेजेस जिन्होंने एक दिन भी शायद क्लास नहीं लगाई होगी उनके बच्चों के 10 CGPA भी आई समवेयर। तो वो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो कंप्रोमाइज नहीं होगा। जब लाइट की बात करते हैं और टाइट की बात करते हैं तो टाइट रहना भी पड़ेगा। माइंड सेट को अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि चाहे इतनी भी एडवर्सिटीज हो, हमें उसके लिए अपने बच्चों को अपने सिस्टम को वैसे डेवलप करें। मान लो अगर सिस्टम को वैसे डेवलप कर लिया जाए कि हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं करें, पर उसको अल्टरनेट वे में अगर उसकी जो मान लो इवैल्यूएशन हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। ये बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये पीढ़ी हमारी, मैं नहीं कहूंगा, ये आम बच्चों से के मुकाबले बहुत पीछे जा सकती है जिस हिसाब से अभी आजकल हिसाब चला हुआ है। वी हैव टू थिंक अल्टरनेटिवली। आई फेवर योर ओपिनियन एंड 100% फुली सपोर्ट योर ओपिनियन आल्सो।
सर मतलब आई वांटेड टू से दैट कि चलो मान लिया अभी तो पेंडेमिक है और कि हमें ये रास्ता अपनाना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बट आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि जब हम एग्जाम्स वैसे भी लेते हैं, पहले ऑफलाइन भी होते थे, तो तब भी बच्चा पूरे अगर 6 सब्जेक्ट है उसमें 5 में री आ रही है, स्टिल ही गेट्स प्रमोशन इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। सर वहाँ पे टाइटनेस होना बहुत जरूरी है। वो जो सीबीसीएस के सिस्टम की जो कमियां है वो भी बहुत मतलब ये है, ये मान के चलें कि मतलब जो है अभी आप बिलीव नहीं करोगे, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने तो इसको, आपके तो पता नहीं वहां पे, आई डोंट नो वेदर इट इज एनुअल और सेमेस्टर सिस्टम, हमने तो इसको दोबारा एनुअल कर दिया है। हमने हिमाचल में दोबारा इसको एनुअल ही कर दिया है क्योंकि 6 महीने में, अदरवाइज हम तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम लेने की एक एजेंसी बन के कि अभी एग्जाम खत्म हुआ 2 महीने के में सिलेबस खत्म करो दोबारा एग्जाम करो, तो इस हिसाब से बच्चों की सीरियसनेस भी खत्म हो गई थी और साथ ही साथ हमें ऐसा लगता था कि जैसे हम कोई एक काम कर रहे हैं उस काम को करते जाओ। ये कुछ सिस्टम में खामियां थी। शायद इस जो हमारी जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी है, क्योंकि इसमें बैग भी लेस हुआ है, उसमें उनका बोझ भी कम हुआ है, और अगर इस जो मान लो अगर इसमें बोझ कम करने की बात हुई है तो हो सकता है कि इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर जो है सही ढंग से जरूर मिलेगा इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। आई फील लाइक दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं भी अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ अपनी। जी बहुत अच्छी सर। मैं गवर्नमेंट कॉलेज मतलौडा पानीपत में टीच करता हूँ सर जी। हमारे हरियाणा में एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं पहली बात मैं आपके कॉलेज में विजिट कर चुका हूँ। ओके थैंक यू सर। और कहीं एज रिसोर्स पर्सन, आई थिंक आपका कोई सेमिनार था, एज रिसोर्स पर्सन ही आया था लॉन्ग बैक 15 साल पहले से की बात कर रहा हूँ। सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज मतलौडा है सर, ये एक्चुअली गवर्नमेंट का है। अच्छा, मैं पानीपत में आया था। सर एक नॉन अटेंडिंग की बड़ी समस्या है, क्योंकि हम यदि देखते हैं 50% से 70% ही अटेंडिंग है बच्चे, 30 to 50% तक नॉन अटेंडिंग बच्चे रहते हैं। अभी उसमें जो 70% भी ऑनलाइन की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं सर, फिजिकली जो क्लासेस है उसमें ओके। ये बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना सर, वो मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन है उससे खत्म होता चला गया है। और यदि हम ऑब्जर्व करते हैं, अब उनके साथ यूट्यूब है उसको अच्छे से चेक करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं या मीडिया पे जाते हैं, उनका वहां इंटरेस्ट बनता है। तो यदि हम ये नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छी बात है कि उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, क्योंकि हमारे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो प्रैक्टिकल हों, ना कि ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं। यदि हम जैसे कोई गेम दे दिया या कुछ और दे दिया या किसी भी तरीके से उनको केस स्टडी करवा दी जाए, उस तरीके से टीचिंग करें तो उनका इंटरेस्ट ज्यादा बनता है। बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत जैसे मान लो आपने कोई माइंड गेम दे दी, मैनेजमेंट गेम दे दी, जो एमबीए लेवल पे जो पढ़ाया जाता है, अगर मान लो जैसे कॉमर्स एजुकेशन की बात करें तो जो एमबीए लेवल में जो आप केस स्टडीज देते हैं, जो ग्रुप डिस्कशंस देते हैं, जो वहां पे रोल प्लेइंग मेथड्स रहते हैं, अगर उन रोल प्लेइंग को पार्ट, इसका करिकुलम का पार्ट बना करके इसमें ये किया जाए, तो अभी इस नई एजुकेशन पॉलिसी में है, नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसमें ये चीज है। अभी अगर इस चीज में बच्चे का अगर इंटरेस्ट जनरेट हो, आई होप दैट दिस विल बी मेकिंग अ वन काइंड ऑफ बिग चेंज इन द सिस्टम, कि बच्चा अपने आप उसको लगेगा कि आज जैसे अभी आपका सिस्टम चला है, अभी आप इसमें एक आज चेयरपर्सन होगा, दूसरा रिपोर्टियर होगा, एक कल के लिए जो है तैयार होगा, तो ऐसे अगर बच्चे जो है यहाँ पे अगर रोटेशनल बेसिस के ऊपर कि आज क्लास को मैं हैंडल करूंगा, एक एक दिन उनकी जो है एक एक क्लास टीच करने के लिए भी अगर बच्चों को साथ में दी जाए, तो वो जो एक बच्चे, मान लो एक मैनेजर के रूप में उसने कोई रोल प्ले करना है, मान लो उसने एक मार्केटिंग मैनेजर की बात होती है तो कि आप एक सेल और परचेज का एक पूरा एक कंपोनेंट सामने रख करके बात करेंगे, बच्चे का इंटरेस्ट जनरेट होगा। जितना प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट को बनाएंगे, जितना थ्योरेटिकल बनाएंगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है, थ्योरेटिकल होने से बच्चा अभी 70% आ रहा है, अभी 70% भी नहीं आएगा अगर आने वाले समय, अगर ये 75% अटेंडेंस की बात नहीं होती, ये 70% बच्चे भी नहीं आते। उसमें ये भी है सर, जैसे हम जो टीचिंग पैटर्न चला हुआ उसमें बच्चे का ये ट्रेंड बन चुका है, अभी हम तो बुक्स तो हैं ही, उनमें पढ़ के काम चल जाएंगे। यदि हम प्रैक्टिकल काम करें जिससे उनका थॉट प्रोसेस जुड़े, जिससे उनका थॉट प्रोसेस जुड़े, थॉट प्रोसेस
अपनी एक प्रेजेंटेशन में मैंने आपसे एक विनती की, मैं आपको बीच में बात की, आपको रोक रहा हूं। हमें शिक्षक से गुरु बनना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और शिक्षक से गुरु बनना मतलब हमें इंफॉर्मेशन से नॉलेज की ओर जाना है, नॉलेज से विजडम की ओर जाना है। ये बात मैंने बार बार बोली, इसीलिए कहा कि बच्चा इंफॉर्मेशन तो ही इज हैविंग वन काइंड ऑफ बिग सोर्स दैट इज गूगल बाबा, तो उसके ऊपर तो वो अपने आप में उसके पास भंडार है। उस नॉलेज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसको उस इंफॉर्मेशन की प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, प्रैक्टिकेबिलिटी क्या है, उस चीज की ओर जाना पड़ेगा। और जब तक हम उस बच्चे को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बता पाएंगे तब तक बच्चे का इंटरेस्ट, उसको जब बच्चे का को कुछ क्लास में लगेगा कि आज मेरे ये टीचर कुछ नया देंगे, आप बिलीव करोगे। मैं अपनी क्लास का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, वैसे मैं अपने पूरे डिपार्टमेंट का एग्जांपल दे रहा हूं। हमें कभी बच्चों को ये बोलना नहीं पड़ता कि आप हमारी क्लास में आइए, 100% अटेंडेंस होती है। उनको ये मालूम है कि ये 1 घंटा हमारा, भले ही थ्योरी की क्लास होगी, भले ही इसकी क्लास होगी, अकाउंट्स की क्लास होगी, पर ये 1 घंटा हमारा ऐसे निकलेगा कि सर हमें पूरे बांध के रखेंगे पूरे दिन, पूरे टाइम में क्लास में, ना केवल मैं बल्कि बाकी और टीचर भी। जब हमारा ध्यान ये होगा कि हमने बच्चे को कुछ नया देना है, नया करना है, तो डेफिनेटली बच्चा जो है उस इसमें जो है हमें अपनी टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है उसमें चेंज करने की आवश्यकता भी है। ये आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया कि हमें अपने आप को शिक्षक से गुरु बनना और टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करना, ये बहुत अच्छा एक अगर आप इसको कहीं नोट भी कर रहे हो तो आप रिपोर्टियर में एक इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि एक बहुत अच्छा पॉइंट। और इसमें भी हमारी जो पॉलिसी है, जैसे मैंने कहा ना कि स्कूल लेवल पे हमारे MOUs होंगे, हमारे बच्चे ITIs, पॉलिटेक और लोकल इंडस्ट्रीज के साथ टाई अप्स करेंगे, तो वो सारी चीजें साथ में जोड़ करके जब आएंगी तो डेफिनेटली दे विल बी लर्निंग ए लॉट। थैंक यू सो मच सर। जी पवन जी। देखो सर, बहुत बहुत आभार। आज का हमारा सेशन जो आपने लिया, जिसका आपने चर्चा की, वो था नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें मातृभाषा पे भी फोकस किया गया है सर, जिसकी शुरुआत आपने बड़े अच्छे ढंग से विष्णु पुराण के श्लोक से की सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई शिक्षा नीति में आपने तीनों नीति जो अब तक आई उनके बारे में बताया, पर वो किसी कारणवश इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, कुछ लीकेज रही। बट उसके साथ आपने बात करी सर की प्रिंसिपल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम स्टूडेंट के साथ साथ आई थिंक हम जो टीचर्स हैं उनकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है, एक अपनी भूमिका, जिसमें हमें रोल प्ले करना चाहिए सर। आपने अपने वक्तव्य में सर कहा कि जैसे आप एक इसको कर रहे हैं तो अपने जैसे UGPS करते हैं, PGPS करते हैं, तो आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को कॉल करें, उनकी सजेशन लेके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर करा जा सके। तो सर मैं बताना चाहूंगा कि मैं होटल प्रबंधन विभाग से हूं और अपने विभाग में हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जब भी हम UGPS करते हैं, PGPS करते हैं, तो हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के साथ साथ अपने विभाग के एलुमनाई हमारे रहे हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनकी भी हम जोड़ के रखें सर, ताकि उनके भी इनपुट्स लेकर चले और आने वाले स्टूडेंट्स को हम जो उनकी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की वो करा पाए। तो आज का जो टॉपिक था सर, उसमें आपने बात करी ऑप्टिमम लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करी है, टीचर स्टूडेंट्स की गैप की बात करी है एंड कैपेबल की बात करी है, और साथ ही इसमें वोकेशनल एजुकेशन की बात करी है सर। अगर दिल्ली NCR की बात करें तो सर वहां पे ये चीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है कि लाइक टूरिज्म का सब्जेक्ट है या हॉस्पिटैलिटी के हैं, हम उस बैचलर स्कूल्स लेवल पे भी उनको वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सर, ताकि वो उनको सब्जेक्ट मिल सके सर, ताकि वो इंडस्ट्री के बारे में जान सके। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार प्रकट करता हूं एक बार पुनः अपने वक्तव्य के लिए सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। बहुत अगर किसी की क्वेरी हो तो साथ में मेरे मेल ID kulbhushanchandel@gmail.com पर भी आप डाल सकते हैं। डेफिनेटली आई विल बी, अभी मेरे को क्वेरी आई कि प्लीज शेयर योर PPT, मैं पवन जी आपको PPT अपनी भेज दूंगा। आप kulbhushanchandel@gmail.com इसके ऊपर कोई भी क्वेरी दे सकते हैं। I definitely I will be replying with all the queries. Thank you very much. धन्यवाद करूंगा सर आपका कि अब तक हम आपके सुन रहे थे, अब आपके हमें दर्शन भी हो गए हैं,
तो उसके लिए भी अच्छा, बहुत धन्यवाद। नहीं मेरे को ये नहीं मालूम पड़ा कि इसको कैसे करना था। एक्चुअली मेरे अभी बेटा यहाँ नहीं था, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अब बड़ी मुश्किल से ये चल रहा था, बस ये था कि चल रहा था। मेरे को मैं सोच रहा था कि मैं आई एम ऑडिबल टू यू। नहीं सर, हम भाग्यशाली हैं कि अब आपको लास्ट में सत्र के लास्ट में आपके दर्शन भी हुए सभी प्रतिभागियों को। एक बार आपका पुनः धन्यवाद, सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आई होप कि आप सब लोगों ने फीडबैक फॉर्म भर दिया होगा आज के इस सेशन का। इसी के माध्यम से इवनिंग सेशन की आपकी अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड होगी। जी पवन जी मिल गया था। थैंक यू सर। पवन जी विल टुमारो बी अ छुट्टी। यस, टुमारो विल बी अ छुट्टी। आपने बड़ा अच्छा यूज करा है मातृभाषा का। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। जी मैम, एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। सर ने इतना बढ़िया समझा दिया। लाइक मैं होटल मैनेजमेंट से हूँ, तो जब मैं अपने जॉब करता था उसमें ना इंडस्ट्री में, सो आई वर्क विद होटल आईटीसी ग्रैंड भारत विच इज लोकेटेड इन गुड़गांव। सो जहां हम इंग्लिश की बात करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग की बात करते हैं हर मोड पे। सो वहां पे 5 स्टार प्रॉपर्टी में एक बड़ा अच्छा कल्चर था कि जब भी हम किसी को इंटर डिपार्टमेंट कॉल करते या कोई गेस्ट हमें कॉल करता, सो वी यूज्ड टू से नमस्ते, राइट। सो जहां फॉरेनर्स भी इस चीज को कर रहे थे, लाइक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, दे केम टू द हिंदी। वो हिंदी पे कर रहे हैं कि लाइक नमस्ते, जो हमें हमारी जो नेम टैग होता था उस पे भी लिखा था नमस्ते, लाइक सिंबल ऑफ नमस्ते। सो थैंक यू कि आपने चलो छुट्टी को इसके साथ यूज करा। दैट्स गुड। थैंक यू सो मच। हमें अभी थोड़ा स्वार्थी हो जाना चाहिए नई राष्ट्रीय शिक्षा तो नीति को लेके, जिसमें हमारा भी भला है, साथ साथ जो नई जनरेशन आ रही है उसको भी, उनका भी भला हो। लाइक जो अब तक 2 नीतियों में हम नहीं कर पाए, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप अपना भी कंट्रीब्यूशन में इसमें रखें ताकि बेहतर कल हमें मिल सके। आप लोग बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म में अपने विचार कुछ रखना चाहते हैं, अभी सर हमारे साथ जुड़े हुए ही हैं, आप भी अपने विचार रख सकते हैं, आप में से कोई भी। जी नवीन जी। नो सर, इट्स फाइन। जी एनीवन? Sir, this is Vijay. I want to say something to Kulbhushan sir. Sir, I am from the Indira Gandhi University, Mirpur, Wadi. You might be knowing that university. You have been the member of the board of studies there during the vice chancellorship of Professor Bansal sir. So I just remained there in your, I think various selection committees में भी मैं वहाँ visit किया हूँ. Definitely sir. Kindly receive my regards sir. Yeah, sure. I will also convey your regard to Bansal sir because he is our vice chancellor nowadays. Yes. I know. I know sir. You are there sir. You are there sir. Your university. बंसल सर हमारे विश्वविद्यालय के भी सर वाइस चांसलर रहे हैं, तो मेरा भी पता करिएगा तो उनको। जी जी। पवन सर at the same time, right? At the same time, right sir. बहुत अच्छे। Thank you sir. Nice to see you. मुलाकात होती है ऑन मंडे, सोमवार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you. Namaste everyone. See you on Monday. Thank you Kulbhushan sir. We learned a lot. नमस्ते। शुभ दिन, शुभ नमस्ते। Thank you sir. Thank you Pawan sir. Thank you sir. Thank you sir. Pawan sir.